a big pandemic like COVID. Other than that, the government also has been making sure that the public sector insurance companies can meet the insurance requirement of the people of India. So by listing of LIC, for instance, we have made it transparent for people to know what is happening there. And those who want to participate in the retail stock market, they can also come in. The GIC, reinsurance, New India Assurance are all in this direction. So with these kind of steps taken, as I said, we moved from 26% to 49% in 2015, from 49 to 74 in 2021. These have actually brought in greater push for the insurance sector. I'll explain how by taking some of the parameters. In 2014-15, number of insurers were 53. Now they are 74. Insurance penetration earlier was only 3.3%. Today it is closer to 3.75, 3.8. Insurance density, average insurance premium paid per person in a year is referred to when I say insurance density. It was $55 in 2014-15. Now it is $97 Total insurance premium in lakh crore rupees is 4.15 lakh crore in 2014-15. Now it's 11.93 lakh crores. Asset under management is 24.20 lakh crores in 2014-15. Now it's gone to 74.43 lakh crores. FDI limit in insurance companies, as I said, was raised from 49% in 2014-15 to 74% in 24-25. Whereas for insurance intermediaries, that 49%, which was the case in 2014-15, was made 100% even in 24-25. So with all this, now is the time when we are looking at greater penetration, and we want to have the regulator also to be more robust, and that is why we have taken this in the policy, in the amendment that we are bringing about. We're getting into the details of each one of those, but there will be a better regulatory oversight. There will be ease of compliance. Insurance intermediaries will provide uninterrupted services. And we are also treating both intermediaries and insurance companies with a lot more standardized approach, so that whenever they do anything, they will have to have a stakeholder consultation before they bring in any policy, and so on. So this bill, sir, broadly I leave it here, that it aims at bringing transparency. There is a good need for insurance money, so increase in FDI. Many compliance-related issues are being eased out. There is, for instance, a legal requirement to seek prior approval, even to appoint, approval of the IRDAI or the regulator for transfer of share capital that has been 1%, even for that they will have to come. Now we are saying, no, you come only when it is 5%, so that there will be greater flexibility and so on. So there are very many such measures, sir. Once the discussion is over, I'll take your permission and give the elaborate clarification and reply to all the members. So with this, I look forward to having the debates. ये ओपनिंग है आपकी, और अच्छा माननीय संसद सदस्य वही होता है जो बैठे बैठे टिप्पणी करने की अपेक्षा जब ओपनिंग हो, जब अच्छा खेले। थैंक यू सर। तो अच्छा बोलो सर। थैंक यू। इस देश के अंदर सदन से ही देश के बड़े नेता बने, हम भी चाहते हैं सब बने। नहीं तुम्हारा सर, हर बात पे बोलने से नहीं बनते। थैंक यू सर। टाइम नहीं मिलता ना जी, फिर बैठे बैठे सर
This bill, at 12:30 it was introduced, and 4:30 we are having a discussion. The main question is that why the government is rushing too far for this to be made. This House has debated many bills, sir, some technical, some transactional, some routine. But today's bill is none of those. This bill they'll ask for fundamental questions about our republic. Is insurance a public promise or merely a private product? Is protection a right of citizenship or a privilege of purchasing power? Because insurance is not just about policies and premiums, sir. It's about who bears risk in our society. Speaker, sir, when risk is pushed away from the state and onto citizens, democracy itself becomes fragile. Let us remember where we came from, sir. 1956, India nationalized the life insurance not because markets failed, but because markets excluded. Indira Gandhi said, the purpose of nationalization is not profit but protection. LIC was born not as corporation, but as a constitutional instrument of social security. It insured farmers with uncertain incomes, workers without formal contracts, families whose only asset was hope. And for decades, LIC did what private capital could not. Went to villages, took long-term risk, invested in national development. That's the Congress idea of insurance. Not extraction, but inclusion. Not speculation, but solidarity. What this bill really does, Speaker, sir, this bill is wrapped in comforting words. Sabka bima, sabki raksha. But let us read the fine print. Section 3AA allows 100% FDI in insurance, not 74%, not shared control, but complete foreign ownership. That means pricing decisions made outside India, investment priorities set by global boards, profits repatriated abroad, and all in a sector that controls household savings, long-term capital, and a social risk pooling. This is not reform, sir. This is withdrawal of the state. The government claims that this is the necessity for capital. But, Speaker, sir, facts matter. Many private insurers have not even used the existing 74% FDI limit, sir. If capital was the real problem, why was the 74% not enough, sir? The truth is uncomfortable. This decision is not driven by necessity. It is driven by ideology. An ideology that believes that state must retreat, the market will magically include, and citizens must fend for themselves. Congress rejects this ideology clearly and unapologetically. What happens when insurance is fully privatized, sir? We do not need theory. We have experience. Look at the Prime Minister Fasal Bima Yojana. Farmers pay rising premiums. Claims are delayed or disputed. Insurers remain protected. Look at Ayushman Bharat. Private hospitals deny high-cost procedures. Cashless care becomes conditional. States report unpaid bills running into lakhs of crores. When profit enters into accountability, without accountability, risk quietly exits the insurer's balance sheet and enters the citizen's life, sir. That's what happens when insurance forgets its social role. Speaker, sir, this bill is does not just open the door to foreign capital. It stills the playing field itself. Private and foreign insurers will cherry-pick low-risk urban customers, exit rural and informal segments, reinsure profits abroad. And who will remain? LIC, public insurance. And as insurers of last resort, this was not competition. This is a systematic weakening. You privatize profits, you socialize losses. Congress will not accept this silent dismantling of India's largest and strongest public institution. Insurance is not a shop, sir. It is a financial backbone. Premiums are not spared change. They are long-term national savings. With 100% FDI, dividends flow out, reinsurance payments flow out, decision-making flows out. At a time when India needs domestic capital for infrastructure, climate resilience, and social protection,
This bill allows an outflow of patient capital. That is not nation building, sir. This is the financial dependency. Speaker, sir, we are not standing here to defend stagnation. Congress believes in reforms, but reform with responsibility. Our alternative is clear. Strengthen LIC and public insurers, expand coverage through public-private balance, not surrender. Use regulation to enforce inclusion. Treat insurance as a social infrastructure. We believe growth must be shared, not siphoned. Let me end where I began, sir. The bill asks a question. Will India say protection is a right or protection is a product? Will we say the state stands with citizens in the uncertainty, or citizens must negotiate risk alone? Speaker, sir, Congress chooses the republic over the market, citizens over corporations, protection over profit. And that's why we oppose this bill, not in anger, but in conviction, sir. Thank you so much, sir. श्री कोडा विशेषर रेड्डी. Thank you, Chairman, sir. Thank you for this opportunity to speak on this very, very important bill. Sir, if a misfortune strikes an individual and the entire society comes forward to help and support this, then it's indeed a truly great society, sir. And insurance is this business where if an individual faces misfortune, an accident or a death, then the society comes forward and help. It is indeed a great business, sir, and it's indeed a noble scheme. But, sir, it is unfortunate that despite it being needed by every country, especially the poor in our country, the insurance penetration has been dismal, sir. Sir, the opposition leaders talked about today earlier, blindly talked about during Nehru's time they nationalized insurance companies, it did well. During Indira Gandhi's time, they nationalized insurance companies, it did well, sir. But they forgot to mention something, sir. Sir, the penetration of some of the insurance was as low as 1%, sir, when they nationalized it. Today, health insurance is almost 50%, sir. And it's not just for the rich. They'll say that, no, it's only for the rich. No, sir. Almost 40% of that goes to the poor with the government schemes like Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Pradhan Mantri Atal Pension Yojana, Ayushman Bharat, and the coverage is almost 40%. It goes down to the bottommost, sir. So is that good, sir? Absolutely. They talk about nationalization as being good, but that's when the penetration was the lowest. But strangely, sir, they forget to talk about P.V. Narasimha Rao ji. Why do they forget to talk about P.V. Narasimha, who actually privatized and turned the country around, sir, and that paved the way for privatization. And each year, when the privatization kept increasing from 24 to 49%, 49 to 74%, and now it's going to go to 100%. The penetration kept increasing, sir. The benefits of insurance is reaching the poor, sir. 33 crores are covered under Suraksha Bima Yojana, sir. Just 20 rupees for 2 lakh rupees premium if someone dies or accident. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is just about 36 rupees a month, sir, and it's a life insurance that they get about 2 lakhs at the end of this, sir. And this is going to the lowest and the lowest of the pyramid, sir. Sir, insurance penetration in India is still a long, long way to go, sir. And that is why the foreign investment is required. And foreign investment is not, it can be anybody, anywhere. It doesn't prevent the local. The local players actually being encouraged by reducing the paid up capital amount, sir. So
The insurance penetration will increase. It will create more jobs. So when it went from 74%, from 49 to 74, 55,000 crores FDI income came into the country. And now it's expected when it goes to 1 lakh, when it goes to 100%, close to 1 lakh rupees FDI investment will come into the company. It will create direct jobs, sir, but more importantly, indirect jobs as well, sir. The agents will increase, but not only they'll increase, they'll be more profitable, sir. I think earlier this morning, Premachandran ji was very concerned about the agents, sir. Life insurance agent, LIC corporation agents. But this is a bonanza for the agents, sir. Before this bill, the agents were tied up with one insurance company. They were locked up. Those locks are unshackled, sir. If I'm a life insurance LIC agent, I can't sell some other product. If I'm some other Bajaj agent, I can't sell. I was locked up and chained up, sir. Now I'm unshackled. I can sell any insurance. I can take any agencies. I can sell health. I can take general. Their profitability increases and their numbers increases, sir. Today they are approximately 70 to 75 lakh insurance agents, sir. I'm very confident it'll almost double in the coming years with this, sir. But it's not only deeper penetration, sir, or the investment that it will bring in. There's one more, even more important thing, sir. Insurance promotes responsible behavior and it penalizes irresponsible behavior. I'm not just talking about cigarette smoking or rash driving of cars, sir, but or unhealthy lifestyle in many other ways. For example, sir, nowadays builders build buildings in unsafe areas, in lakes, and they get flooded. They build gated communities that get flooded, or sometimes even washed away when there's torrential rains. So in most developed countries, even if he's getting the permission illegally and he builds the building, the insurance company will not give the insurance, sir. If the insurance company does not give the insurance, the bankers will not give the loans, sir. And if the bankers don't give the loans, the product is unsaleable, sir. In a way, it also can check the corruption, sir. So it promotes responsible and right behavior and penalizes wrong behavior, sir. So there's a BPO in my constituency, sir. By the way, the IRDA also is in my constituency. That BPO just checks in United States whether any building is in a flood zone, in 100-year flood zone or 50-year flood zone and 25-year flood zone, and accordingly the insurance pays, sir. So insurance promotes responsible behavior in our society, sir. It's indeed noble, and the penetration should increase, and I don't think anyone should oppose the penetration of insurance, sir. Beside the number of agents, there are also so many other, like point of sales person, about 29 lakhs, sir. All of these will benefit. But more importantly, sir, anyone can't become an agent. They have to write an exam. And this exam is going to become tougher, sir, because before it was a separate exam for, let's say, life insurance, separate for health and separate for general. Now with the composite, they can sell any product. The exam may be difficult, but I'm sure all these agents will pass because India has brilliant people. But I request for rural penetration, this exam should be in every regional language. So it should be in Telugu, because in my villages, the insurance penetration is very low, sir. So, just for example, sir, the GDP contribution of urban India is very high, 55 to 45. Population split is low. But if you look at the insurance offices, it's less than 2% in rural India, sir. So, this, I think, we need to really look into it. The other good thing is composite insurance, sir. LIC could sell only life insurance, now it can sell multiple other insurances. So they are not restricted. This is a very good thing. But even more, an insurance company cannot do any other operations except selling insurance. But now they can merge the financial services to the insurance, sir. So it is good, but also there's a risk. Because the foreign players can have an unfair advantage, sir. They can have an unfair advantage because they have deep pockets and unlimited funds.
whereas our players may not have the deep pockets, sir. So IRDA should be very careful if they merge a financial industry company with an insurance company, they'll have even more deeper products. And then there'll be a cap and restrictions and ratios that IRDA puts. They have to be scrutinized even more, sir. Otherwise, the bigger players will have a greater advantage and smaller players will not have that advantage. So composite license is good, and insurance, non-insurance business merging is good, provided IRDA truly acts like a watchdog, sir. But before I conclude, sir, 2 points about healthcare. The healthcare is very, very important, sir. So when it comes to healthcare, much is to be discussed. But if you look at the healthcare system in our country, it is called healthcare or hospitals, but actually it's a sick care industry, sir. They get compensated by the sick, not by the healthy. So on one side you have a healthcare industry that compensated by the sick. On the other side you have an insurance business which get compensated by wellness, sir. So two conflicting interests. Now if these hospitals and healthcare industries are encouraged to get into the insurance business, then the healthcare business will truly turn from an illness business to a wellness business. They'll promote yoga, they'll promote gyms, they'll promote preventive health checkups, and most hospitals do not do that, sir. They depend on sickness, and I think that is very, very important, sir. But one more last, again an important factor, sir. The most expensive insurance is healthcare, is the farmer's insurance, sir. If you take the premium to the claim, the farmer's insurance are the highest, and the cheapest is general insurance. Healthcare and farmer insurance are the most expensive. Sir, if you take any product or service in the country, if you take a car in India, a car in a developed country, it costs the same. If you take a ton of steel here, or a 3-star hotel or 5-star hotel in here and abroad, it's same, or maybe in India it's more expensive. Even if you take a ton of steel or a ton of aluminium or a ton of cement or a ton of wheat also, the price in India is comparable to the developed countries. So there's only one product or service which is cheaper in India, and cheaper by 5 or 10 times, is healthcare, sir. Yet, it is unaffordable. So it's very, very important, sir, the penetration should increase more. And so, one more thing, sir. I think my honorable member has just said that it's socialize. He mentioned socialize loss and privatize gains. Sir, it is now, sir. It's reaching the bottommost. The benefits are socialized. It is then, sir, Agriculture Insurance Corporation, I was there in the 16th Lok Sabha, sir. Agriculture Insurance Corporation, continuously loss-making. The methodology of giving that crop cutting, a very primitive and very low penetration, sir. So it actually was not insuring the farmers, it was insuring the banks that was giving loans to the farmer, and it was compulsory, sir. If I take a bank loan, I have to take, even if I don't like it, I have to take that, and the banks would cut the premium from my pocket, sir. But today, even if I'm not taking, the farmers are voluntarily, about 40 to 50% of the farmers were taking loans voluntarily. And it's not socialized, sir. They put a cap. Thank you. And, sir, before I conclude, I request the Finance Minister one last thing, sir. See, it's not just the funds, because insurance is a trust and knowledge business, sir. You build trust over ages or trust through advertisements, but knowledge is important, sir. It's not enough if I have a lot of funds, but I should have knowledge. Now, today, with artificial intelligence, actuarial sciences, the foreigners may have much more deeper knowledge about India than our Indian companies, sir. So it's very, very important to set up a very advanced actuarial science and research center, and this knowledge
should be public domain, so all insurance companies are on the same, so the foreign companies do not have an advantage in terms of knowledge of our business, sir. So thank you very much, sir. With this, the Pradhan Mantri's vision of insurance for all, Sabka Bima, Sabka Raksha, may happen even before 2047, sir. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you very much. Next speaker, Sri Utkarsh Verma ji. सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 ये एक धोखा, एक साजिश, एक कॉरपोरेट समर्पण है। माननीय सभापति महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की ओर से सबका बीमा सबकी सुरक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात है। सरकार ने नाम रखा है सबका बीमा, लेकिन इसकी आत्मा और दिशा साफ बताती है कि यह अडानी अंबानी और विदेशी कंपनियों का बीमा है। यह विधेयक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा पर सीधा हमला है। माननीय महोदय, अगर सच में यह विधेयक सबके लिए होता तो किसानों की फसल सुरक्षित होती, मजदूर की मजदूरी सुरक्षित होती, गरीब की ज़िंदगी सुरक्षित होती। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रीमियम आम आदमी देता है और मुनाफा कुछ चुनिंदा कंपनियां ले जाती हैं। 100% FDI भारत की बीमा व्यवस्था की नीलामी है। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक का सबसे खतरनाक प्रावधान है बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर 100% करना। इसका सीधा अर्थ है कि अब अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां बिना किसी भारतीय साझेदार के भारत की बीमा व्यवस्था पर कब्जा करेंगी। LIC, जिसने 1956 से गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग की सेवा की है, जिसका पैसा देश के नागरिकों के पसीने की कमाई से बना है, और अब उसे विदेशी कॉरपोरेट दिग्गजों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह वही नीति है जिसे अपनी मां को छोड़कर सौतेली मां को गले लगाना है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, देश की अर्थव्यवस्था देश के हाथों में रहनी चाहिए, लेकिन यह सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी हाथों में सौंपने पर आमदा है। उत्तर प्रदेश की भयावह सच्चाई, 95.8% लोग बीमा से बाहर हैं। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की हकीकत देखिए। यूपी में केवल 4.2% लोगों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। राष्ट्रीय औसत 55% है, यानी यूपी के 95.8% नागरिक असुरक्षित हैं। ग्रामीण यूपी में स्थित और भी बदतर है, सिर्फ 3% कवरेज है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध के गाँव में बीमारी आने पर लोग गाय भैंस बेचते हैं, ज़मीन गिरवी रखते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं। सरकार कहती है 2047 तक सबका बीमा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यूपी में बीमा कवरेज बढ़ा है क्या? सच यह है कि 1% भी ठोस सुधार नहीं हुआ। विदेशी कंपनियों को मुनाफा, यूपी के गरीबों को शून्य। माननीय सभापति महोदय, विदेशी बीमा कंपनियों का मॉडल स्पष्ट है। शहरी इलाकों में काम, महंगे प्रीमियम, मुनाफे वाले ग्राहक। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, बलिया, बहराइच, झांसी आदि जिले के मजदूरों का कौन बीमा देगा? LIC का सामाजिक दायित्व था ग्रामीण और कमज़ोर वर्ग तक बीमा पहुंचाना, लेकिन 100% FDI के बाद विदेशी कंपनियों को न ग्रामीण यूपी से मतलब होगा, न सामाजिक न्याय से। और जब LIC का केवल मुनाफे की दौड़ में धकेला जाएगा तो वह भी गांव से पीछे हटेगी। नतीजा, यूपी के 18 करोड़ ग्रामीण आबादी फिर से बीमा से बाहर होगी। प्रीमियम बढ़ेगा, दावा मिलना मुश्किल होगा। सभापति महोदय, सरकार कहती है कि कंपटीशन से रेट्स कम होंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले मार्केट कैप्चर करने के लिए थोड़ी छूट, फिर मोनोपोली और फिर प्रीमियम से बेतहाशा बढ़ोतरी। जो मध्यम वर्ग आज 5,000 से 10,000 प्रीमियम देता है, जो कल 20 से 30,000 देने पड़ेंगे। और क्लेम सर्टिफिकेट का क्या होगा?
विदेशी कॉल सेंटर, अंग्रेजी फॉर्म, तकनीक, झंझट ग्रामीण और हिंदी भाषी नागरिकों के लिए एक डरावना सपना होगा। पीडीए के खिलाफ ये सीधा हमला है। माननीय सभापति महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं, सामाजिक न्याय का संकल्प दिया। यूपी में आज बीमा किसके पास है? अमीर 20% के पास, अमीर लोगों के पास, और जो गरीब है 40%, उसके पास लगभग शून्य है। ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम समाज में बीमा पेनिट्रेशन 2% से भी कम है। क्या विदेशी कंपनियां दलित बस्तियों में जाएंगी? अल्पसंख्यक मोहल्लों में कार्यालय खोलेंगी? छोटे किसानों को सस्ते प्लान देंगी? बिल्कुल नहीं। यह विधेयक पीडीए के खिलाफ सीधा हमला है, एलआईसी के साथ छलावा है। सरकार कहती है कि एलआईसी को ऑपरेशनल फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए, एलआईसी एक्ट 1956 में बदलाव, ऑटोनॉमी कम गवर्नमेंट कंट्रोल, फॉरेन कंपटीशन का दबाव, एलआईसी को जानबूझकर कमज़ोर कर विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। योगी सरकार का भी एक असफल रिकॉर्ड बताना चाहता हूं सभापति महोदय। यूपी में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन बीमा क्षेत्र में क्या हुआ? आयुष्मान भारत की कवरेज यूपी में सिर्फ 40%, राष्ट्रीय औसत 55%। जब मौजूदा योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पा रही, तो विदेशी कंपनियों के भरोसे गरीबों की सुरक्षा कैसे होगी? यह विधेयक समाजवाद की हत्या है। माननीय सभापति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सबसे पिछड़े व्यक्ति की सेवा ही सच्ची सेवा है। यह विधेयक उस विचारधारा की हत्या है। चौधरी चरण सिंह के ने किसान मजदूर प्रेम का अपमान है। यह काशीराम जी के सामाजिक न्याय आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश है। हमारी स्पष्ट मांग है कि 100% एफडीआई वापस लिया जाए, अधिकतम 49% रखा जाए, एलआईसी को मजबूत किया जाए, कमज़ोर नहीं। यूपी के लिए विशेष बीमा पैकेज ये समाप्त कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% अनिवार्य किया जाए, प्रीमियम पर सख्त नियंत्रण हो। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक सबका बीमा नहीं, सबका धोखा है। यह सुरक्षा नहीं, समर्पण है। हम समाजवादी हैं, हम पीडीए के सिपाही हैं, हम आर्थिक न्याय के प्रहरी हैं। हम इस गरीब विरोधी, यूपी विरोधी, कॉर्पोरेट परस्त विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती शताब्दी रॉय जी। सर, ये बिल का नाम है सबका बीमा सबका सुरक्षा। जैसे आप लोगों का नारा है सबके साथ सबका विकास। ये जानना ये सब होते कौन है, कौन सा धर्म का, कौन सा जात का, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कौन लोगों को आप सबके ब्रैकेट में डाल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। Trinamool Congress stand has always been clear when it comes to FDI in insurance. We strongly oppose it. On March 2015, when the insurance law amendment bill was being discussed, we had said this allowing of FDI in the insurance sector is something that is against the interest of the country. This whole logic of the government is pressing ahead with FDI in insurance sector in fraught with dangerous consequences. Now this bill seeks to allow 100% FDI in insurance. 74% इंश्योरेंस के टाइम भी देश में ऐसा कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ 4 कंपनीज को 74% दिए थे FDI, अभी वो 100%। इसका मतलब क्या है? आप 100% देके क्या साबित करना चाहते हो? देशभक्त, देश प्रेमी? India has an overall insurance penetration rate of 3.7%, below the global average of 7%. The requirement of net owned funds includes equality capital, free reserve balance in share premium account, and capital reserve representing surplus. For foreign insurance is proposed to be reduced from rupees 5,000 crore to rupees 1,000 crore. मतलब इसमें भी देशभक्त का, देश प्रेमी का ही प्रकट हो रहा है, क्योंकि आप 5,000 से 1,000 करोड़ में उतार के आगे उनको लाने के लिए। But you have not accepted the proposal to lower minimum capital requirements for new insurance. Currently, the law mandates a minimum paid up capital of rupees 100 crores
for insurance and rupees 200 crore for reinsurance. Therefore, that have long been criticized as being too high and prohibited. मतलब आप देश के लिए 200 से 100 नहीं कर रहे हैं और फॉरेन के लिए आप 5000 से 1000 कर रहे हो. देश प्रेमी का ही प्रूव है ये. One of the most notable assumptions in the bill, in the absence of provisions for composite license, a reform that many insurers had strongly asked for. Under the exciting Insurance Act 1938, insurers are confined to rigid sides. Life insurance can only offer life policies and general insurance cannot enter life insurance segment. You are introducing foreign investment in insurance. Remember, insurance giant American international group, AIG, they are considered too big to fail. But during the 2008 financial crisis, they had to be bailed out by the government, an amount of over 180 billion US dollars and taxpayer money. So beware, just bringing in foreign companies is not a miracle cure which will grow the sector. While on the topic of health insurance, let's compare Shastro Sathi with Ayushman Bharat. Ayushman Bharat started 2 years after Shastro Sathi. You copied the idea. Very good. Shastro Sathi is in the name of the woman head of family, women empowerment, just like we have 38% of women MPs in parliament. Parents of both spouses are included under Shastro Sathi. Ayushman Bharat, you have need to make a card. Shastro Sathi in completely paperless and cashless. Shastro Sathi over 2.4 crore families, more than 2,800 hospitals impaneled. Over 1 crore hospitalization till now, with 99% claims settled. Ayushman Bharat scam, a CAG report found that 7.5 lakh beneficiaries were linked to a single mobile number. A recent survey conducted in over 300 districts revealed that over the last 3 years, 43% people surveyed faced problems while claiming their medical insurance. ये medical insurance जब करने के लिए लोग आते हैं, जो समझाते हैं, बोलते पढ़ के लो, लेकिन टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं बहुत लोग को समझा नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो साइन करते. लेकिन ये दुकानदार जैसा जब खरीदने के लिए जाते हो बहुत अच्छे से वेलकम करते, लेकिन जब वापस देने के लिए या चेंज करने के लिए जाते एक्सचेंज के लिए, तब दुकानदार पहचान नहीं पाते. ऐसा भी अगर इंश्योरेंस के टाइम इतना रूल्स दिखाते, जब क्लेम करते, तब आप हॉस्पिटल में क्लियरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, सब तरह हॉस्पिटल्स रेडी टू डिस्चार्ज पेशेंट. जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते, एक तो 10 दिन 7 दिन रहने के बाद घर जाने के तरसते, तब आप क्लियरेंस देते नहीं है, इंश्योरेंस के पास जाना पड़ता है. ऐसा भी होता है एक दिन रुक जाना पड़ता है. एक दिन मीन्स वो पैसा लोगों खुद से देना पड़ता है. एक्चुअली इनसे इस गरीब देश में ऐसे भी हॉस्पिटलाइज होने से इतना पैसा खर्च होता है, जो जिंदा बचकर तो आ जाते हैं लेकिन फाइनेंशियली मर के आ जाते हैं. तो इसी जगह पे अगर इंश्योरेंस भी इस रूम के लिए पैसा नहीं देंगे, इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं देंगे, इस टेस्ट के लिए नहीं देंगे, बहुत सारे वो कट करते जिसमें मिलने का टाइम लोगों को एक्चुअली नहीं मिलते. It is happening despite the hospital TPA or account desk collection pre-approval from the insurance company before admitting the patient. So-called cashless treatment has turned into senseless, waiting the numerous patients. Another major issues in inadequate disclosure by the insurance companies about policy specific details. Technical complex words are used to mislead policyholders. There are lots of rejection based on pre-exciting disease. Health Minister should direct IRDAI to make it mandatory for insurance companies to disclose on their websites each month
द नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड एंड रिजेक्टेड, कितना रिजेक्ट करते ये जानना भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो दूसरे को पता चलेगा जो हम लोग पैसा दे रहे इंश्योरेंस कर ले, क्योंकि इंश्योरेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मिलने का टाइम क्या मिल रहे, कितना मिल रहे, किसको मिल रहे, किसको नहीं मिल रहे, कितने लोगों को नहीं मिल रहे, इसलिए ये वेबसाइट में देना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार बोल रहे विदेशी कंपनी को ये उनके लिए टेक्नोलॉजी एडवांस है वो लेके आएंगे, अभी भी बीजेपी के एमपी भी वही बोल रहे हैं। सच तो अगर ऐसा है, ये अगर इसी सेक्टर में है, बहुत सारे सेक्टर में है जो देश से ज़्यादा कोई डेवलप कंट्री में उसका टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो क्या करेंगे? सबको लेके आएंगे? देश का जितना कंपनीज है उसको डेवलप करो, उसको चांस दो। आप ये पॉलिसी जो होते हैं ना, इस पॉलिसी में आप लोग क्या करते हो, सिर्फ जो पब्लिक जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट में नहीं खड़े होते, आप जो कंपनीज है उसके लिए होते। लेकिन सरकार होते हैं देश के लोगों के लिए, जो गरीब है, जो वोट देके आपको जिता के लाते हैं। ये कंपनीज के लिए आप काम जितना करते हो वो अगर लोगों के लिए करेंगे तो मुझे लगता है देश आगे भी जाएंगे। आप अगर अभी रिजू जी ने आज टेबल थपथपा के बोले हैं हम लोग बिल तो पास करते ही रहेंगे, करेंगे भी, इतना एरोगेंसी के साथ बोले और बोलेंगे आप डिस्कस करो लेकिन हम लोग प्रेरित करके रहेंगे, तो ये भी एक देशभक्त की साइन है। क्योंकि आप जो भी करना चाहे करेंगे, ऑपोजिशन जो भी बोले, जो भी अपोज करे, आप डेमोक्रेसी खत्म करेंगे, फिर भी आप देशभक्त है। आप महात्मा गांधी का नाम उठा देंगे, फिर भी आप देशभक्त है। हम लोग अपोज करेंगे तो हम लोग देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। तो आप देशभक्त के लिए, देश प्रेम के लिए बोले, देश के लिए सोचे, देश के इंश्योरेंस कंपनीज को चांस दे उनको डेवलप करने के लिए। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट जो है उनके साथ बात करें, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग ये अपोज कर रहे, हम लोग भी इसको अपोज कर रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट श्री GM हरीश बालायोगी जी। Thank you, sir, for allowing me to the opportunity to speak on the Sabka Bima Sabka Raksha Bill 2025. This bill is a timely and necessary step to modernize India's insurance framework. Allowing up to 100% foreign direct investment will help expand the sector and improve consumer choice, while the strengthening role of IRDAI will enhance regulatory oversight and protect the policyholders. The creation of Policyholders Education and Protection Fund reinforces these reforms by recognizing that insurance can expand meaningfully only when awareness and trust are built among the consumers. Speaker, sir, one provision that particularly deserves appreciation is the removal of the mandatory minimum paid-up capital requirement for the insurance cooperative societies. This will encourage community-based and region-specific insurance models, which are crucial for expanding coverage in undeserved areas. However, I would like to highlight certain concerns where the intent of the bill can be further strengthened. Firstly, insurance penetration in India's rural remains deeply inadequate. India's insurance penetration is only about 3.7%, well below the global average of 7%. While easing capital norms for cooperative insurers is a step in the right direction, the reality is that India currently has only around very few cooperative insurance. Therefore, microinsurance assumes critical importance for low-income households, which provides protection against the health emergencies, crop loss, natural disasters, and loss of earning members. To scale microinsurance meaningfully, it is essential to encourage smaller and niche players who understand local risk and regional needs. Therefore, rather than a rigid capital threshold,
Empowering IRDAI to prescribe proportionate and risk-based capital norms would allow flexibility while maintaining prudential safeguards. Secondly, sir, while opening the sector to 100% FDI will increase competition and consumer choice, it is equally important to ensure leveling playing field between the public sector and the private insurer. At present, a TDS of 2% applies only to public sector insurance companies, while private insurance are exempt. This regulatory asymmetric places public sector insurance at a competitive disadvantage. Therefore, to realize the objective of the bill, such unequal tax treatment must be addressed. Speaker, sir, as more insurance enter the market, the absence of composite licensing remains a structural limitation. At present, insurers are required to operate separate entities for life, general and health insurance, which increases compliance cost and prevents the offering of integrated products. Allowing composite licensing would therefore enable insurers to offer bundle solution covering life, health and savings under one roof, improving efficiency and delivering greater value to consumers. Speaker, sir, the gaps in the insurance coverage becomes most visible when disaster strikes and livelihoods are wiped out overnight. India faces severe and recurring disaster risks due to its geographic and demography. In my own state of Andhra Pradesh, particularly in coastal districts such as Dr. B.R. Ambedkar Konaseema, communities face floods and cyclone almost every year. Despite this repeated exposure, disaster insurance coverage in India remains weak, particularly for economically vulnerable households and infrastructure high-risk areas, which more than 90% natural disasters are being uninsured. The Finance Committee recommended parametric insurance as a solution, offering a faster payouts and clear triggers. I'm happy to note that the NDMA has constituted a working group to develop single parametric insurance products for India. Additionally, I would suggest the Honourable Minister to use provisions in the registration to speed up implementations of parametric insurance and also open up use of government technology such as WINDS, Weather Information Network and Data Systems for the same. Speaker, sir, similar gaps in insurance protection exist for migrant workers working abroad. The insurance government offers the Pravasi Bharatiya Bima Yojana as a mandatory insurance scheme for all Indian workers holding ECR category passports going to ECR countries. However, the Committee on the External Affairs noted that since the inception of the scheme, only about 2,197 claims have been settled out of the 80 lakh policies, and only 156 of 418 claims were settled. This low settlement ratio indicates deeply concerning to systematic shortcomings. Coming from a state with a high number of migrant workers to other countries, especially the Gulf region, I would recommend the Ministry of Finance work with the Indian missions in claim facilitation, stricter oversight of insurers, and timely reimbursement to protect vulnerable migrant workers. Speaker, sir, as I conclude, I would like to take a moment to commend on the Delhi police for the cracking an insurance scam caller earlier today, involving a fake call center that preyed on individuals whose policies were nearing maturity. While we celebrate their work, we must be equally vigilant of dangers possessed by scamsters and fraudsters in the insurance sector. We must ensure that all steps have been taken to provide the government with adequate support for modern technology so that they may protect our people from such frauds. Now, With please this, I conclude on behalf of my party, we support the bill, sir. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Sri Rajbhav Prakash Wajiji.
Honorable Speaker, sir, I stand here to speak on the Lok Sabha Sabka Bima Sabki Raksha Amendment of Insurance Laws Bill 2025. While the government claims that this bill will accelerate growth, improve policyholder protection, and enhance ease of doing business, a careful reading reveals serious concerns relating to foreign control, excessive regulatory powers, and the privacy of our citizens. Honorable Speaker, sir, the most troubling provision is the proposal to allow 100% foreign investment in Indian insurance companies. Insurance is not just another business. It is a long-term financial backbone that supports infrastructure, social security, and household stability. By permitting complete foreign control, we risk privatizing overseas shareholders' interest over the long-term financial security of Indian policyholders. I asked the government, how does handing over full ownership of our insurance sector to foreign entities ensure Raksha for our citizens? Honorable Speaker, sir, my second concern relates to data privacy. The bill mandates extensive collection and centralization of sensitive personal data, including Aadhaar and PAN details of policyholders, and requires insurers to submit this data in real time to the regulator or its authorized entities. In such era of rising cyber threats, creating such large centralized databases, especially when insurers may be 100% foreign owned, poses a serious risk to the privacy and security of millions of Indians. The assurance of confidentiality in the bill are weak and insufficient. In conclusion, Honorable Speaker, sir, this bill risks replacing legislative scrutiny with regulatory convenience and national control with complete foreign ownership. Reforms are necessary, but they must be balanced, transparent, and protective of citizens' rights. I strongly urge the government to refer this bill to the Select Committee so that the implications of 100% FDI, excessive delegation of powers, and data privacy risk may come thoroughly examined. Only then can we ensure that Sabka Bima truly provides Sabki Raksha. Thank you, Honorable Speaker. Thank you very much. Next speaker, Sri Bhaskar Barge. अध्यक्ष महोदय, आपण आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावरती चर्चा करत आहोत. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारने 2047 पर्यंत सर्वांना विमा देण्याचं मोठं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. माझ्या पक्षाची भूमिका लोकांच्या हिताची, पर्यावरणपूरक आणि सुधारणावादी राहिलेली आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्रात 100% विदेशी गुंतवणूक करण्याला किंवा तंत्रज्ञान आणण्याला विरोध नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गुंतवणुकीचा नाही, तर त्यातून सर्वसामान्य जनतेला किती आणि कसं संरक्षण मिळेल, त्याचा त्यांच्या आयुष्यावर कोणता सकारात्मक परिणाम होईल हा आहे. मी सभागृहाचं लक्ष 3 गंभीर मुद्द्यांकडे आणि आकडेवारीकडे वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सरकार म्हणतं की खाजगी आणि विदेशी कंपन्या आल्यावर शेतकऱ्यांना फायदा होईल, पण प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्यांनी प्रीमियम म्हणून गोळा केलेली रक्कम आणि दाव्यापोटी वाटलेली रक्कम यात मोठी तफावत आहे. हवं तर सरकार आपल्याकडील आकडेवारी तपासून पाहू शकतं. या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या दुःखावर हजारो कोटीचा नफा कमवला. वास्तव तुम्ही नाकारू शकणार नाही. सध्याची स्थिती अशी आहे की शेतकऱ्यांचा क्लेम मंजूर व्हायला 6-6 महिने लागतात. महाराष्ट्रामध्ये बीड मॉडेल यशस्वी झाले होते, जिथे कंपन्यांच्या नफ्यावर मर्यादा होती. जर नुकसान कमी झालं तर उरलेली रक्कम शेतकऱ्यांना आणि सरकारला परत मिळत होती. नवीन विधेयकामध्ये विदेशी कंपन्यांना पायघड्या घालताना संपूर्ण देशामध्ये बीड मॉडेल लागू करून त्यांच्या नफ्यावरती मर्यादा घालण्याची हिंमत सरकार दाखवणार का? दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेमध्ये अमेरिकेसारखा देश ओबामा केअरच्या दिशेने जात आहे. जग त्या दिशेने जात आहे, मग आपण का जात नाही हा प्रश्न या ठिकाणी पडतो. अध्यक्ष महोदय, सबका विमा म्हणणं सोपं आहे, पण नीती आयोगाच्या अहवालानुसार आजही भारताच्या आरोग्यावर होणारा एकूण खर्चापैकी जवळजवळ 48 ते 50% खर्च लोकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. जगाच्या पाठीवर हे प्रमाण खूप जास्त आहे. जगामध्ये सरासरी 18% खर्च होतो आणि हे प्रमाण भारतामध्ये खूप जास्त आहे असं मला वाटतं. आयुष्यमान भारत योजना आहे, पण वास्तव काय? अनेक खाजगी रुग्णालय
पॅकेजचे दर परवडत नाही म्हणून उपचार नाकारतात. महाराष्ट्रात तर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची कोट्यावधी रुपयाची बिलं थकल्यामुळे रुग्णालय सेवा देत नाही. विदेशी कंपन्या आल्यानंतर त्या फक्त श्रीमंत शहरामध्ये हॉस्पिटलला टाईप करतील. खेड्यातल्या गरिबाला विमा असून उपचार मिळणार आहे का याची गॅरंटी विधेयकामध्ये हवी. महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य विम्याचे कवच आहे म्हणून ज्या अनावश्यक सेवा ह्या रुग्णांच्या माथी मारल्या जातात, त्याच्या आवाचे सव्वा बिलं फाडले जातात, त्या गैरप्रकारावर देखील अंकुश कशा पद्धतीने ठेवता येईल याकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एकीकडे सरकार म्हणतं विमा घ्या, सुरक्षित राहा, आणि दुसरीकडे त्याच विम्यावरती 18% GST आकारला जातो. म्हणजे विमा घ्यायचा असेल, सुरक्षित राहायचं असेल तर तुम्हाला अगोदर GST भरावा लागेल. अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या 3 वर्षामध्ये केवळ आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरचा GSTमधून सरकारने जवळजवळ सुमारे 24,000 कोटी रुपयाहून अधिक कमाई केली आहे. मग मला सांगा, आरोग्य आणि जीवन ही काही लक्झरी आहे का की ज्यावर 18% टॅक्स लावला जातो? संकटात असलेल्या माणसाकडून टॅक्स वसूल करणं हे कोणत्या कल्याणकारी राज्याचं लक्षण आहे? म्हणून अध्यक्ष महोदय, शासनाने सर्वांसाठी विमा ठेवताना सगळ्यात अगोदर विम्यावरील GST हटवला पाहिजे. विशेषतः आरोग्य विमा आणि टर्म इन्शुरन्सवरील 18% GST रद्द करावा आणि तो 5%वर आणावा. म्हणजे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल. नवीन येणाऱ्या 100% विदेशी कंपन्यांना बीड पॅटर्नप्रमाणे नफा मर्यादा आणि ग्रामीण कोटा बंधनकारक करावा. परदेशी कंपन्यांच्या स्पर्धेमध्ये भारताची अस्मिता असलेली LICचं खच्चीकरण होणार नाही याची लेखी हमी सरकारने द्यावी. विमा नफा कमवण्याचा धंदा नसून ती एक सामाजिक गरज आहे याचं भान ठेवून सरकारने या विधेयकाच्या संदर्भाने विचार करावा. अशा प्रकारची भूमिका या निमित्ताने मांडतो. धन्यवाद. धन्यवाद. नेक्स्ट स्पीकर श्री रविंद्र वाइकर जी. धन्यवाद सभापति महोदय. आज इस सदन में सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पर बोलते हुए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ. यह बिल किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, यह हर इस भारतीय के लिए है जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है और जो दिन रात अपने परिवार के भविष्य की चिंता करता है. माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं बीमारी, दुर्घटना या संकट कभी बताकर नहीं आती, लेकिन जब ऐसी कठिन समय आता है तो एक मजबूत इंश्योरेंस पॉलिसी उस परिवार को टूटने से और बिखरने से बचाती है. दुर्भाग्य से इस देश में लंबे समय तक इंश्योरेंस का एक बहुत ही पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड और अमीर लोगों की चीज बना दिया गया था. आम आदमी सोचता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आज ये सरकार उस सोच को जड़ से बदल रही है. सभापति महोदय, हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पष्ट विजन रखा है, सुरक्षा भी और सम्मान भी. जब जनधन योजना आई तो बैंक खाता हर गरीब के हाथ में पहुंचा. जब आयुष्मान भारत आया तो बीमारी के इलाज की चिंता कम हुई और आज सबका बीमा सबकी रक्षा बिल के जरिए इंश्योरेंस को आम आदमी के और करीब लाया जा रहा है. यह बिल इंश्योरेंस सिस्टम से भरोसा और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाता है. पहले लोग डरते थे कि क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब पॉलिसी होल्डर की जानकारी सुरक्षित रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदारी बढ़ेगी. अगर ऐसे एजेंट से गलत तरीके से झूठ बोलकर पॉलिसी बेची तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. यानी जब इंश्योरेंस सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच बनेगा. अध्यक्ष महोदय, मैं मुंबई जैसे शहर से आता हूं, जहां हर दिन करोड़ों लोग काम पर निकलते हैं. वहां जीवन बहुत तेजी से है और जोखिम भी बहुत ज्यादा है. चाहे वो टैक्सी चालक हो, दुकानदार हो या ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी हो, हर किसी को हर भरोसे चाहिए कि अगर कल मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरे परिवार के साथ कोई खड़ा है. यह बिल वही भरोसा देता है. यह समझना भी जरूरी है कि यह मजबूत इंश्योरेंस सेक्टर देश की इकोनॉमी को भी मजबूत बनाता है. जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं और देश की तरक्की में भागीदारी बनते हैं. इस बिल के जरिए सरकार इंश्योरेंस सेक्टर को आने वाले कल के लिए फ्यूचर रेडी बना रही है. सभापति महोदय, अब मैं सदन का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर इस बिल में जरूरत क्या पड़ी है,
क्यों बिल लाना पड़ा है, हमारे देश में बीमा की स्थिति क्या है। आंकड़े बताते हैं कि हम सही रास्ते पर है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। आज पूरी दुनिया में भारत बीमा मामले में 10वें नंबर पे गर्व भी गाता है, मगर और आगे आने की जरूरत है। बीमा घनत्व यानी एक आम आदमी औसतन कितना बीमा करवाता है कि जिसमें सुधार हुआ है। 2001 में भारतीय अंशतः सिर्फ $11 का बीमा पर खर्चा करते थे, अब वो बढ़कर $92 हो गया है, जिसका मतलब यह है अब भारत का आम नागरिक यह समझने लगा है कि बीमा फालतू खर्चा नहीं बल्कि जरूरत है। लेकिन सभापति महोदय, असली चुनौती यह है कि अभी देश की बहुत बड़ी आबादी बीमा से अछूती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हर घर तक सुरक्षा पहुंचने के लिए हमारी वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक बिल लेकर आई है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि इस बिल में देश की जनता को क्या मिलेगा। एक, ज्यादा निवेश यानी सस्ती पॉलिसी यानी 100% FDI का फायदा होगा। इस बिल का सबसे बड़ा कदम यह है कि अब बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% तक कर दिया गया है। विपक्ष के कुछ साथी इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा समझना चाहिए। ये मेरी आपसे दरखास्त है। जब बाहर से पैसा आएगा, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत आएंगी, तो बाजार में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन बढ़ेगी। सभापति महोदय, अब से जानते हैं कि जब बाजार में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन बढ़ती है तो ग्राहक का फायदा ही होता है। नई तकनीक आएगी, सर्विस बेहतर होगी और सबसे बड़ी बात कि बीमा की किस्त यानी प्रीमियम सस्ती हो जाएगी। ये सीधा फायदा आम आदमी की जेब को होगा, लेकिन सरकार ने यहाँ भी देश हित सर्वोपरि ऊपर रखा गया है। 100% निवेश के बावजूद कानून में यह शर्त रखी गई है कि कंपनी का बड़ा अधिकारी जैसा MD या CEO कोई भारतीय ही होगा और वो भारतीय ही होना चाहिए। इसके अंदर ये बिल के अंदर है। दूसरा, बड़ी आपदा में सुरक्षा पुनर्बीमा सुधार। महोदय, कई बार हमने देखा है कि जब कोई बड़ी आपत्ति आती है, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई, गुजरात में भूकंप हुआ, जो छोटी बीमा कंपनियां लोगों का क्लेम देने में असमर्थ होती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। इस बिल के री इंश्योरेंस के नियम आसान किए गए हैं, यानी मतलब बीमा कंपनी का बीमा निकालना जा रहा है। अब विदेशी पुनर्बीमा कंपनियां आसानी से भारत आ सकेगी। उसका फायदा ये होगा कि अगर कल को कोई बड़ी आपदा आती है तो हमारे किसानों और दुकानदारों का क्लेम नहीं अटकेगा, क्योंकि पीछे बड़ी कंपनियां भी होगी जो बीमा का पैसा सरलता से दे सकेगी। तीसरी बात, सख्त नियम और धोखाधड़ी पर लगाम आएगा, यानी IRDAI को ताकत। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं, साहब एजेंट ने झूठ बोलकर पॉलिसी बेच दी, अब पैसे वापस नहीं मिल रहे। ये बिल इस दर्द की दवा है। इस कानून के जरिए बीमा नियामक यानी IRDAI को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। अब अगर कोई कंपनी या एजेंट गलत तरीके से पैसा कमाता है तो नियामक संस्था न केवल उन पर जुर्माना लगाएंगी, बल्कि वो पैसा वसूल करने की, पीड़ितों को वापस दिलाने की शक्ति भी रखती है। ये कदम मन में की डर पैदा करेगा और ग्राहक का भरोसा जीतेगा। समाप्त। चौथा मुद्दा ये है, LIC हमारे देश का गौरव है, हर भारतीय का भरोसा है। ये बिल LIC को और ज्यादा आजादी देगा। अब LIC को अपनी नई ब्रांच खोलने का या नए काम करने के लिए बार बार सरकार के पास फाइल नहीं भेजनी पड़ेंगी। इससे LIC तेजी से अपने फैसले ले सकेगी और प्राइवेट कंपनी से डटकर मुकाबला कर सकती है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। गांव और गरीब फोकस मैं मेरे सुझाव देता हूं 2 मिनट में। एक पहला सुझाव ही देता हूं। 1 मिनट से कंक्लूड करो। 2 मिनट। 1 मिनट से कंक्लूड करो प्लीज। आपने 7 मिनट लिया। यस यस। कॉम्पोजिट लाइसेंस, आज अगर एक आदमी को बीमा, जीवन बीमा करना है तो उसे एक कंपनी के पास जाना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दूसरी कंपनी के पास और गाड़ी के बीमा के लिए तीसरी कंपनी के पास। यह आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है। मेरा सुझाव है कि भविष्य में हमें कंपनियों को कॉम्पोजिट लाइसेंस देना चाहिए। ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव है, छोटी कंपनियों को मौका देना चाहिए। बीमा कंपनी खोलने के लिए बहुत बड़ी पूंजी यानी 100 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। मेरा सुझाव यह है कि इस बीमा को कम करके, सीमा को कम करके किया जाए, यानी छोटी छोटी कंपनियों को भी आ सके। तीसरा मेरा सुझाव है
सुझाव आसान भाषा में, बीमा पॉलिसी के कागज इतनी कठिन अंग्रेजी और बारीक अक्षर में होते हैं कि वकील भी नहीं समझे, इसलिए सरल होनी भाषा, स्थानीय और यस कंक्लूड करो, लास्ट सेंटेंस कंक्लूड करो। उसके लोकल ट्रेन उसके कामगारों से है। हमारे डब्बे वाले डिलीवरी बॉयज, ओला, ओवर, काली गिली टैक्सी चलाने वाले और घरों में काम करने वाली माताएं बहनें के लिए लोग मुंबई की रीढ़ में, लेकिन अगर इनका एक्सीडेंट हो जाए तो उनका परिवार सड़क पर आ जाता है। मेरा सुझाव यह है कि इस बिल के तहत शहरी श्रमिक सुरक्षा कवच बनाया जाए, जिसमें बहुत कम प्रीमियम यानी 100 रुपया जैसा रखेंगे तो कामगारों को एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस मिले और उसे उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक कर दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बारिश के टाइम 2005 में मुंबई में बारिश आई। कुमार नाइक जी प्लीज। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. LICಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು LIC ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ, ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ LIC ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಭಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆ, ರೈಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ರಂಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ LICಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗ, ಜನಸಮುದಾಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪುವಂಥ ಒಂದು ಭೀತಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯರೇ. ವಿದೇಶಿ ಧನಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಣ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ LIC ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮುಂದೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಸರ್. ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಈ ರಂಗಕ್ಕೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ 74% ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂಡವಾಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಫಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು, ಬಡಜನರು, ಕೂಲಿಕಾರರು, ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲು ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ತೋಳ ಬಂತು ತೋಳ ಎನ್ನುವ ಫಿಯರ್ ಮಾಂಗರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ರಂಗಗಳಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಮುಖವಾಗುವುದು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಮಠ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವೇ ಬೇಡ. ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಡ ಅಸಹಾಯಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಸಹಕಾರ ಧೋರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ನಗದು ರಹಿತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ಕೇವಲ ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್.
1.21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ರೈತರು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅದೇನು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಇದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದಲ್ಲದೇ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್. ಅಸಮಾನತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವೇ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸರ್, ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾರು ಸರ್? ಅವ್ರು ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ನೇಮಿಸಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಹೋಗುವಂಥ ಭಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್, ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆಣತಿಗೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಶಕ್ತಿ, ದೃಢತೆ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಈಗ ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. DGCA ಒಬ್ಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ್ಜೀತ್ ಸಹರಮತ್ ಜಿ. आज आपने मुझे भारत के एक भविष्य को मजबूत करने वाले बिल पर बोलने का मौका दिया. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ लोगों का देश, बड़ी आबादी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें ना स्थायी इनकम और ना ही सामाजिक सुरक्षा के कोई प्रावधान थे. 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने सबसे पहले इसी सेक्टर की चिंता की. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की और इसमें गरीब और कमजोर वर्ग को कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा योजना लागू की. मात्र 20 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा राशि का प्रावधान किया गया. दुर्घटना से मृत्यु या अपंगता होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की, जिसमें मात्र 20 रुपए में 2 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया. इससे आगे बढ़कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हेल्थ मिनिस्ट्री ने आदरणीय जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ मॉडल बनी, ऐसी योजना लेकर आए जिसमें 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में जाकर हम इलाज करा सकते हैं और जिसमें 30,000 से ज्यादा हॉस्पिटल रजिस्टर हैं. किसानों का भी ध्यान किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 लागू की, जिसमें फसल नुकसान के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया और अब तक इसमें 22 करोड़ से अधिक हमारे देश के किसानों को लाभ मिल चुका है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पर दिल्ली में आकर सरकार संभाली, उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार, हमें लहर लहर तूफान मिले और मौज मझधार हमें फिर भी दिखलाया है हमने और ये दिखा देंगे सबको. इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें. आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा आज प्रस्तुत सबका बीमा सबकी रक्षा संशोधन विधेयक 2025 केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सभापति जी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ये एक दूरदर्शी पहल है. बीमा किसी भी अर्थव्यवस्था का
सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है और भारत में आज भी बीमा कवरेज ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ये सभी आंकड़े हमारे सामने पेश किए। ये विधेयक किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों तक बीमा की पहुंच को बढ़ाएगा और वित्तीय समावेशन को वास्तविक अर्थ देगा। भारत प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संगठनों के प्रति संवेदनशील देश है। बीमा व्यवस्था इस नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का एक साधन भी है, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा और परिवारों की बचत भी सुरक्षित रहेगी। मोदी सरकार ने समय समय पर इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाई, क्योंकि ये पूंजीगत क्षमता यानी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। इस निर्णय से इस सेक्टर में पूंजी की कमी दूर होगी। इस बिल से ग्रामीण और कमजोर वर्गों को बीमा कवरेज में लाभ मिलेगा। ज्यादा कंपनी आने से बीमा पॉलिसी कॉम्पिटिटिव रेट पर सस्ते दर पर बीमा पॉलिसीज को ऑफर करेंगी। क्लेम सेटलमेंट फास्ट होगा। एक्सपर्ट और स्किल बढ़ने से इंडिया ग्लोबल हब बनेगा, जिससे भारत में रोजगार की दृष्टि से भी गति बढ़ेगी। इंश्योरेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, जिससे भारत में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और स्वच्छ ऊर्जा आदि में विकास होगा। वित्त मंत्री जी ने बिल के ड्राफ्ट में स्पष्ट किया है कि प्रबंधन और नियंत्रण भारत में ही रहेगा। प्रीमियम का निवेश भारत में ही होगा। आईआरडीआई के सख्त नियम लागू होंगे और पॉलिसी होल्डर्स के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। मुझे लगता नहीं कि इतने स्पष्ट बिल में इन प्रोविजंस के बाद भी विपक्ष को कोई सवाल है। बिल में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि बिल में पॉलिसी होल्डर्स की एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड का भी प्रोविजन किया जाएगा, जिससे कि सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए पॉलिसी होल्डर्स को उनके अधिकार के प्रति शिक्षित किया जाएगा। वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि एलआईसी अब नए जोनल ऑफिस खोलेंगे जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि सरकार की रणनीतिक निगरानी उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और सबसे बड़ा डर डेटा का। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया कि डेटा प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के सेफगार्ड को भी इस बिल में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। इस नए बीमा विधेयक से भारत एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, विपक्ष के लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जल्दी में क्यों है। आपने मानसून सत्र में देखा कि पूरे 1 महीने सत्र को चलने नहीं दिया गया और जिन विषयों पर इनके पास जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई उत्तर नहीं था, इनको उठकर भागना पड़ा। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हर समय देश के लिए सोचते हैं और सरकार रात दिन विकसित भारत के लिए काम कर रही है। प्लीज कंक्लूड। जी, प्रधानमंत्री जी के विषय में कहना चाहती हूँ कि पाना चाहते हैं जो कुछ कल उनकी जिंदगी में करने के लिए बस आज होता है। लगा देते हैं जी जान वो लक्ष्य को पाने के लिए, उनकी इसी अदा में उनकी सफलता का राज होता है। अंत में समर्थन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि ये बिल न केवल इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का सपना साकार करेगा, अपितु ये बिल भारत को आधुनिक, समावेशी और सुरक्षित बीमा सेक्टर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए जो आज बिल पेश किया गया है, वो विकसित भारत की तरफ बढ़ने का सही समय है, यही समय है। इसलिए विपक्ष के साथियों को ये भी कहना चाहती हूं कि किसी मोड़ पर घबराकर न थम जाइए आप। जो बात नहीं है अपनाइए आप। डरते क्यों हैं नई राह पर चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, साथ आइए आप। और इसके साथ ही मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत का समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। Today, I am not merely opposing a bill. I am opposing the sale of social security through legislation, sir. Sir, the bill may look technical.
but consequences are deeply ideological, deeply political, and deeply dangerous. Sir, insurance deal with life, health, death, and dignity. That is why our constitution places social security within the framework of social justice, socialistic justice. Yet this bill treats insurance as just another investment sector, sir. Sir, let me draw the House attention to the clause 7, which inserts section 3AA into the Insurance Act. This single clause allows 100% foreign ownership in Indian insurance companies. Let us be honest about what it means, sir. It means foreign boards will decide Indian premiums. Foreign shareholders will decide Indian exclusions. Foreign exits will decide Indian insecurity. When profits fall, capital will exit. But people cannot exit sickness, death, or old age, sir. Sir, our Periyar warned us some time back, when capital rules society, humanity becomes collateral. Clause 7 makes Indian lives also collateral, sir. Sir, this bill names itself as Sabka Bima. Sir, if this bill is truly Sabka Bima, why does clause 27 rewrite section 27 to prioritize investment flexibility over social obligation? Why does clause 20 give IRDA power to direct investments without the Parliament's approval? This bill does not guarantee coverage. This guarantees capital freedom. This is not Sabka Bima, sir. This is Sab Kuch Corporate Hai. Sir, LIC is not just another insurer, sir. It is a people's institution built with people's savings. Sir, but look at chapter 3 especially, sir. Clause 77 to 82, amending the LIC Act. These clauses say, strip LIC of its unique statutory character. Force it to operate like a market-driven company. Push it to unequal competition with multinational insurers. Sir, LIC insured farmers, women, rural families when private insurers refused. This bill punishes LIC for being compassionate. Kalaignar Karunanidhi once said, public institution exists to correct market injustice, not to surrender to it, sir. This bill does exactly opposite to it, sir. Sir, clause 30 once again, regulatory power of the, clause 30 and 31. Speaker, sir, through the clause 30, amending section 34 and clause 31, amending section 34A, IRDA is given sweeping powers to issue binding directions, sir. Order disarmament, control management and operations. Sir, but where is the check? Most of these powers are accessible through regulations, not acts. Parliament is sidelined, democracy is bypassed. Power is concentrated in unelected hands, sir. Sir, clause 17, very, very important, sir. Let's look at clause 17. Inserting new sections 14A, 14B and 14C. These provisions allow centralized processing of KYC documents, sharing of sensitive health and financial data, large-scale data pooling by insurers and intermediaries. Sir, at the time when India still struggles with data breaches, this bill creates data power without data accountability. This is not a digital governance, sir. It is a data colonization. Sir, clause again to 59 to 63, sir. Speaker, sir, under clause 59, 61 and 63, penalties can go up to 1 lakh per day, 10 crores maximum, without clear statutory safeguards. This becomes regulations by fear, not regulation by fairness. Justice must be proportionate, sir. Power must be accountable. Sir, clause 69. Through clause 69, inserting sections 114B and 114C, the authority is empowered to issue subsidiary instructions. Let the House understand this very clearly, sir. These instructions have binding force, are not debated here, can override intent through interpretation. This backdoor lawmaking, delegated legislation is replacing democratic debate, sir. Sir, insurance affects state health schemes. 1 second, Kadir. Now it is almost 6. So if the House agrees, we will extend the House till the bill is passed. Agreed, sir. Okay, House is extended till the bill is not passed, bill is disposed of. We all agree, sir.
Thank you. Sir, Speaker, sir, we know very clearly insurance affects state health schemes, cooperative insurances, insurance societies, employment and welfare delivery. But not one clause mandates state consultation, federal consent, cooperative protection. This is missing in this act, sir. Sir, this follows the same pattern we saw in GST, NEET, Finance Commission injustice also, sir. Sir, Tamil Nadu is administered, not consulted by in this act. Who bears the risk, sir? Sir, the poor may pay premium. Corporates collect the dividend. Private insurance cherry pick the profit. LIC carries responsibility. This bill rewards profit and penalizes compassion, sir. Sir, profit is protected. People are exposed, sir, in this. Sir, Speaker, sir, once again, Parents Anna said, government exists to protect the weak, not strengthen the strong. Kalanger said, markets without morality destroy democracy. Clause by clause, this bill strengthens the strong and abandons the weak, sir. Sir, this bill tells the poor, your security depends on profitability. It tells the state, your consent is unnecessary. It tells the parliament, your role is very ceremonial. Sir, it tells the corporations, India's society's social security is open for business. Sir, we reject this bill. As a representative of Tamil Nadu and a believer of Dravidian social justice and a defender of constitutional socialism, sir, I strongly oppose the introduction and the introduction of this bill. I demand this withdrawal, or at the very least, it has to be, for the consideration, it has to be referred to a standing committee of the parliament. Sir, social justice is not for sale. People's savings are not for foreign capital, sir. India will not become a corporate insurance colony. Thank you very much, sir. Thank you, Kadir Sahan. Srimati Sambhavi ji. सभापति महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विधेयक जैसे सबका बीमा सबकी सुरक्षा पर बोलने का आपने मौका दिया। आज हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से सर आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने एक ऐसे योजना का, एक ऐसे कानून का निर्माण किया है जो आम आदमी के आय के अधिकार के हित में है, आम आदमी के लिए एक सुरक्षा कवच के तरह ये यहाँ पे अभी आया है। आम आदमी के जीवन का क्या मोल होता है सर, ये एनडीए की सरकार जो है वो बहुत ही मजबूती से जानती है और उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है। पर आश्चर्य की बात यह है सर कि जब जब इस सदन में रक्षा की और सुरक्षा की बात होती है तो विपक्ष को एलर्जी होती है। जीएसटी जिसमें आम आदमी के आय की रक्षा होती है, जब उसकी बात होती है तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात होती है, उनके आय की रक्षा की बात होती है, तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर का, जिससे हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखते हैं, सीमाओं की रक्षा की बात होती है, तब उनको एलर्जी होती है। और अगर हम बात करें एसआईआर का, जो लोकतांत्रिक अधिकार को मजबूत करता है, उसकी बात होती है, तब भी विपक्ष को एलर्जी है। तो समझ में नहीं आता है सर कि इनको रक्षा से एलर्जी है, लोकतांत्रिक अधिकार से एलर्जी है कि सुरक्षा से एलर्जी है। इनको सरकार से दिक्कत है, इनको आम आदमी से दिक्कत है, या इनको किसी गरीब से दिक्कत है। जब भी गरीबों के हित की बात होती है, दलित वंचित शोषित वर्ग के हित की बात होती है, तब हमेशा ये कुछ ना कुछ करके इसका विरोध करते हैं। सर, ये विधेयक जो है वो पुनर्स्थापित करता है कि जितनी गंभीर सरकार विकसित भारत एट 2047 के लिए है, उतनी ही गंभीर वो सुरक्षा बीमा हर एक इंसान को पहुंचे 2047 तक, उसके लिए भी है। हमारे सरकार की आधारशिला जो है, जो विचारधारा है, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और उसके तहत पिछले 10 साल से जो भी सुधार हुए हैं बीमा के क्षेत्र में, उसको ये विधेयक और मजबूत करता है। उसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मार्च 2025 तक लगभग 23 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं और 9 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 18,102 करोड़ रुपए के
का 18,102 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें लगभग 50 करोड़ नामांकन हुए हैं, जिसमें 23.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें लगभग 46,000 करोड़ रुपए का फंड जमा हुआ है। इसमें 48% जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिला है। सर, ये पुनर्स्थापित करता है कि केंद्र सरकार बीमा के माध्यम से सबकी आय को सुरक्षित महसूस कराना चाहती है, सबके जीवन को सुरक्षित रखना चाहती है। महोदय, ये बिल सिर्फ एक घोषणा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का एक रास्ता है। इस बिल के कुछ प्रावधान हैं जिसको हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। इसमें FDI जो है वो 74% से बढ़ाकर 100% करने का इसमें प्रावधान है। इसमें सर, जब FDI को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा तो इकोनॉमिक्स में हमेशा इसमें कंपटीशन बढ़ेगी और कंपटीशन के तहत जो कीमतें हैं वो गिरती हैं और कीमत गिरने पर सस्ते प्रीमियम पे बीमा का लाभ आम आदमी को मिल सकेगा। ये आम आदमी के हित में ही इस प्रावधान को रखा गया है। अगर हम विदेशी इंश्योरेंस का बात करें तो आपदा के समय जैसे बिहार में इसमें विदेशी रीइंश्योरेंस की पूंजी को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया है। इसमें आपदा के समय जैसे बिहार में बाढ़ आता है, ऐसे में जो छोटी छोटी बीमा कंपनियां हैं वो डूबने लगती हैं। विदेशी कंपनीज जब आएंगे तो इसमें रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आपदा के समय किसान और आम आदमी का क्लेम जो है वो नहीं कटेगा। LIC को आज़ादी मिलेगी, इसमें आम आदमी तो LIC से बेहतर लाभ मिल पाएगा। और क्लॉज 50 इसमें हम हाईलाइट करना चाहेंगे सर, क्लॉज 50 के तहत इस कानून की जो भाषा है उसको जेंडर न्यूट्रल भी किया जा रहा है। स्त्री और पुरुष का जो भेद है उसको कम किया जाएगा, सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित किया जाएगा। कीजिए मैम। बस मेरे 2 सुझाव हैं सर। हम एक महिला सांसद हैं, बिहार की महिला सांसद है। मेरा बस ये सुझाव है कि बिहार में जीविका दीदी का बहुत बड़ा एक समूह चलता है। अटल पेंशन योजना के तहत 48% महिलाओं को जो बीमा है उसका लाभ मिलता है। बिहार में जीविका दीदी जैसे समूह जो वो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जाए और महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। और एक और क्लॉज 93 के तहत सर, हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो ग्लोबल एवरेज से कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% है और ग्लोबल एवरेज 7% है। इसको बढ़ाने के लिए क्लॉज 93 के तहत जागरूकता का जो एक प्लान है वो एजुकेशन, क्लॉज 93 के एजुकेशन फंड के तहत जो स्थानीय भाषा जैसे मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, ऐसे में जागरूक अभियान चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। मौका देने के लिए सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पर बोलने के लिए ध्यान से सुनिए, आप ही की बातें कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, जब इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जब FDI को 100% करने की बात हो रही है तो सचमुच मुझे 2014 के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की बातें बहुत याद आती है और मुझे लग रहा है कि आपको भी जरूर याद होगा। FDI के बारे में क्या बोला करते थे, आपको भी जानकारी होगी। आज FDI को 26%, 49%, 75% और 100% कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की तो बातें गिरिराज जी बहुत जगह याद आती है। पेट्रोलियम के दाम के बराबर याद आती है, रुपये की आती है, देश की सुरक्षा पर आती है, पर कैपिटा इनकम की आती है। अब हमेशा थोड़ा हमारी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की बातें बहुत याद आती है। अब पता नहीं अब क्यों नहीं कर पाए, जाने कौन सी मजबूरी है। कोई यूं ही बेवफा तो नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, मजबूरी उनकी होगी। अध्यक्ष जी, 100% FDI वैसे ही है और उसमें एक प्रावधान लगा दिया गया है कि उसका हेड होगा एक व्यक्ति, इंडियन होगा, खुश करने के लिए लगा दिया गया। मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी भी याद आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो कब्जा करती थी और एक राजा को बोलती थी कि तुम ही यहाँ का मुखिया हो, और एक कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई।
इस बीमा में, इस विधेयक में किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और छात्रों के खिलाफ है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या कभी आपने सर्वे किया है कि कृषि बीमा जो हुई है उसके प्रीमियम देने में क्या क्या किसानों को भुगतना पड़ता है? नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कानून बनाया था कि सांप के काटने से किसी गरीब किसान की मौत हो जाएगी तो उसको भी पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा। आज हमारे यहाँ जिस इलाके से आते हैं, कभी गर्मी के दिन में बिजली के तार जलने से खेत आग लग जाते हैं, बाढ़ से सब कुछ हो जाता है। छोटे छोटे किसान हैं और एक किसान वो होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती। आपकी किसान बीमा नीति में है कि उसका अपना जमीन होना चाहिए। इधर के बैठे हमारे मित्र, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, सबको पता है, हमारे यहाँ बोलते हैं पोत पर खेती दिया गया है। यानी गरीब आता है, 1 साल का पैसा दे देता है और उसकी खेती करवाता है, उसके नाम से जमीन नहीं होती है। अगर कुछ हो जाता है तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। और पता है मजदूर कौन होते हैं? वो जो ठेके पर लगे करते हैं वो पीडीए समाज के होते हैं ज़्यादातर। इसलिए पीडीए के खिलाफ भी है, सोची समझी एक साजिश है। और एक चीज का तरफ और संज्ञान लाना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, अगर ध्यान दे तो गरीब छात्र होते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, घर का मुखिया के देहांत हो जाता है, उस गरीब छात्र की पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं होता। इंश्योरेंस करना है तो उस सेक्टर में करो कि अगर कोई गरीब, और गरीब में फिर कह रहा हूं कि पीडीए है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पीडीए समाज के खिलाफ सोची समझी आपकी साजिश है। आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। आपने आयुष्मान कार्ड का बड़े डंका बजाकर किया। हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो किसी गरीब को अगर 40 लाख रुपए का भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट का होता था उसको दिया जाता था। आज आयुष्मान कार्ड 5 लाख से ऊपर, आज की महंगाई का देख ले, 5 लाख में कौन इलाज होता है? आयुष्मान कार्ड लिमिटेड होता है। मुख्यमंत्री के यहाँ जाते थे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग लिख देते थे, किसी पद पर नहीं होते थे, कोई लिख देता था, भाजपा के साथी सबसे ज्यादा लिखते थे बेचारे, कि उनको कोई सुनता नहीं था, जितना होता आ जाता था पैसा। आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ अगर 5 लाख लिखो तो 50,000 रुपया आता है। उदाहरण में दे दूंगा। और आपको भी झेलना पड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने तो जब थे मुख्यमंत्री तो कहते थे मैं प्रदेश का मुखिया हूं, मुझे पता है कि केंद्र सरकार किस तरह परेशान करती है प्रदेशों को। आज भी हो रहा है। अब चूंकि इनकी मजबूरी है, लोग कह नहीं पाएंगे, अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार है, तो ये उसी तरह की मजबूरी है। आप इधर एड्रेस करो। आप ही को कर रहे हैं सर, आप ही को कर रहे हैं। ये लोग उस लायक भी नहीं कि उनको हम जवाब दें। डोंट गिव रिप्लाई। जी यस, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। सर, ये जैसे भी 26% से 49%, 74% किया गया, अब 100% किया जा रहा है। इस वक्त देश के स्वामित्व किसी बाहर या हमारी LIC का पैसा मित्रों के कंपनियों में इन्वेस्ट कराएं और बाहर का पैसा लेकर यहाँ करवाएं। देश के लोगों को जो स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा है, गरीबी से जुड़ा डेटा है, विदेशी कंपनियों के हाथ में दे देना। और दिस इज ऑल्सो नोटवर्दी टू that when the FDI limit was raised from 49% to 74% in 2022. Now, Raju, please try to conclude. Similar insurance were regarding. अभी तो 2-3 मिनट दे दीजिए, हम तो साथ में रहते हैं सर। सच सुना नहीं जाता सर, आप तो सुन लीजिए। एक मिनट से कंक्लूड। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विधेयक लाया गया है, जो ये गरीबों के खिलाफ है, इसमें सामाजिक सुरक्षा की कोई बात नहीं की गई है। सामाजिक सुरक्षा की जब जिस विधेयक में बात न हो, और खास तौर से किसानों को, मैं चाहता हूं कि इसमें उस प्रावधान हो, पूर्वांचल के लोग जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब की तरह किसान नहीं होते, छोटे छोटे किसान होते हैं, अगर उनके साल भर में 3 बार मुसीबतों से खेती नुकसान होती है, तो उन लोगों को भी जो कंट्रेक्चुअल खेती करते हैं उनको भी फायदा हो, और गरीब किसानों की सुरक्षा हो, गरीब छात्रों को पढ़ाई न रुके उसके लिए हो, और चिकित्सा के लिए चाहे जितना भी पैसा लगे, पैसा देने की जिम्मेदारी सरकार ले। 100% FDI जहां होगा, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। देश का पैसा देश के लिए होना चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय। बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 में आपने हमें भाग लेने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सरकार इस विधेयक को सुधार, सरलीकरण और विस्तार के नाम पर प्रस्तुत कर रही है।
लेकिन महोदय, यदि हम इसके प्रावधानों को ध्यान से पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि यह विधेयक बीमा सुरक्षा का नहीं बल्कि बीमा बाजारीकरण का दस्तावेज है महोदय। महोदय, इस विधेयक का सबसे गंभीर और दूरगामी प्रावधान चैप्टर 2 सेक्शन 7, जिसके माध्यम से नई धारा 3AA जोड़ी गई। महोदय, अब विदेशी निवेशक कंपनी किसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का 100% तक हिस्सा रख सकते हैं। अर्थात अब भारत के बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी स्वामित्व होगा महोदय। महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से हम जानना चाहते हैं, जब स्वामित्व पूरी तरह विदेशी होगा, जब बोर्ड पूंजी और निर्णय प्रक्रिया विदेशी हाथों में होगी, तो भारतीय नीति धारकों के हितों की गारंटी कहां होगी महोदय? इस धारा में न भारतीय बहुमत बोर्ड की बात है, न निर्णयों में सार्वजनिक हित की कोई वैधानिक शर्त है, न ही संसद की कोई पूर्व स्वीकृति है महोदय। महोदय, सरकार ने बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में राष्ट्रीय नियंत्रण का विचार ही त्याग दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विधेयक रूल ऑफ लॉ से हटकर नोटिफिकेशन द्वारा शासन की ओर ले जाता है। महोदय, सेक्शन 21 के माध्यम से इस विधेयक ने सेक्शन 27A, 27B, 27C और 27D को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। ये धाराएं निवेश अनुशासन, नियंत्रित फंड से सुरक्षा सीमाओं से संबंधित था। इन धाराओं को हटाकर सरकार ने बीमा सुरक्षा की दीवारों को तोड़ दिया है महोदय। इसलिए एक और सेक्शन है महोदय, 14, 14A, 14B और 14C के तहत बीमा कंपनियों को आधार, पैन, स्वास्थ्य विवरण, वित्तीय जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इस कानून में न डेटा लोकलाइजेशन की बाध्यता है, न डेटा उल्लंघन पर स्पष्ट दंड का भागीदार है, न विदेशी स्वामित्व की स्थिति में डेटा साझा करने पर रोक है महोदय। अध्यक्ष महोदय, LIC से जुड़े संशोधन किए गए हैं। LIC बिना सरकारी अनुमति के कार्यालय खोल सकती है, विदेशी शाखाओं के धन को भारत से बाहर रख सकती है, उसका संचालन निजी कंपनियों जैसा बनाया गया है महोदय। महोदय, हम कहना चाहेंगे, सामाजिक दायित्व, ग्रामीण बीमा, गरीब वर्ग की प्राथमिकता को सुरक्षित नहीं किया गया है। LIC को निजीकरण की दिशा में ले जाने वाला यह कदम है महोदय। महोदय, यह विधेयक बीमा सुरक्षा से अधिक निवेश सुविधा का कानून है और सार्वजनिक बीमा से अधिक कॉर्पोरेट बीमा को बढ़ावा देता है महोदय। महोदय, इन्होंने इस सबका बीमा सबकी रक्षा इसका नाम दिया, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूं, यह जो नाम है कुछ कॉर्पोरेट की रक्षा और सरकार की रक्षा विधेयक है महोदय। महोदय, मैं सरकार से और माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से मांग करता हूं कि 100% FDI प्रावधान वापस लिया जाए, नीति धारक सुरक्षा को कानून में मजबूत किया जाए, LIC के सार्वजनिक दायित्वों को वैधानिक संरक्षण दिया जाए और इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। श्री लव कृष्ण। So thank you very much, sir, for allowing me to speak on this. On behalf of Telugu Desam Party, I stand in support of Sabka Bima Sabka Raksha bill, sir. The reasons being, in India, the penetration of insurance is only up to 3.7%, whereas globally, the penetration is almost close to 7% or above that. So, before bringing this bill,
There are few other changes that have been made by the finance minister, sir. In the recent budget also, she has announced reduction of GST from 18% to 0% on individual health insurance, sir. This measure has been taken so that majority of the population can get access to the insurance scheme, sir. This is a good, and now bringing 100% FDI into insurance is again in the direction so that more people can get access to the insurance scheme, sir. But I want to make two quick suggestions, sir. One being the IRDAI, which governs, which regulates the insurance companies, has been little bit stringent, because in India, a country like India, it's a large country with large population. We have around 70 to 72 insurance companies, sir. 16% of the population have this 70 to 72 insurance companies, whereas rest of the 86% of the population, 84% of the population has 15,000 companies across the world, sir. So that is very low in India. So yes, we have reduction GST is a good thing, and also bringing the FDI will actually democratize the insurance policies. But having more insurance companies in the country is the direction we should be thinking of, sir. Because if you look at the example of RBI, obviously 20-25 years back there were only limited number of banks, but not enough penetration of the credit that has been happening, sir. But RBI has come forward and has given a lot of licenses to the banks, not only to the banks but also to the NBFCs also, so that more penetration of loans can happen, and we have seen the benefits of it. So in that same direction, I request Finance Ministry to look at in the direction so that more licenses for the insurance companies can be given, so that more people can access this. Because having 70 in a population of almost 1.6 crore is too less. Even when you compare Sri Lanka, a small country like Sri Lanka has 50 companies, sir. For such a small country with such a small population. So I think this regulation needs to be looked at so that more number of companies come in, sir. And also second and the last session is, we have been seeing Fasal Bima Yojana and also the health insurance schemes. They are good in a major extent, but very broad in nature, sir. But it needs to be brought at the farm gate level, because the private companies are doing it. Thank you. Government insurance also should be looking in the same direction. Thank you, Love Krishna, please. And by speech with support. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Shri Malvinder Singh ji. बहुत अहम बिल सबका बीमा सबकी रक्षा पे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, सर। जहां तक सबका बीमा सबकी रक्षा का सवाल है, तो अभी तक हमारे देश के लोगों का सबसे ज़्यादा अगर भरोसा था तो LIC पे है। किसी भी क्लास के आप आदमी से, चाहे वो गरीब है, चाहे लोअर मिडिल क्लास है, चाहे मिडिल क्लास है, हर एक इंसान जो है LIC पे भरोसा करता है। और जिस तरीके से इस बिल के माध्यम से 100% FDI को लाया जा रहा है, क्योंकि 74% तो FDI ऑलरेडी थी, लेकिन पिछले 2014 से लेकर 2023 का हम इसमें पेनिट्रेशन देखेंगे इंश्योरेंस में, तो बहुत मामूली सी वृद्धि हुई है। 2014 में 3.3 थी, तो अभी 3.7 हुई है। लेकिन आज भी सर सबसे बड़ा अगर लोगों का डर है पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह प्रीमियम है। अगर प्राइवेट कंपनियों को इस तरीके से खुली छूट दे दी जाएगी तो मुझे नहीं लगता, अभी तो आम साधारण और खासकर गरीब आदमी, यहाँ राजीव राय जी ने बात की है सबसे गरीब आदमी की, वो तो प्राइवेट बैंक में भी जाने से 100 बार सोचता है, इसकी मजबूरी। आज इवन हमारे जैसे लोग, इवन पार्लियामेंट की सैलरी भी SBI में जा रही, हमारा भरोसा उस पर ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्राइवेट कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे आम साधारण गरीब आदमी का कोई भला होगा। भला होगा तो डेफिनेटली प्राइवेट कंपनियों का भला होगा, विदेशी कंपनियों का भला होगा। मेरा 2-3 सजेशन है भारत सरकार से, और मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसमें 2-3 चीज़ों का बड़ा वैक्यूम दिख रहा है मुझे। एक तो इसमें नो कंपोजिट लाइसेंस, एक जगह नहीं रखा लाइसेंस, अलग अलग कर दिया, फिर तो लाइसेंस राज ही हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की अलग, लाइफ कार अलग अलग। मुझे लगता है कंपोजिट होना चाहिए लाइसेंस। द बिल एक्सपेक्टेड टू एक्सक्लूड कंपोजिट लाइसेंस ए लॉन्ग पेंडिंग इंडस्ट्री डिमांड, बड़ी पुरानी मांग थी सर,
उसको मुझे लगता है अभी तक इसमें कंसीडर नहीं किया। नो रिडक्शन कैपिटल नॉर्म्स फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। इसी तरीके से सर ड्राफ्ट प्रपोजल फ्रॉम अर्लियर ड्राफ्ट, नो प्रोविजन फॉर कैपिटल इंश्योरेंस कंपनीज। द बिल इज साइलेंट ऑन अलाउइंग लार्ज कारपोरेट टू सेटअप। बड़ी बड़ी कंपनियां वो तो चाहती हैं कि हम इंश्योर भी अपने आप को खुद करें, तो उनके लिए क्या इसमें प्रोसेस रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं मिस है। तो मेरा एक तो सरकार से आग्रह है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा बड़ा पुराना, जिस पे हमको हमेशा से भरोसा रहा है LIC पे, उसका सरलीकरण कैसे किया जाए, उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में हो। मुझे लगता है सोशल जस्टिस जो हमारा संविधान कहता है, तभी हम जस्टिस कर पाएंगे। आपने मुझे इस अहम बिल पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत धन्यवाद। श्री मोहम्मद हमदुल्ला। Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on the Insurance Amendment Bill. At the outset, I would like to thank my party, the Indian National Congress, for giving me an opportunity to speak on insurance. This Insurance Act, Amendment Act, would have great ramifications on the general public at large. Our insurance sector is regulated as per the Insurance Act of 1938, which was enacted. The insurance sector was nationalized post-independence. It was nationalized to protect the public interest at large, to enlarge the coverage, and also to mobilize the household savings. The enactment of 1938 of the Insurance Act was with the objective of monopolizing the insurance sector, and major public companies were merged under the General Insurance Corporation of India. The sole purpose was to protect insurance sector from private and foreign participation, ensuring that the state has central role in providing insurance to the public at large. Sir, post-liberalization of the economy in 1990, the FDIs were established, and as per the Malhotra Committee's recommendation, the IREDA Act of 1999 led to the opening of the insurance sector to private and foreign players in the year 2000 through joint ventures. Now, sir, in 2000, the cap for insurance sector was 26%. Later on, this cap was increased to 49%. That was in the year 2015. And again, in 2021, there was a significant increase in the private sector's share of premium. It was enhanced to 74% in 2021 by removing the Indian ownership and control requirement. Now, there is a move to increase FDI to 100% in the insurance sector. Sir, I would like to draw your attention to the fact that there are many demerits for this 100% FDI in the insurance sector. I would like to highlight a few of them. The loss of public control over a strategic financial sector. Increasing the FDI to 100% would allow complete foreign ownership and control over insurance operations in India, including decision-making for investment, pricing, and risk selection. There also, sir, increased risk of foreign dominance and capital outflows. This amendment and this bill allowing 100% FDI would also lead to the dominance of foreign companies and hegemony over the market. The domestic investors may not have the financial strength, and this could also lead to a large share of premium income flowing out of the country through dividends and payments within multinational groups. Sir, this is certainly going to adversely impact the domestic business. This would erode the insurance sector. And sir, Section 6 and Section 6A has been compromised because this was a major safeguard provided, and this has been compromised because Section 6 and 6A laid down statutory ceiling on shareholders, transfer of shares, ownership thresholds, voting rights. This has been compromised. This has been explicitly, the 100% FDI in insurance would compromise on this aspect, sir. Yes. Therefore, I oppose this insurance amendment bill, which does not protect and promote the local business and entrepreneurs involved in insurance sector. Sir, as the name suggests, the Sabka Bima, Sabki Raksha. Sir, I would like to draw your attention that up till 2014 in Lakshadweep, our
general population at large, we had a blanket cover, 100% insurance was given, health insurance was given, but that has been withdrawn. So I want to understand from the government, where do we fit in this Sabka Vikas, Sabka Bima and Sabki Raksha amendment of insurance laws bills? So I would request and urge the government to re-look on this amendment and keep this bill in a bill and not give complete control to foreign investors and thereby protect our local market and insurance sector. Thank you, sir. Thank you very much, Shri Mannalal ji. Shri Mannalal Rawat ji. Yes. सर, धन्यवाद आपका कि आपने सबका बीमा सबकी रक्षा जो विधेयक है उस पर बोलने का अवसर दिया। सर, बीमा क्या है? मैं LIC ऑफ इंडिया का एक ग्राहक हूं। सन 2001 में मैंने बीमा कराया था एक पॉलिसी का। आज मुझे बताया गया कि उसमें मुझे 18 लाख की मुझे उसमें राशि मिल रही है। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो इसमें सुरक्षा भी है, गारंटी भी है और एक कॉन्ट्रैक्ट है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक भरोसा है और देश की जनता का भरोसा होना मतलब अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जब देश में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात जब चल रही है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अपने महत्वपूर्ण है। ये बीमा भी सबका होगा। मुझे लगता है कि जब कुछ देशों की तुलना करते हैं तो हमारा अपना जो आंकड़ा है बहुत कमजोर है। हम अभी 4% से नीचे हमारा पेनिट्रेशन है, तो ये चिंता का विषय तो है ही। लेकिन जब व्यापक स्तर पर संविधान के प्रियम्बल के अनुसार हम सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये सामाजिक और आर्थिक न्याय का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होगा। इसको लेके इसमें जो कहा गया है वो सारे प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, इस जो प्रस्तुत बिल है इसमें बीमा अधिनियम 1938 और IRDA का जो एक्ट है 1999, LIC ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1956 और साधारण बीमा जो कारोबार है राष्ट्रीयकरण एक्ट 1972 इसको अमेंड करता है, इसको जोड़ता है। इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रावधान है वो आधुनिक आवश्यकता के अनुसार बनाता है, तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये अपने आप में आगे और कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो, इसका जो प्रावधान वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक बड़ा प्रावधान ये करता है। मैं इसके समर्थन करता हूं और मैं सभी से आग्रह करूंगा इसका सर्वसम्मति से इसको पारित करें। माननीय महोदय, सभापति महोदय, इसके जो उद्देश्य दिए गए हैं वो बहुत स्पष्ट है कि संचित निधि पर इसका कोई प्रभार नहीं आएगा, कोई भी भार नहीं पड़ेगा। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसका जो उद्देश्य दिए गए हैं वो बीमा सेक्टर में वृद्धि करना और उसको विकास करना, इसको और तेज करना। जब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से बीमा सेक्टर भी आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिसी धारकों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना, तो सबसे महत्वपूर्ण बीमा सेक्टर में तो ग्राहक है, उसके लिए इसमें प्रावधान किए गए। बीमा कंपनियां और बीमा के एजेंट हैं, उनके जो हित हैं वो उनकी रक्षा करना इसमें महत्वपूर्ण बात है। और इस कारोबार जो है इसको बहुत ज्यादा सुगम बनाना, वो भी इसमें प्रावधान दिया गया है। विनियम इस प्रकार से बनाना कि पूरा जो सेक्टर है वो ट्रांसपेरेंट हो और बहुत अच्छे से रेगुलेट हो, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, दुनिया में जब हम देखते हैं तो हमारा अपना जीवन बीमा में हम पूरे दुनिया में 10वें नंबर पर है और गैर जीवन बीमा में उसमें हम लोग 15वें नंबर पर है। अपने आप में बहुत पीछे है। जब हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो हमारी अपनी पोजीशन भी बहुत तेजी से यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, हमारा अपना हित होना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया जमाना है डिजिटल, उसमें जो डेटा संरक्षण उसकी भी बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात करते हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। माननीय महोदय, हमारा अपना जो सेक्टर है अभी काफी पीछे, जैसा कि मैंने निवेदन किया, सरकार ने काफी पहल की है। इसमें किसानों को लेकर पहल की है और GST में छूट देकर नौकरी वालों मध्यम वर्ग को भी इसमें राहत दी है। लेकिन जो स्वास्थ्य बीमा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान जो आरोग्य योजना, उसमें काफी खरा किया, लेकिन अभी करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो आवश्यकता है वो इस बीमा में इसमें आती है। जो सबसे बड़ी इसमें दिखता है वो IRDA में जो ताकतवर बनाने की बात की गई है कि यदि विदेशी FDI की वजह से कोई दूसरी कंपनी यहाँ आके काम करती है, कारोबार करती है, जो प्रीमियम कलेक्ट किया है उसका इन्वेस्टमेंट भी भारत में होगा। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा इसमें प्रावधान है। और दूसरा इसमें यह भी किया गया कि उसमें कोई इरेगुलरिटी हुई वित्तीय तरीके से तो उसको पूरे पैटर्न को A to Z पूरा उसको भी जांचने की जो ताकत IRDA को दी जा रही है, मुझे लगता है इसमें सबसे बड़े में से एक है। और LIC ऑफ इंडिया के लिए बड़ी इसमें खुशखबरी जैसा है कि अगर उसको जनरल ऑफिस खोलना है तो सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्लोबल स्टैंडर्ड इसमें आ रहा है। मुझे लगता है महोदय, सबका साथ सबका विकास का जो दौर चल रहा है उसमें सबका बीमा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सबकी रक्षा होगी। और निश्चित रूप से इसमें एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। विपक्षी इसमें थोड़ा
इसका विरोध कर रहे हैं। वाजिब कारण है, जब सबका बीमा होगा तो बिहार जैसा परिणाम आएगा, वेस्ट बंगाल में भी आएगा, तमिलनाडु में भी आएगा। मुझे लगता है इस कारण कोई राजनीतिक कारणों से इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अन्यथा सबका बीमा सबकी रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे भारत को रक्षा करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि सर्वसम्मति से बिल को पारित किया जाए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद। Sir, thank you for giving this opportunity to speak on Sabka Bima, Sabki Raksha bill, sir. Sir, I hope the letter and spirit of this bill not only confines to life insurance, but also to health insurance and the agriculture crop insurance as well, sir. Sir, some of the advantages of this bill are, sir, this bill opens a pathway for up to 100% FDI in Indian insurance companies to be governed by conditions notified subsequently by the Finance Ministry. In a capital-intensive, scale-driven sector, this initiative can propel growth, sir. Sir, India's insurance coverage remains low by global standards when compared to global standards, with life insurance penetration at around 3% and general insurance close to only 1%. This highlights deep gaps in access, awareness, and affordability, especially in rural and informal sectors. Sir, this initiative, this bill will definitely increase the coverage across the country, sir. Sir, one of the main challenges of this bill, sir, this bill does not address the claim settlement ratio data being used as a misleading tactic by insurance companies, sir. Sir, insurance companies in our country boost their high claim settlement ratio by approving small claims while often rejecting larger genuine claims on technicalities, making the actual claim amount settlement ratio much lower, which is where the real financial impact lies for the consumer, sir. Even the much quoted 96.82% claim settlement ratio is misleading because a claim is counted as settled even when it is only partially approved. Families often receive just 60% or 65% of the insured amount after heavy deductions. Yet such cases are proudly added to the settled column. This inflates the numbers without reflecting the real value paid to the policyholders. Sir, on behalf of YSR Congress Party, we support this bill, sir, provided the bill should not negatively impact insurance employees and there should be safeguards for the jobs, rights and service conditions of existing insurance employees, sir. Sir, the Government of India must move towards universal basic health insurance by expanding Ayushman Bharat to cover all citizens of the country, sir. Sir, IRDAI must be strengthened into a proactive SEBI-like regulator to effectively oversee foreign and domestic insurance companies, sir. Sir, finally, insurance-related adjudication and dispute resolution mechanisms must be comprehensively reformed to ensure timely and fair justice. Thank you, sir. Thank you very much, Sri K. Radhakrishnan. Sir, I rise to strongly oppose the Sabka Bima, Sabka Raksha amendment of Insurance Law Bill 2025. Sir, ഈ ബില്ലിൻ്റെ മുകൾ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ചെയറിലിരിക്കുന്നത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങയോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സർ, सबका बीमा सबका रक्षा, while the title suggests universal protection, the matter of the bill moves in the opposite direction. This bill is away from social security and towards corporate driven insurance expansion. Sir, this bill proposes sweeping amendment to existing insurance laws under the pretext of improving penetration and efficiency. In reality, it facilitates greater privatization, consolidation, and foreign and private sector dominance in the insurance sector. Sir, weakening the public character of insurance that has been built over the
decades in this country. So public sector insurance like LIC and general insurance companies have played a crucial role in social security, rural outreach and nation building. This bill risks reducing them to mere marketplace players competing on unequal terms. Sir, the bill also dilutes regulatory oversight and parliamentary accountability, granting excessive power to executive and regulators without adequate safeguard. There is no clarity on how misleading claim, rejection or exclusionary practice will be prevented, particularly when private players dominate. Sir, most importantly, the slogan, Sabka Bima, Sabka Vikas, Sabka Raksha, rings hollow when there is no legality enforceable, right to insurance or guaranteed coverage for all citizens. Without strengthening public insurance and ensuring state responsibility, this bill reduces social protection to a market transaction. Sir, therefore I urge the government to withdraw this bill. Sir, I submit a simple request to Honorable the Finance Minister to withdraw the bill, then we can discuss the matter further. I strongly oppose once again this bill. If this bill may be withdrawn. Thank you, Honorable Member. Honorable Member, Sri E.T. Muhammad Basir ji. Sir, thank you very much. Sir, before making my observation on this bill, I would like to make an appeal, that is, save LIC. If you throw this LIC to have a fight with the multinationals, it's very clear that it will go to doldrums. I hope that the government will show that kindness to this prestigious foreign institution. Even otherwise, LIC is facing a lot of illness, such as portfolio losses, stock performance, corporate exposure, operational and strategic challenges, and similarly external campaign and perception. We all know that LIC is navigating a mix of market volatility, internal kind of difficulties like staff shortage, and this kind of thing they are suffering. If you are not coming forward for the rescue of this LIC, we will be showing a bad pride. Similarly, when we are talking this, I would like to say that we must have a precaution and preparedness. What is the position now? Public sector is weakening. On the other side, private parties like, not only in the small scale, in a big scale, in an international level, they are coming to capture the entire market. Like India, it's a problematic kind of things. Strong regulatory framework. Even Honorable Minister in our opening remarks today was also saying the necessity of regulatory mechanism. I hope that we must establish a robust independent regulator like IRDAI to oversee licensing first. Similarly, operations, pricing and solvency of insurance companies. We have to ensure that. We have to verify it that way. Second thing is financial soundness requirement. When new parties come with the new offers, impose minimum capital, solvency margins and reserve requirement
to ensure insurers can meet future claims. That is a safety thing. Then consumer protection measures, mandate transparency in policy terms, fair pricing, grievance redressal mechanism, that kind of things. Protection against mishandling. Similarly, risk management standard, requirement insurers to adopt sound underwriting practices, insurance arrangement, and risk-based supervision. That also is a necessity. Similarly, phased and controlled entry, allow gradual entry of private and foreign players to prevent market instability and excessive competition. It's a very important result. When we ask the Indian companies, you fight with the multinationals. We have to realize the situation, whether they can fight. If they cannot fight, how it can survive? What I am saying is, if you are not coming for the rescue of these institutions, we will be in a dangerous situation. Very good. Universal service obligation, impose social and rural sector obligation. So insurers reaches vulnerable and underserved population. That also to be considered properly. Monitoring and accountability. That's a very important thing, sir. It's easy to open the doors for everybody, but unless we are not assuring this kind of thing, we will be in danger. Crisis preparedness. We have to be prepared to meet this kind of crisis. Okay. I am concluding, sir. One more point I would like to say that if we are not doing this kind of kindness, is not prevailing in you, we will be in danger. Public sector is public sector. It is having its own greatness. But instead of fighting with the others, you have to support them. Government should support the private sector, public sector. With the few expectation, I present that the government may take, wisdom may prevail upon the government and take appropriate action in this regard. Member. I thank you very much. Selvaraj ji. பேரவைத் தலைவர்களுக்கு வணக்கம். பேச அழைத்தமைக்கு நன்றி. நிதித்துறை அமைச்சர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சப்கா பீமா சப்கி ரக்ஷா இந்த திருத்த சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன். காப்பீட்டுத் துறையில் 100% அந்நிய முதலீடு பொருளாதாரத்திற்கும் நுகர்வோருக்கும் நாட்டின் இறையாண்மைக்கும் எதிரானது. காப்பீடு என்பது சாதாரண வணிகம் அல்ல, அது ஒரு சமூக பாதுகாப்பு. காப்பீடு என்பது மக்களின் நீண்டகால சேமிப்புகளை திரட்டும் துறை. அந்த சேமிப்புகள் உள்கட்டமைப்புகள், சமூக நலன், தேசிய வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 100% FDI அனுமதிப்பது என்றால் இந்திய மக்களின் சேமிப்புகள் அந்நிய மூலதனத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு செல்லும். லாபம் நாட்டிற்கு வெளியே மீள்பெயர்வு. ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்டர் ஆன நிதித்துறையின் மீதான அரசின் கட்டுப்பாடு பலவீனப்படும். இது வளர்ச்சி அல்ல, தேசிய வளங்களை சுரண்டலுக்கு உட்படுத்தும் நடவடிக்கை. லாப வேட்டையாடும் அந்நிய நிறுவனங்களுக்கான சட்டம். அந்நிய காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இந்திய மக்களுக்கு அல்ல, சர்வதேச பங்குதாரர்களுக்கு பொறுப்புடையவை. சமூக பாதுகாப்பை அல்ல, அதிகபட்ச லாபத்தை நோக்கமாக கொண்டவை. நகர்ப்புற உயர் வருமான குறைந்த ஆபத்து கொண்ட வாடிக்கையாளர்களை மட்டுமே குறிவைக்கும். இந்த திருத்தச் சட்டம் நிதி உட்சேர்க்கைக்காக அல்ல, உலக நிதி மூலதனத்தின் லாபத்திற்காக. நுகர்வோருக்கு எதிரான விளைவுகள் 100% அந்நிய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பிரீமியம் உயரும். கோரிக்கை நிராகரிப்பு அதிகரிக்கும். முதியோர், கிராமப்புறம், ஏழைகள், ஒழுங்கமைப்படாத தொழிலாளர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவார்கள். நுகர்வோர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய குடிமக்கள் அல்ல, லாபத்தின் மூலப்பொருளாக மாற்றப்படுவார்கள். பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களை பலவீனப்படுத்தும் நடவடிக்கை. LIC, GIC போன்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் கிராமப்புறம், சமூகத்துறைகள், அதிக ஆபத்து கொண்ட பிரிவுகளுக்கு சேவையாற்றுகின்றன. தேசிய வளர்ச்சி திட்டங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. 100% ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சமமற்ற போட்டியை உருவாக்கும். பொதுத்துறையை திட்டமிட்டு புறக்கணிக்கும். மறைமுக தனியார் மேம்பாக்குவதற்கு வழிவகுக்கும். இது சீர்திருத்தம் அல்ல, பொது காப்பீட்டின் திட்டமிட்ட சிதைவு. தொழிலாளர்களின் வேலை மற்றும் உரிமைகளுக்கு அச்சுறுத்தல். அந்நிய ஆதிக்க காப்பீட்டுத்துறை ஒப்பந்த தொழில் அவுட்சோர்சிங் முறை அதிகரிக்க வலியுறுத்தும். இலக்கு அடிப்படையிலான அழுத்தம் அதிகமாகும். வேலை பாதுகாப்பு இழப்பு ஏற்படும். தொழிற்சங்க உரிமை சிதைக்கப்படும். நிரந்தர வேலை பாதுகாப்பற்ற கான்ட்ராக்ட் வேலைகளாக மாறும்.
சீனாவின் அனுபவம், கட்டுப்பாடு பிளஸ் தேசிய முன்னுரிமை சீனா காப்பீட்டுத் துறையில் அரசு கட்டுப்பாட்டை தக்க வைத்துள்ளது. அந்நிய முதலீடு அனுமதிக்கப்பட்டாலும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள், தேசிய நிறுவனங்கள் மேலாதிக்கம், சமூக இலக்குகள் முதுமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு உள்ளது. சீனா காப்பீட்டை வளர்ச்சி கருவியாக பயன்படுத்துகிறது, லாப சந்தையாக அல்ல. லத்தீன் அமெரிக்க அனுபவம், தனியார் மயமாக்கலின் தோல்வி. சில லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் காப்பீடு மற்றும் ஓய்வூதிய துறைகள் முழுமையாக தனியார் மயமாக்கப்பட்டன. விளைவுகள் உயர்ந்த பிரீமியம், குறைந்த காப்பீட்டு பாதுகாப்பு, பெரும் நிதி நெருக்கடிகள். அரசே மீண்டும் தலையிட்டு மீட்டது. தனியார் அந்நிய ஆதிக்கம் சமூக பாதுகாப்பை சீரழித்தது. இந்தியாவின் முன் அனுபவமே எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 2047க்குள் அனைவருக்கும் இன்சூரன்ஸ் என்ற நோக்கத்தில் 100% அந்நிய முதலீடு மூலதன உயர்வு பொதுத்துறையை பலவீனப்படுத்தி அந்நிய தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் ஏன் ஊக்குவிக்க வேண்டும்? 1991 முதல் இன்று வரை ரூபாய் 82,000 கோடி மட்டுமே இன்சூரன்ஸ் துறையில் அந்நிய மூலதனம் இந்தியாவிற்கு வந்துள்ளது. ரூபாய் 57 லட்சம் கோடி சொத்து மதிப்புடன் செயல்படும் எல்ஓசி நிறுவனத்தை மேலும் பலப்படுத்தினால் இன்சூரன்ஸ் வழங்க முடியும். கடந்த ஆண்டு ஒன்றிய அரசுக்கு ஈவுத்தொகையாக ரூபாய் 7,324 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்நிய இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் இந்தியாவிற்கு பங்களித்தது என்ன? 2000க்கு பிறகு இந்திய இன்சூரன்ஸ் துறைக்கு வந்த அந்நிய இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் பல இந்த 25 ஆண்டுகளிலேயே தொழிலை விட்டே முதலீடுகளை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறி சென்று விட்டன. அமெரிக்க இன்டர்நேஷனல் குரூப், அலையன்ஸ், நியூயார்க் லைஃப், ஐஎன்ஜி அழுத்த நீண்ட காலம் தொழில் தங்காத இந்த நிறுவனங்களை நம்பி நீண்ட கால முதலீடுகளை செய்யுங்கள் என்கிறது அரசு. தாயின் மணிக்கொடி பாரின் என்ற பாரதியின் பாடலை நாடாளுமன்றத்தில் முழங்கிவிட்டு வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு 50வது விழா எடுத்துவிட்டு தாய் மண்ணை வணங்குவோம் என்று கூறிவிட்டு அந்த நாட்களிலேயே அந்நிய முதலீட்டிற்கு மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இன்சூரன்ஸ் துறையில் 1999ஆம் ஆண்டில் 20 தனியார் நிறுவனங்களில் மாண்புமிகு வாஜ்பாய். Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I rise to oppose, strongly oppose the Sabka Bima Sabka Suraksha Amendment of Insurance Laws Bills 2025. So today morning at the time of introduction of the bill, I have raised so many objections. That objections may be treated as part of my speech in opposing the bill also. Sir, I would like to remember the days of the global melting down, that is the global economic crisis during the year 2008. See, at the time, we all know that the architects of the new liberalized economic reforms is none other than Dr. Manmohan Singh. He was the then Prime Minister. Along with the Finance Minister, they were returning from global summit so as to address the issue of the melting down. When we reached Delhi, had a press meeting, and the press meeting, the press people, I asked a very pertinent questions to them. And the question was, the global economic crisis or the melting down, how it will be affecting the Indian economy? That was the pertinent question asked. The then Prime Minister Honorable Manmohan Singh ji has replied to the press people that this global economic crisis is not adversely affecting the Indian economy. Then again the question has been raised, why? Then he has answered that because we are having strong public sector undertakings in the insurance sector as well as in the banking sector. So this is the way by which the Indian economy was saved during the global economic crisis in the year 2008. That is the strength of the public sector undertakings in the country. So unfortunately, by this will 100% equity or 100% foreign direct investment in the insurance sector. And it is indirectly, it is a privatizing the total insurance sector, we know very well. See, I would like to raise the example, cite the example regarding the Life Insurance Corporation of India. It is a statutory, it is an organization formed by a means of the statute of the parliament in the year 1956. So 5 crores was the paid up capital of that company or the corporation. So now what is the wealth and asset and the capital of the Life Insurance Corporation? When we are all talking of the penetration is very less compared to the global average, 7 point something in Kerala, sorry, in India it is just 3%. And when we have to discuss about from 1956 to 2020 for the growth of Life Insurance Corporation,
And the role of the life insurance corporation in the development of the country, in the infrastructure development, so many welfare schemes and the infrastructure developments, the contribution was too much. My question to the Honorable Minister is, suppose the 100% foreign direct investment, the multinational corporations doing business in the field of the insurance, and whether they are concerned about the national development of the country, they will grab the profit and they will be benefited. But as far as the public sector undertakings like life insurance corporation and the general insurance corporations are concerned, the benefit and the profit will be utilized for the welfare of the nation and for the development of the nation. That is the history which we have seen during all these 75 years. Sir, coming to this, one of the point, what is the main point regarding the growth and development of the life insurance corporation? Sir, that is the main is, sir, the market share. If you go through the market share, even after foreign investment in the general insurance sector and the life insurance sector, they couldn't compete with the life insurance sector. Why? Because of the strength of the LIC agents in the country. There are 13 lakhs, now it is 14 lakhs of LIC agents are there. They are having, that is the strength of the Indian insurance corporation, that is the life insurance corporation. But as far as the general insurance corporations are concerned, they are not having such a strength. That is the reason by which there the market share of the private companies and the foreign companies it will be more than 70%. But as far as the LIC or the life insurance sector is concerned, still, even after all this privatization and globalization, life insurance corporation is maintaining the market share at a high rate of more than 60%. If this be the situation, now we are inviting foreign direct investment up to 100% and giving benefits to them. Definitely that will be adversely affecting the life insurance corporation, and definitely that will be resulting in the livelihood of the LIC agents who are working for the benefit of the country and benefit of the corporation. Sir, coming to 3 clauses, I have given notices of 7 amendments, out of which the 3 clauses I would like to say, clause 7 I am not leaving, already I have spoke, and regarding clause 71, I would like to seek a clarification from the Honorable Minister, because it is ambiguous and it is not clear, it is vague. Clause 71, sir, I will just read it. That is in section 116 of the original act. The central government may by order published in the official gazette and for the reason to be recorded in writing exempt any insurer constituted, incorporated or domiciled in any country outside India from any provisions of the act which may be specified in the order, either absolutely or subject to such conditions or modifications as may be provided in such order. That means power is being given to the central government to exempt from the requirements of this provisions of this bill as far as these foreign multinational corporations are concerned. Is it not an undue benefit being provided to the multinational corporations than the domestic companies? And also one more provision, that is regarding the agents. I would like to seek the clarification from the Honorable Minister, that is regarding clause 36. That means Insurance Regulatory Development Authority of India. That will be, yes sir, it will be determining, for which also I am seeking a clarification. So once again, I would like to urge upon the Honorable Minister, please protect the public sector undertakings in the country, in particular the life insurance corporation as well as the general insurance companies, so as to have the development of the nation and for the welfare of the nation. With these words, once again, I strongly oppose this bill providing 100% foreign direct investment to the corporate in the private sector. Thank you very much, sir. Thank you, Honorable Members. V. Venti Lingomji. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நம்முடைய மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் அனைவருக்கும் காப்பீடு, அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்ட முன்வரவை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். அந்த நேரத்தில் அவர்கள் அந்த சட்டத்தின் மூலமாக 74% வெளிநாட்டு முதலீடுகளிலிருந்து இன்றைய தினம் 100% மாற்ற இருக்கின்றார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய ஆதங்கமெல்லாம் அந்த பிரீமியம் தொகையானது உயராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. அது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த பிரீமியம் தொகையை உயர்த்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அல்லது அதற்கு வரைமுறை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல் காப்பீடு தொகையை பெறுவதற்கு, அதாவது அந்த பிரீமியம் அந்த
உரிமை தொகையை பெறுவதற்கு உண்டான வழிமுறைகளை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் எளியவர்களால் அந்த பெரிய நிறுவனத்தோடு போட்டியிட்டு அல்லது வழக்கீடு செய்து அது தொகையை பெற முடியாமல் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக நீங்கள் முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, மருத்துவ காப்பீடு என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் பெரிய நிறுவனங்கள், பெரிய மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய காப்பீடுகள் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். ஆனால் சிறிய மருத்துவமனைகளால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஏனென்றால் அந்த காப்பீட்டுக் கழகங்கள் சிறிய மருத்துவமனையினுடைய தொகையை தருவதில்லை என்று சொல்லக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக சிறிய நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய சிறிய மருத்துவமனைகளிலே அந்த காப்பீட்டு அட்டைகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதன் மூலமாக ஏழை மக்கள் பாதிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு உண்டான முறையை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல விவசாய காப்பீடு என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே நீங்கள் பார்க்கின்ற நேரத்தில் சாம்பிள் சர்வே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியை சார்ந்த ஒரு காப்பீடாக இருக்கின்றது. அது தனிப்பட்ட முறையில் விவசாயிகளுக்கு உண்டான காப்பீடாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். குறிப்பாக நெற்பயிரை வைத்து கொண்டால் அங்கே இருக்கக்கூடிய நோயினால் பாதிக்கக்கூடியது என்று சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே தனிப்பட்ட விவசாயிகள் பாதிக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே அவர்களுக்கு காப்பீடு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுபோல் இன்றைய தினம் கரும்பு விவசாயிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதுவும் குறிப்பாக நோயின் காரணமாக, குறிப்பாக கடலூர் பகுதி, அதே போல் விழுப்புரம் பகுதி, புதுவை பகுதியானது கரும்பு விவசாயிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதோடு மட்டுமல்லாமல் உங்களுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும், பொள்ளாச்சி பகுதியிலே தென்னை சாகுபடியானது மிக சிறப்பான சாகுபடின்னு சொல்ல வேண்டும். அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் தென்னையில் இருக்கக்கூடிய நோயின் காரணமாக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பினை தர வேண்டும். ஏனென்றால் இவையெல்லாம் அந்த குரூப் இன்சூரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அந்த ஒட்டுமொத்தமான சர்வே செய்துதான் அவர்களுக்கு தருகின்றார்கள். ஆனால் குறிப்பிட்ட விவசாயிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய நேரத்திலே அவர்களுக்கு உண்டான தொகைகள் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. அதுவும் குறிப்பிட்ட நேரத்திலே பெறுவதில்லை என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். ஏனென்றால் 2 ஆண்டுகள் 3 ஆண்டுகள் கூட ஆகக்கூடிய நிலைகள் ஏற்படுகின்றன. அவற்றை நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோல் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், புதுவையானது இயற்கை பேரழிவு என்பது அடிக்கடி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம். அதுவும் குறிப்பாக வாகனங்கள் அங்கு மூழ்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றது. அங்கே இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் அங்கே வாகனத்தை வியாபாரம் செய்வதற்கு தயங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள், இன்சூரன்ஸ் செய்வதற்கு தயங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் அதிகமான அளவிற்கு அங்கு பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது. அவற்றுக்கு உண்டான வழிமுறையை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு 3 or more points. அது மட்டுமல்ல, தனியார் வங்கிகளில் நாம் பார்க்கின்றோம், பிரியாரிட்டி செக்டார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியிலே கடன்கள் வழங்குவதில்லை. அதுவும் முத்ரா லோன்கள் போன்ற வங்கியில் தரக்கூடிய கடன்கள் தருவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் பிரியாரிட்டி லோனிலே அவருக்கு கம்பல்ஷன் இல்லை. ஆனால் அது போன்ற இந்த அந்த இன்சூரன்ஸ் துறையிலேயும் பிரியாரிட்டி செக்டாருக்கு உண்டான அமைப்பினை நீங்கள் தர வேண்டும். கண்டிப்பாக இவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்தை அவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, புதுவையிலே உங்களுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும், இன்றைய தினம் நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள், புதுவையினுடைய ஆளுநருடைய முயற்சியின் காரணமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய போலி மருந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடியவர்களை கண்டறிந்து அவர்களை அந்த மருந்து நிர்வாகத்தை முடக்கியிருக்கின்றார்கள், அவர்களை கைது செய்திருக்கின்றார்கள். அதன் காரணமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் இன்றைய தினம் இறந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு உண்டான காப்பீட்டை தர வேண்டும். அதன் காரணமாக நீங்கள் அந்த போலி மருந்துகள் பயன்படுத்தக்கூடிய அவர்களுக்கும் அந்த காப்பீடு தர வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறின் காரணமாகவும் அல்லது மருத்துவமனையின் தவறுகளின் காரணமாகவும் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த இழப்பீடையும் அதில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, அந்த போலி மருந்து உற்பத்தியின் காரணமாக வருமானத்தை இழந்திருக்கிறார்கள். கடுமையான நடவடிக்கை. This bill, sir, I rise to speak on this bill with much apprehension and a lot of doubts as far as the intent of the government. Sir, this Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025. Sir, the bill proposes sweeping changes, sir, in the existing bill. I mean, we are reaching 100% FDI. Starting from 26% to 49% to 74% to 100% through this enactment. So the
objective, as publicly stated by the Honorable Finance Minister, is to reach insurance for all by 2047, and 100% FDI will be available to companies which invest the entire premium in India. Will the government ensure that? I would like to know from the Honorable Finance Minister, sir. And also, the Minister says that the removal of FDI cap will attract stable and sustained foreign investment, increase competition, facilitate technology transfer, improve insurance penetration in the country. And also, sir, in insurance penetration is only less than third if you take the global average, and insurance density is only 10th of the global average. So, sir, there is a lot of scope for our existing companies to improve their business in our country. So what is this technology transfer? I don't understand, sir. In insurance business, this is not a high technology area. Yeah, I can understand if it is chip making or something like that, you have to import, technology from outside. But this is just, bookkeeping and management of finance, which I don't know what high technology is going to be brought from abroad. So, sir, removal of this FDI cap and bringing in foreign companies into our market, where we had seven public sector companies, and now gradually it has risen to 73 insurers now, 73 companies now, and the global average is around 10,000. And if all those companies are going to come in and invest in this country, of course, FDI, foreign direct investment, foreign capital will come, but what will be the outcome ultimately of our companies? That is the main point to be thought of. What technology is going to be transferred and what kind of strengthening? There will be, of course, competition, and that competition, whether there will be a level playing field. That is the main thing, sir. So I would like to know from the Honorable Minister how it is going to benefit our country. Of course, competition, if it benefits the larger public, that is good. We are not against it. But by competition, if our companies are going to be, left out of the market, then is that what we want? Is that strengthening of our companies? Sir, I will complete, sir. Just give me a few minutes. So, all this relaxing, where it will take our country, our company, our interest of our people. That is the main thing, sir. And the main thing is capital investment is not the only factor holding back growth of insurance in this country. The regulatory structure should focus on reforms to favor the customers. Lengthy and reluctant claim settlement does not impair customer confidence. Mis-selling of insurance products, changing of quick profitability, chasing quick profitability. Thank you, Honourable Member. Thank you. These are all these affects customer trust. Okay. Companies should be guided by rules to trust customers. Regulators should ensure curbing of insurance fraud. माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह जी, दर्शन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं आपकी अनुमति से सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 पर अपना मत रखना चाहता हूं। आज यह सदन केवल विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहा, आज यह सदन भारत के हर नागरिक की सुरक्षा, गरिमा और भविष्य पर निर्णय ले रहा है, और इसलिए भारत की सामाजिक और आर्थिक यात्रा में यह एक निर्णायक मोड़ है। वेदवाणी है, योग क्षम्यम बहम्यम, आपकी सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी हमारी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारत का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बीमारी से डरता है, दुर्घटना से टूट जाता है, मृत्यु के बाद परिवार को असहाय छोड़ जाता है, और सिर्फ इसलिए उसके पास बीमा नहीं है। यह विधेयक उसी असमानता को समाप्त करने का संकल्प है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि यह सबका बीमा केवल नारा नहीं, नीति है। शहरों तक सीमित रहा अब तक का जो बीमा था, कागजों में उलझा रहा, आम आदमी से दूर रहा, और लेकिन हमारी सरकार मानती है कि बीमा कोई लग्जरी नहीं, बीमा हर नागरिक का अधिकार है। इसलिए हमने कहा सबका बीमा सबकी रक्षा। इसे अध्यक्ष महोदय, आज लगभग 60 से 65% आबादी पूरी तरह से अनइंश्योर्ड है और गंभीर रूप से
अंडर इंश्योर्ड भी है। ग्रामीण भारत, असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, ये सब बीमा व्यवस्था से लगभग बाहर हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी आज भी लाखों परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे ढकेल देती है। 1938 और 1956 के कानून आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित और जोखिम बहुल समाज के लिए अपर्याप्त हो चुके हैं। इसलिए यह विधेयक आवश्यक और समयोजित करना जरूरी है। इस विधेयक की सबसे बड़ी शक्ति है इसका दृष्टिकोण। केवल टैक्स सेविंग प्रोडक्ट नहीं मानता, केवल शहरी मिडिल क्लास का साधन नहीं मानता, बल्कि बीमा सामाजिक सुरक्षा का आधार है। और इसलिए 1938, 1956 LIC का नियम, IRDAI का अधिनियम 1999, ये तीनों में एक साथ संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि भारत को टुकड़ों में सुधार नहीं, सिस्टम लेवल पर रिफॉर्म चाहिए था। और इसलिए इस विधेयक के उद्देश्य इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के साथ साथ IDR को अधिक सक्षम नियमित बनाना और नए रिस्क और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को विकसित करना, नए प्रोडक्ट तेजी से उभर रहे हैं उनको सुरक्षा देना और पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन पर जोर देना। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, एक बात आती है सड़क दुर्घटनाओं की और लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरा क्षेत्र भी कहीं कहीं इस प्रकार से है, तो वहां पर यदि इन दुर्घटनाओं के मायने रखते हुए 4 लाइन की एक सड़क हमारी बना दी जाए, तो जिससे हमारा चाहे हरदा से लेकर टिमरनी, हमारे नामदापुरम और जिसमें 2 जोले होशंगाबाद और आगे जबलपुर तक भी जाना चाहिए, जिससे हमारी जरूरतें और इस प्रकार की घटनाओं से बच के और उस आपदा से राहत मिल सके। यह विधेयक भारत को संकट रोधी बनाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय की प्रतिपूर्ति करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, किसी एक चुनाव के लिए नहीं, बल्कि यह पूरे भारतवर्ष के लिए है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से आज जो 25 कंपनियां, जीवन बीमा कंपनियां और गैर जीवन बीमा कंपनियां जो 2025-15 में 26% से 49% तक आई, 2021 में 49 से 74% तक। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि 100% FDI में लाने का काम इसको किया है। और मैं निवेदन ये भी करता हूं कि भारत में 82% दिव्यांगों के पास। अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जो अटल जी ने कहा था मैं उन बात के साथ। अध्यक्ष जी, अटल जी की धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मुझे सबका बीमा, एक लाइन में खत्म कीजिए। एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रण लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारों में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो और राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रिकता आए जिस हो गया। श्री बड़वे जी, ऑनरेबल मेंबर बड़वे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पर मुझे बोलने के लिए जो आपने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई थी। उस समय देश के 245 निजी जीवन बीमा कंपनियों का विलय कर LIC बनाई गई, ताकि बीमा को मुनाफे का नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का माध्यम बनाया जा सके। किंतु आज की जो परिस्थिति है और आज जो बिल लाया गया है और जो 100% बीमा में FDI लाने का जो नियोजन किया गया है, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब 2011 में मनमोहन सिंह सरकार थी, UPI की गवर्नमेंट थी, उस समय UPA सरकार द्वारा 51% FDI लाने का प्रस्ताव रखा गया। तब भाजपा ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया कि FDI से हमारा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, रोजगार छिन जाएगा, सारे देश में आफत आ जाएंगी। लेकिन आज FDI हर जगह 100% करने का काम NDA सरकार कर रही है। तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं बदलने वाला है, काम करना पड़ेगा।
और जो बिल लाया गया है उसमें कहीं पे भी ऐसा बताया नहीं कि गरीब जनता के लिए, देशवासियों के लिए क्या फायदा होने वाला है, बीमा में क्या सुधारना होने वाली है। क्या आपने देखा है कि किस तरीके से जब किसान बीमा योजना आज देश में चल रही है, तो किसान बीमा योजना में कितने किसानों को जब नुकसान होता है तो बीमा मिलता है, उस पर कोई प्रावधान नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, जब बीमा कंपनी के प्रावधान ऐसे रहते हैं कि जब क्लेम करने के लिए जाते हैं तो 5 रुपए और 100 रुपए उनको क्लेम मिला जाता है किसानों को, तो उस पर कोई उपाय योजना नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से, और सिर्फ बीमा में एफडीआई लाने का काम करने का काम ये सरकार कर रही है। अभी तक देश पूंजीपतियों जनता की लूट कर रहे थे, अब इस सरकार ने विदेशी पूंजीपतियों को भी खुली छूट दे दी है। एलआईसी जैसी सार्वजनिक संस्था का पैसा अडानी समूह की कंपनी में लगभग 3.9 अरब डॉलर के निवेश के रूप में लगाया गया है, जो यह सवाल खड़ा करता है कि क्या गरीब मध्यम वर्ग की बचत कुछ चुनिंदा कारपोरेट घराने के लिए जोखिम में डाला जा रहा है। दूसरी ओर रिपोर्टों के अनुसार भारत में लगभग 70% लोग स्वास्थ्य बीमा से बाहर है। उनको किस तरीके से इस योजना के अंदर लाया जाएगा और उनके स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाएगा ताकि सारे गरीब इसमें सम्मिलित हो सके। ऐसी स्थिति में सबका बीमा सबकी सुरक्षा की हकीकत की किसान फसल बीमा योजना जैसी होने की आशंका है, जहां बीमा कंपनियां प्रीमियम तो वसूलती है लेकिन जरूरत पड़ने पर जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, पूरे देश ने देखा है कि इलाज के अभाव में लोग मरते रहे, लेकिन बीमा कंपनियां उस समय कहीं पे भी लोगों के साथ खड़ी दिखी नहीं। उस पर आपने अगर अभी इसके बाद भी अगर ऐसा होता है, सिर्फ 1 मिनट सर, इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो बीमा कंपनियां किस तरीके से लोगों के साथ खड़ा रहने का काम करेंगी। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का यह कहकर लागू की कि हर परिवार को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, लेकिन इस योजना में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में आयुष्मान भारत योजना के तक लगभग 9.54 लाख रुपया घोटाला आया है। प्लीज कंक्लूड प्लीज। यस सर, मैं आपसे आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जिस तरीके से एफडीआई 100% कर रहे हैं, यूपीए ने तो हमारे गवर्नमेंट ने इंडिया अलायंस है तो उसका विरोध कर ही रही है, लेकिन जिस तरीके से एफडीआई का इन्होंने विरोध किया था और आज यही उस एफडीआई के फायदे दिखा रहे हैं, तो किस तरीके से वांट टू स्पीक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, यू वांट टू स्पीक? You're calling me for the reply? No. So you have to announce some. Just to let the honorable members know that dinner has been arranged for members in the MP dining first floor of the Parliament House. Members may kindly avail the dinner after 8 p.m. As per your convenience. Thank you, ma'am. Thank you, madam. सभी से एक अनुरोध है माननीय सदस्यगण, आप सब अपना तो बीमा कराए होंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का भी बीमा कराइए। जितना जनता है, जितना ने वोट दिया है, उसमें भी इसको एक बार अवेयरनेस और पेनिट्रेशन हो थोड़ा कराने का कृपा करें। अभी कुछ हमारे माननीय सदस्य बोलेंगे, 2 मिनट में, शार्प 2 मिनट में आपको समाप्त करना है। 2 मिनट, ओके। श्री हनुमान बेनीवाल जी 2 मिनट प्लीज। 2 मिनट में हम तीसरा नाम बुलाएंगे। सर जिद मत करो, ठीक है, 2 मिनट थोड़े प्लीज स्टार्ट। ठीक, हनुमान बेनीवाल जी। सभापति जी, सबका बीमा सबकी रक्षा जो विधेयक लेके आ रहे हैं उसमें आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति जी, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम बीमा विस्तार सामाजिक सुरक्षा और नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा के विरोध में नहीं है, और वास्तव में बीमा का दायरा बढ़ना आज के समय की आवश्यकता है। लेकिन देश की जनता का प्रश्न ये कि विधेयक किसके हित में, आम नागरिकों के, बड़ी बीमा कंपनियों के, इसका जवाब मंत्री जी जब वापस जवाब के अंदर ये क्लियर करें। सरकार इस विधेयक को सबका बीमा कह रही, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये कि आज भी देश की बड़ी आबादी, खासकर किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे दुकानदार, ग्रामीण महिलाएं या तो बीमा से बाहर हैं या फिर ऐसे बीमा में फंसी है जिनका दावा मिलना लगभग असंभव है। सौज महोदय, कुल जो एफडीआई है उसमें पूंजी का मात्र लगभग 32% है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा एफडीआई सीमा को 100% तक बढ़ाना और विदेशी पूंजी को भारत में पूर्ण स्वतंत्र देना पूरी तरह से तर्कहीन है। इस निर्णय के न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर बल्कि भारतीय बीमा कंपनियों पर गंभीर दुष्परिणाम होंगे। समझ महोदय, बीमा नहीं दावा। बीमा पॉलिसी देना आसान, लेकिन जब दुर्घटना होती है, बीमारी आती है या फसल नष्ट होती है, तब कंपनियां शर्तों का जाल बिछा देती है।
इस विधेयक में ये स्पष्ट उल्लेखित नहीं, इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि आप जब जवाब दो तो बताएं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद दावों के निपटारे की समय सीमा क्या होगी, गलत तरीके से दावे खारिज करने कंपनियों पर क्या सजा होगी। सौद महोदय, अगर सबकी रक्षा सच में सरकार का उद्देश्य है तो सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट को अधिकार बनाना होगा, ये मंत्री जी बताएं। निजीकरण और विदेशी पूंजी पर चिंता। सौद महोदय, ये विधेयक बीमा क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को धन्यवाद जी। एक मिनट समाप्त करना है साहब, एक सेंटेंस बोलिए, एक सेंटेंस। आसान बना। सवाल ये कि क्या इससे प्रीमियम सस्ता होगा या फिर मुनाफे के लिए गरीबों को बाहर कर दिया जाएगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बीमा कोई साधारण व्यापार नहीं है, सार्वजनिक भरोसे का क्षेत्र है। अगर केवल मुनाफा ही लक्ष्य है तो सबका बीमा एक नारा बनकर रह जाएगा। धन्यवाद। श्री विशाल पाटिल जी। विशाल पाटिल जी। इस अवसर के धन्यवाद सभापति महोदय। अर्थ मंत्री जी का इंट्रोडक्शन के भाषण में उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए। शी स्पोक अबाउट पेनिट्रेशन ग्रोइंग फ्रॉम 3.3 to 3.7%. With a low base, I think that's dismal, and clearly we could have done more. She also spoke about companies having grown substantially. Yes, companies need to grow further if you want to bring in penetration. The world penetration is about 7%. She spoke about $55, and the world is about at $889. Has the IRDA been responsible for reducing the increase in companies? And here in the bill you've gone and given extra powers to the IRDA. महोदय, इंश्योरेंस सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, दिस सोसाइटी इज अ सोशल सेफ्टी मैकेनिज्म। जब बीमा ली जाती है तब कोई मुनाफा नहीं सोचता, परिवार अपनी सुरक्षा सोचता है। बीमारी में, हादसे में पीड़ित परिवार के साथ ये खड़े रहते हैं। सो टेस्ट ऑफ एन इंश्योरेंस रिफॉर्म इज सिंपल। क्या ये आम आदमी के लिए सुरक्षा बढ़ाता है या इन्वेस्टर्स के लिए? तो सैडली ये इन्वेस्टर्स के लिए बढ़ाता है, ये दुख की बात है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन स्टेज लो, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन आउटसाइड द सेफ्टी नेट, इनफॉर्मल वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, रूरल हाउसहोल्ड्स, माइग्रेंट लेबरर्स, गिग वर्कर्स, विमेन, एल्डरली डिपेंडेंट्स। ये अच्छा समय था कि सरकार उनके कुछ सुनता, पर अफसोस उन्होंने नहीं किया। सो द मोस्ट सीरियस चेंज इज बिल इज 100% एफडीआई इंश्योरेंस। जब एफडीआई 74% किया गया था तो सदन को आश्वासित किया गया था कि इंडिया का कंट्रोल रहेगा। दिस वाज अबाउट कैपिटल, नॉट प्राइवेटाइजेशन। बीमा धारकों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे, पर ये ना हुआ। टुडे द गवर्नमेंट हैज मूव्ड डायरेक्टली टू 100% ओनरशिप। आई एम कंक्लूडिंग, आई एम नॉट सेइंग टू मच। माय सिंपल क्वेश्चंस आर, क्या इंश्योरेंस ज्यादा किफायतमंद हुआ है? ना। Has rural and informal coverage increased? No. क्या composite license की कोई बात की गई है? ना. So the biggest failure of the insurance sector today is claim settlement. Does the bill have any provisions to improve bill settlements? Sir, PM फसल बीमा के भी 14 महीने लगते हैं settlement आने के लिए, ये IIM की एक स्टडी कहती है। So the bill needs to change that somehow. There's so much to say, but I'll positive time I'll short. Thank you so much. Thank you. Shri Abdul Rashid जी। सर, बाहर की कंपनियां अगर आए तो अच्छी बात है क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन सरकार से यही हम पूछना चाहेंगे, आप एक तरफ वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो क्या ये उस नीति के खिलाफ नहीं होगा? दूसरा, क्या गारंटी है कि जो पैसा बाहर की कंपनियां लेंगी, कहीं कल अभी तो आप विजय माल्या, मेहुल चोकसी, निर्मला मोदी को वापस नहीं ला पाए हैं, कल ये लोग पैसा लेके ना भागें तो आम आदमी का क्या होगा? मेरी ये गुजारिश है कि जो स्किल्ड लेबर्स हैं, जैसे ड्राइवर्स हैं, मैसन्स हैं, कारपेंटर्स हैं, कम से कम एक मैंडेटरी बनाया जाए उनका इंश्योरेंस, चाहे वो किसी कंपनी में काम करें या प्राइवेट सेक्टर में काम करें, उनका इंश्योरेंस मैंडेटरी होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है सर कि जो बॉर्डर इलाकों में हमारे पोर्टर्स हैं उनका हर हाल में इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर फौज ही कर ले तो बेहतर होगा। जहाँ तक मुझे पता है 2019 तक मेरे जेल आने से पहले उनका इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था, या जो हमारे पोनीज वहाँ पर हैं तो उस पर भी तवज्जो दी जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आम आदमी को पता ही नहीं कि जब उसका कुछ हो जाता है तो क्लेम कैसे मिलती है, फिर लोग थक जाते हैं और फिर घर बैठते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं। तो उसके लिए हर चीज़ को टाइम बाउंड करने की ज़रूरत है। हम उम्मीदें रखेंगे कि मैडम बैठी हैं, टाइम बाउंड डिस्पोजल क्लेम्स का होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों में अवेयरनेस की जाएगी। लास्ट पॉइंट जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में सब अवेयरनेस करें, मैं कैसे करूं आप ही बताएं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद। श्री राजकुमार रोज जी। सभापति महोदय, आपने सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सरकार सबका बीमा सबकी रक्षा कह रही है, लेकिन देश की सच्चाई ये है कि भारत की कुल बीमा ट्रांसफर फीस आज भी केवल 3.7% है, जबकि वैश्विक औसत 7% है। यानी भारत दुनिया से आधा पीछे है। इससे भी गंभीर बात यह है कि 2022 में यह दर 4.2 थी और 2024 में गिर चुकी है। यह नीति यह स्पष्ट बताती है कि हमारी कहीं न कहीं कमजोरी है। सरकार की बीमा नीति गरीब और कमजोर वर्ग तक पहुंच नहीं पाती है। गरीब और आदिवासी भारत बीमा स्वास्थ्य से बाहर है। शहरों में जहां 73% लोगों के पास जीवन बीमा है,
वहीं ग्रामीण और आदिवासी इलाके में यह आंकड़ा मात्र 20 से 22% रह गया है। जमीनी सच्चाई ये है, केवल 10% ग्रामीण गरीबों के पास जीवन बीमा है और आदिवासियों में तो यह और भी दयनीय स्थिति है। आदिवासी क्षेत्र में यह आय नियत नहीं होती है, बैंक और बीमा कार्यालय दूर होते हैं, एजेंट वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके लिए सरकार विशेष अभियान चलाए। स्वास्थ्य बीमा गरीब और आदिवासी सबसे असुरक्षित है। देश में आज भी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। और सरकार की जो आयुष्मान योजना चलाई, हमारा जो क्षेत्र है वो गुजरात के नजदीक है, तो राजस्थान का व्यक्ति जब गुजरात में जाता है तो आयुष्मान कार्ड अलाउ, पिछले एक साल तक इसको अलाउ नहीं किया हमने, और सरकार अब जगी और अब राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ प्रावधान किया, बजट दिया तो अब चला है। तो मैं विशेषकर चाहूंगा कि राजस्थान का व्यक्ति जो गुजरात में जा रहा है तो आयुष्मान कार्ड में इसको लाभ मिलना चाहिए। पिछले एक साल से मैम नहीं मिल पाया था, अभी सरकार जगी और कुछ कर रही है। सरकार बीमा योजना गरीब को सुरक्षा नहीं पहुंचाती है। पता नहीं सर, उदयपुर वालों को पता नहीं कौन सा पंप लगा रखा है, जब कहो तब खड़े हो जाते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखा जाए। सर बिल यही है कि फसल बीमा योजना में लाखों दावे खारिज हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए से भुगतान आज भी लंबित है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हर साल लगभग 16% पॉलिसी लैप्स हो रही है, क्योंकि गरीब के खाते में 330% जो प्रीमियम होता है, कई लोगों के पास वो खाते में नहीं रह पाता, इसलिए वो लैप्स हो जाता है। 100% उमेश पटेल सर, लास्ट 30 सेकंड में मेरी बात रखना चाहूंगा सर। लास्ट हो गया, 2 मिनट शार्प बोला था सर। इनपुट अबे बेल भी न जाऊंगा, नाम बोलूंगा, खाली बेल भी नहीं बजाऊंगा। अब स्टार्ट कीजिए, आप शुरू कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले मैं सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पर सरकार की सराहना करता हूं। ये विधेयक बीमा क्षेत्र को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने का साहसिक कदम है। एफडीआई को 100% तक बढ़ाना, विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकता कम करना, IRDAI को मजबूत अधिकार देना और LIC को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना जैसे प्रावधान सराहनीय है, और इससे 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य साकार होगा, नवाचार बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में कुछ कमियां हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। पहली कमी यह है कि इसमें कंपोजिट लाइसेंस का प्रावधान नहीं है, यानी कि एक ही कंपनी को जीवन और गैर जीवन बीमा दोनों संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे घरेलू कंपनियों को विविधीकरण का अवसर नहीं मिलेगा और बाजार में नए प्रवेशकों की संख्या सीमित रहेगी। दूसरी, नई बीमा कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकता को कम करने कोई प्रावधान नहीं है, जो छोटे और मध्यम उद्योगों को, स्टार्टअप को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक सकता है, जिससे वित्तीय समावेश प्रभावित होगा। तीसरी, पूर्ण विदेशी नियंत्रण की अनुमति से एक संवेदनशील क्षेत्रों को मुनाफा विदेश भेजे जाने का खतरा है, जो राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि नियमन कमजोर रहा तो। चौथी, विधेयक में उपभोक्ता संरक्षण और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि डिजिटल बीमा के युग में यह महत्वपूर्ण है कि कमियां विधेयक को और अधिक समावेशी और संतुलन बना सकती है। मोदी जी, मेरी सलाह यह है कि सरकार को इन कमियों को दूर करने के लिए संशोधन पर विचार करे। सबसे पहला, कंपोजिट लाइसेंस को शामिल किया जाए ताकि कंपनियों को अधिक कुशलता से काम कर सके और लागत कम हो। नए प्रवेशों के लिए पूंजी आवश्यकता को कम किया जाए, खासकर उन कंपनियों के लिए जो ग्रामीण और विशेष जोखिम वाले क्षेत्रों पर फोकस करे। विदेश निवेश पर सख्त शर्त लगाए जाए, जैसे कि न्यूनतम निवेश अवधि, स्थानीय रोजगार सूचना। राजेश रंजन जी, नो राजेश रंजन सर, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि LIC का लगभग 60 लाख करोड़ रुपया पूरी तरह दिवालिया हो गई। स्थिति यह है कि LIC के पास अपना कोई धन नहीं बचा, वो सीधा का सीधा ट्रांसफर किसी बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के बीच हो गया। LIC जो आम आदमी के लिए, आम आदमी के जीवन से जुड़ा था और लगभग मिडिल क्लास लोगों का, इसमें हाईकोर्ट का आदेश है सर, आप बैठ जाइए प्लीज। गुजरात हाईकोर्ट का आदेश है कि किस तरीके से प्रधान LIC पॉलिसी लगभग 83 अरब 64 लाख 31,217 प्रीपेड 7 करोड़ 42 लाख, इस तरह के आदेश हैं कि किस तरीके से आम आदमी के जीवन पर स्पष्ट लिखा गया है कि बीमा नियामक IRDAI भारतीय जीवन बीमा LIC 19 बीमा कंपनियों पर जनहित याचिका दायर की गई और उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया। लेकिन जिस तरीके से नए बीमा योजना को आप लाए हैं, उसमें मेरा सिर्फ कहना यह है
कि आप कहते हैं एक तरफ सबका बीमा नाम के बावजूद बिल कंपोजाइट लाइसेंस जैसे सुधार शामिल नहीं है, जिनसे एक कंपनी एक ही पहचान से लाइफ, हेल्थ और समान बीमा सब दे सके। इसका मतलब यह है कि यह बिल नाम तो बड़ा रखा है सबका बीमा, लेकिन सरल, सस्ते और सर्वसमावेशी उत्पादन के लिए आवश्यक ढांचा नहीं दे रहा है। यह बिल्कुल विरोधी तर्क और वास्तविक उत्पाद विविधता से बहुत केंद्रित होगा। बीमा कंपनी जब विदेशी पूंजी के अधीन होगी तो अपने निवेश को अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों से जोड़ देगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार बोलती जो आप सीधा असर भारतीय बीमा फंड्स और ग्राहकों की पॉलिसी वैल्यू पर पड़ेगा। अनिश्चित वित्तीय जो विदेश में जो अमेरिका जो कह रही है यहाँ के बारे में, उसमें निगरानी अभी पर्याप्त मौजूद नहीं है। श्री चंद्रशेखर जी, मैं प्लीज अब बैठिए, ओके, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। धन्यवाद सभापति जी। माइक बंद हो गया भाई, प्लीज बी सीटेड। माइक बंद हो गया, आपका समय। सभापति जी, पहले विपक्ष बोलता था, सरकार सुनती थी, अब सरकार बोलती है, मंत्री जी बोलते हैं, विपक्ष बैठ के सुनता है। बदल गया है हाउस। सभापति जी, मंत्री जी यहाँ बैठी है, उनका तो दिल बहुत बड़ा है, वो 10 मिनट और देर से बोल लेंगे। हाउस आप चला सकते हैं, आप पे पावर है, आप इसको देर तक चला लो थोड़ा सा। सभापति जी, मैं सवाल नहीं करूंगा, सुझाव दूंगा, क्योंकि सवाल तो सब लोगों ने पक्ष में 2 मिनट आपका समय है, इसी समय में आप विषय रखिए। इसे आप मत काटो। अगर नाम ही बदलना है तो मेरा, हालांकि नाम से हालात नहीं बदलते, तो नाम बदलना है तो सदगुरु रविदास जी के नाम पे कर दो, गुरु कबीर जी के नाम पे कर दो, अखंड ज्योति समनदास जी के नाम पे कर दो, मान्यवर काशीराम जी के नाम पे कर दो, मंत्री जी बैठे हैं चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे कर दो, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नाम पे कर दो, माता दीन वाल्मीकि जी के नाम पे कर दो। रोजगार गारंटी बिना मौसमी शर्तों के लागू होनी चाहिए। रोजगार दिनों की सीमा राज्यों को बढ़ाने का अधिकार न्यूनतम 300 दिन केंद्र तय करे, लेकिन राज्य चाहे तो इसे 365 दिन बढ़ा सकते हैं। और सर, आपने हालात ऐसे बना दिए, विषय क्या कर सकते हैं आप ये बताइए? हालात ऐसे बना दिए सर। दूसरा नाम बुला लीजिए। श्री सुदामा प्रसाद जी। सर, श्री सुदामा प्रसाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबका बीमा, प्लीज भी सबकी रक्षा, बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 की धारा 3AA में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति देती है, जिससे कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि विदेशी कंपनियां लाभ खूब कमाती हैं, जबकि मुफ्त या रियायती बीमा के लिए आमतौर पर मजबूत सार्वजनिक नियंत्रण की जरूरत होती है, जिसमें यह विधेयक विफल रहता है। सामाजिक सुरक्षा राज्य का एक संवैधानिक दायित्व होता है, लेकिन विधेयक में इस बात के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार मुफ्त बीमा को वित्त पोषित या सुरक्षा प्रदान करेगी। LIC अधिनियम 1956 में किए गए संशोधन LIC की उस अद्वितीय वैधानिक स्थिति को यह विधेयक कमजोर करता है, जो इसे सामाजिक और ग्रामीण बीमा को क्रॉस सब्सिडी देने की अनुमति देती है। निजी खिलाड़ियों को अनुमति देने से सामूहिक मुफ्त या कम लागत वाले बीमा देने में सक्षम एकमात्र संस्था कमजोर होती है। विधेयक व्यापक निवेश की अनुमति देता है। विधेयक का शीर्षक सबका बीमा सबकी सुरक्षा का उल्लेख करता है, लेकिन यह मुफ्त कवरेज और सार्वभौमिक योजनाओं को रक्षा करने में विफल रहता है, और यह केवल एक निजी पूंजीवादी लाभ कमाने वाली कंपनी बनकर रह जाता है। विधेयक में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए यह आवश्यक है कि आम जनता की सेवा की जाए। इसमें गरीबों के लिए प्रीमियम बेंचमार्क, समाज के वंचित वर्गों तबकों के लिए मुफ्त कवरेज दायित्व और कंपनियों के लिए न्यूनतम सामाजिक बीमा लक्ष्यों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। धन्यवाद महोदय। Thank you very much, Speaker Sahab. The name of this bill promises protection for all,
but in reality it is a blueprint for surrendering India's insurance sector to foreign corporate interests. The bill exposes deep hypocrisy of the government's Atmanirbhar Bharat slogan. On the other hand, the government lectures the nation on self-reliance, and it allows 100% foreign ownership in a sector that safeguards the life savings of crores of Indians. If this is Atmanirbhar Bharat, why does the government believe foreign capital must fully own and control Indian insurance companies? Why is Indian capital suddenly inadequate? Why is Indian management not trusted to protect Indian policy holders? Insurance is not a mobile phone or a luxury product. It is a pillar of economic sovereignty. Yet this government is saying take 100% of Indian savings abroad. We have no objection, sir. This is not self-reliance. This is self-surrender, sir. Let us consider LIC's unmatched contribution. For 68 years, LIC's tied agency model has demonstrated unparalleled effectiveness and reliability, helping LIC maintain its position as a market leader. Even before liberation in 2000, LIC agents worked tirelessly to deliver exceptional results, contributing to India's financial growth and infrastructure development. LIC philosophy is people's money for people's welfare, has earned in it a reputation as the pride of India. Any amendments that compromise this legacy must be reconsidered with utmost caution. Sir, mis-selling through banks is a serious concern. When borrowers are concerned to buy insurance to obtain loans, it raises costs, affects vulnerable individuals, leads to policy lapses, and result in loan defaults, worsening NPAs. Even the finance minister and IRDAI chairman have raised concern about this unethical practice. LIC, in contrast, relies solely on trained agents who ensure transparency, fairness, and ethical sales. Sir, the proposed amendment section 42 within bracket 2, allowing agents work for multiple insurers, poses grave threat. Unemployment generation. LIC recruits nearly 50% of insurance agents. Opening agents to multiple insurers will discourage companies from investing in recruitment and training, reducing employment opportunities and risking degrowth in the agent workforce. Unethical practices. Companies may compete by offering higher innovations, eroding agent loyalty and shifting focus from policy holder welfare to self-interest. Diminished expertise. LIC agents currently manage 25 plus products. Open architecture will require knowledge of hundreds of products, resulting the superficial advice and suboptimal customer service. Weakened competition. Exclusively fosters healthy competition, allowing agents to move freely across companies will dilute innovation and lead to stagnation in the sector. So, compromise for post-sale service. Insurance is not just a selling policies. It is about to continue support. Agents shifting between companies cannot provide consistent after-sales service, harming policyholders. Development officers are the backbone of LIC. They recruit, train, and mentor agents. Their performance is tied to the business generated by their agents, with accountability, including plausible termination in case of significant decline in business. Allowing agents to work for competent insurers will jeopardize their livelihood. Just one second. Sir, honorable members, the bill threatens the livelihood of agents and development officers, LIC's legacy and operational model, ethical standards in insurance, and financial stability and inclusion of millions of policy holders.
insurance should protect citizen and strengthen national resilience. And this bill does not does the opposite. Therefore, I categorically reject the bill and demand that it be withdrawn or referred to a standing committee for thorough scrutiny. For these reasons, I strongly and unequivocally oppose the Sabka Bima Sabki Raksha Amendment Insurance Bill. Thank you very much, sir. Thank you. श्रीमती मंजू शर्मा जी। सभापति जी, आज मैं 2025 का विधेयक सबका बीमा सबकी रक्षा, सस्ती पॉलिसी ज़्यादा कवरेज, इसके नाम से विदित होता है कि ये किस भावना से इसका नाम सबकी रक्षा, जो देश के हर वासी की रक्षा के लिए ये विधेयक लाया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने भारत देश की जनता के हर एक व्यक्ति के बारे में, गरीब महिला सबके बारे में सोचा और इस बीमा विधेयक को लाया। जैसा कि इसके नाम से वर्णित है, ये विधेयक बीमा क्षेत्र के आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है। वर्तमान में अधिक पूंजी आवश्यकता, विदेशी निवेश की जटिल नियमों के कारण क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा था। ये बिल इन चुनौतियों को दूर करके निवेश को बढ़ाएगा। इस विधेयक के माध्यम से हर नागरिक तक बीमा सुरक्षा पहुंचाना, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, समग्र लाइसेंस की व्यवस्था लागू करना और स्वास्थ्य बीमा को एक अलग वर्ग बनाना, बीमा एजेंटों का दायरा बढ़ाना, उपभोक्ता डिजिटलीकरण कर और डेटा गोपनीयता को मजबूत करना, बीमाकर्ताओं को जीवन और साधारण बीमा दोनों के लिए एक समग्र लाइसेंस की अनुमति देना, नई कंपनियों को न्यूनतम पूंजी घटाकर अपने छोटी उनको पूंजी कम करके उनको निवेश की बात करना, और कुछ गड़बड़ियां अगर होती हैं तो उसके लिए कठोर सजा की भी इसमें प्रावधान है। ये क्षेत्र का आत्मनिर्भर बनाने और कोविड जैसी महामारी और संकट के समय देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। सबके बीमा सबकी रक्षा विधेयक केवल एक कानून नहीं, संशोधन ही नहीं, बल्कि बीमा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रयास हैं। ये विधेयक केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। बीमा किसी भी अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है, परंतु दुर्भाग्यवश भारत में आज भी बीमा कवरेज वैश्विक औसत की तुलना में कम है। ऐसे में विधेयक सबका बीमा सबकी रक्षा के लक्ष्य को साकार करने का सशक्त माध्यम है। भारत की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहां इन स्थायी आय और न्यायी सामाजिक सुरक्षा। यह विधेयक किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और निम्न आय वर्ग तक बीमा की पहुंच बढ़ाकर वित्तीय समावेशन की वास्तविक अर्थ देता है। जब हर नागरिक बीमित होगा तभी आर्थिक विकास समावेशी टिकाऊ होगा। भारत प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संकटों और आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील देश है। बीमा व्यवस्था न केवल क्षतिपूर्ति का साधन है, बल्कि आर्थिक लचीलेपन को प्रदान करती है। इस विधेयक से सरकार पर आपदा पर वित्तीय बोझ कम होगा, परिवारों की बचत सुरक्षित रहेगी, गरीबी के दुष्चक्र को ऐसे रोका जा सकेगा। ये विधेयक कल्याण से जोखिम साझेदारी की ओर महत्वपूर्ण कदम है। 2 मिनट से बीमा क्षेत्र पूंजी प्रदान होता है। यह विधेयक निवेश को प्रोत्साहित करता है, बीमा कंपनियों की वित्तीय मजबूती बढ़ाएगा, आधुनिक तकनीक और वैश्विक सर्वत्र प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा, दाम निपटाने तेज और पारदर्शी बनाएगा। इससे बीमा धारकों को विश्वास सुदृढ़ होगा। बीमा क्षेत्र के विस्तार से रोज रखने की विशेष इतना सा बस मैं कहना चाहूंगी साहब कि जो लोग कब्र खोदने की सोच रखते हैं वो रक्षा की बात नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इस विधेयक को प्लीज Thank you very much, sir. प्लीज भी सीते हो गया। आप बैठिए प्लीज। आई एम अलाउइंग ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, प्लीज आप बैठिए प्लीज। बोला है, बैठिए प्लीज। आप शांति से माननीय वित्त मंत्री का जवाब सुनिएगा, ठीक है? Sir, thank you very much, sir.
the government is introducing Sabka Bima Sabki Raksha Amendment of Insurance Laws Bill 2025 for amending 3 acts related to insurance sector, namely Insurance Act 1938, Life Insurance Corporation Act 1956, and Insurance Regulation and Development Authority Act 1999. About 34 honorable members have spoken on this bill, and I thank each one of them. Many of them have gone into details of the bill and spoken about what this bill means to them. I will address their concerns, sir. What I would start off with is, sir, Insurance Act in this country, sir, since it was introduced in 1938, have seen 12 times amendments. From 39, just the next year after it was introduced, since then you have seen 12 times, and I'm saying 2015, there was no amendment even in 2014. So the amendments have had various character, and they are very reflective of the progress that the country is making, and to reflect the requirements, insurance requirement, the act has been since amended. What I would like to highlight from among those various amendments, sir, in 1950 itself, 1950, 50 में एजेंट्स के ऊपर जितने भी हमारे माननीय सदस्यगण बात किए, the first ever change in agents commission was made even in 1950. I'm just trying to say that according to the requirement of the society, important acts such as the insurance get amended and reflect the requirement of the period. What was the 1950 amendment, sir? I'm purposely highlighting. So what if it happened in 50, that many number of years ago? But I'm saying every government has to respond. In 1950, it will be surprising for us to know agents commission were reduced. हमें लगता है कि हर बार वो इधर मोदी जी का गवर्नमेंट आ गए हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग विदाउट इंफॉर्मेशन बोल देते हैं कि बड़े कॉरपोरेशंस के लिए 50 में एजेंट्स का कमीशन करने वाले मोदी जी की सरकार नहीं जी। समय के अनुसार कुछ अमेंडमेंट्स होते आते हैं। सेकंड सर, इन 1999 allowing the entry of private players in the insurance sector and FDI limit set at 26% happened in 1999. So the actual progress in every such act which has a bearing on our citizens and their lives do get amended. If this is the Insurance Act, sir, LIC Act had 8 amendments since 1957, and there were very many important features which were brought into it. One particular thing which I like to highlight, 1981, explicit power to the central government to make rules regarding service conditions of all classes of LIC employees and agents. Power was given to the central government, and I'm sure there were some members, I would like to go to the records of the House to say, Naine, how can central government take away all the powers? हुआ LIC Act में, sir. So I just want to highlight that amendments do happen, and they happen with the larger interests in our mind. But what happened since 2014? I briefly mentioned in the morning, insurance ombudsman rules were framed in 2017 because the government strongly felt a robust grievance redressal mechanism should be in place for the insurance sector so that people who take policies will have a place to go and comply. IRDAI also was established as a regulator earlier,
and extensive framework for protection of policyholders was also made, and that mandated insurers to provide crucial information to policyholders at the time of policy issuance itself, and setting stricter timelines for claim settlement. This also happened after 2014, after Prime Minister Modi coming to Delhi. Several flagship insurance schemes have also been launched since 2014. I appreciate the genuine concern which many honorable members had. Common people should have insurance coverage. Will these companies which come bring that kind of a facility? First of all, once competition comes into the market, rate automatically comes down. People see which one is better, which is good for me, which one brings lower rate. Monopoly doesn't give us that advantage, and therefore more the competition, better the rates. And with that said, sir, even then, government has, in anticipation of covering and bringing all Indian citizens into insurance coverage, introduced PM Jeevan Jyoti Yojana, Bima Yojana that is, PM Suraksha Bima Yojana, Jan Arogya Yojana, Krishi Bima Yojana. So, literally for bringing everybody into the insurance world, insurance coverage world. Schemes have been launched to a large extent backed by the government's funding, and also making sure the larger the insurance pool, the lesser will be the premium. That's been the guiding principle. So together these schemes have also provided the safety net to protect common citizens and farmers from any risk to their lives, health or livelihood. Another priority which our government has given, sir, is to strengthen the public sector insurance companies. Again, a point on which several members spoke, what will happen to our public sector insurance companies. I'd like to say, today listing of LIC, GIC reinsurance and New India Assurance has actually it's a step in the right direction. I heard Honorable Member N.K. Premchandran talk with great concern about what will happen to public sector companies. Here's the fact behind it. Since 2014, we are doing a lot of things to improve the ecosystem for insurance. Capital, very important point, sir. Capital to the tune of 17,450 crores have been infused into 3 public sector general insurance companies to strengthen their capital base. That was done by our government. As a result of these and other such measures, sir, LIC, GIC Reinsurance and Agricultural Insurance Company, which is AICIL, reported their highest ever profits last year. That's the kind of focused attention we are giving and infusing capital where they need so that they can compete better in the market. And they've also, and other companies, related such companies have also started turning profitable. But to attract global capital and technical know-how, the FDI limit had to be changed. FDI limit for insurance companies was increased from 26%, that 26% which I told you about earlier, which was brought in 1999 itself. So 26% 99 was increased to 49% in 2015. And from 49% to 74% in 2021. So foreign reinsurers were permitted to set up branches in India, thereby increasing the local reinsurance capacity while retaining their reinsurance premiums within the country. Repeatedly, I've heard several members saying, what will happen to the premiums paid by Indian citizens? Will that be taken away by the foreign companies? No. Even earlier, when foreign reinsurers were permitted to set a branch in this country, the money which has been collected as reinsurance premiums in this country are retained in this country. They are not allowed to take it out. Similarly, the FDI limit for insurance intermediaries was raised to 100% in 2019 to enable them to provide better advisory service to our citizens. So the presence
and the kind of robust insurance sector environment that we've built up has resulted in positive outcomes. That is why even at the time of introduction, I did say this. Several members asked me questions about what was the number did you say? I'll repeat it for everybody's benefit. Number of insurers in 2014-15 were 53. But in 24-25, we have 74. Insurance penetration has increased close to 3.8%, whereas it was only 3.3. Insurance density, that is the average insurance premium paid per person in a year, was $55 in 2014-15. In 24-25, after 10 full years, it is $97 So total insurance premium in lakh crores was 4.15 lakh crore in 2014-15, whereas in 24-25, it's gone up to 11.93 lakh crores. So it is showing improvement, and therefore the reflective policy making. Assets under management, again in lakh of crores, is 24.20 lakh crores in 2014-15, whereas in 24-25, that's gone up to 74.43 lakh crores asset under management. Sir, FDI limits for insurance company now 24-25 before this bill is at 74%. Insurance intermediaries is already at 100%. So you may recall, and through you I'd like to tell the members in the House, 56th GST Council meeting, which was held in September this year, unanimously agreed to remove GST on individual life and health insurance premium. There is now a 0% GST rate, which was earlier 18%. And in this very House, at least a year ago, you may recall, Honorable Speaker, there was so much of a debate saying, what's the GST Council doing? Why can't you bring it down? And I'm grateful to the GST नहीं, ये Council. बहुत मांग थी सदन की और आपने इसकी मांग को माना, डिमांड थी। धन्यवाद सर। सदन की भावनाओं का आपने आदर किया। हाँ जी, थैंक यू। हाँ सर। हाँ? आपको भी धन्यवाद। नहीं, सबको सदन को धन्यवाद दिया मैंने, अकेले वित्त मंत्री जी को नहीं दिया, पूरे सदन को धन्यवाद दिया। So this nil GST on individual health and life insurance is a significant tax relief, sir, that directly reduces the cost of premiums of policy holders, and the GST Council through its instruments are watching how it's playing out. There are, of course, comments from some people through the social media saying maybe the companies are increasing the premium, not giving the benefit, but even that is closely monitored by the GST Council and its Secretariat. So with the guidance of Honorable Prime Minister, sir, we have launched nationwide campaign, and this is an important fact that I'd like to inform the members about. Aapki Punji Aapka Adhikar, which is your money, your right, to facilitate the settlement of unclaimed financial assets, including insurance claims, bank deposits, dividends, shares, mutual fund and pension to the legitimate claimants. This drive was launched in October, sir, from 5th October. Almost 500 districts have had this camp, and this camp had participation of public representatives, district administrations, and also officials from the financial institutions. The insurance regulator, माननीय वित्त मंत्री जी, अपनी पूंजी अपना अधिकार जो आपने चलाया था कंपनी, उसमें बीमा भी थी, जमा पुराना पैसा भी था, उसके बारे में थोड़ा मेंशन कर देना। हाँ सर, ताकि माननीय संसद सदस्य अपने अपने इलाके में इस कार्यक्रम को करेंगे। श्योर सर। सर, सो दिस कैंपेन सर 5th अक्टूबर से चालू, 500 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर कर दिया है।
और उसमें, as I said, public representatives, district administration and officials from the banking institutions have all participated. Insurance regulator एक बीमा भरोसा for unclaimed insurance proceeds is also happening simultaneously. Unclaimed insurance policy को उनके legitimate claimants को whoever is the inheritor it has been given. First 2 months में ही during this campaign we were able to give unclaimed financial assets, not just insurance, shares, mutual fund, insurance and deposits and so on, amounting to 2,000 crores to our common citizens. It went to the rightful owners, and this campaign continues. We'll be doing again one more round after completing all the districts, one round, so that more and more people who are remaining without information, either whether they have something to claim or they have something to claim, they don't know how to go about it. So this campaign has actually brought people together to claim their legitimate money. So I would request, sir, जैसे आपने बताया, आपके द्वारा सभी मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस विषय को प्रचलित करें और जिसके द्वारा unclaimed deposits or shares or whatever is lying should be claimed by the rightful owners. Please, I appeal to all members of parliament to, in your region, in your state, spread this news. We want to give the money back to the rightful owners. Sir, highlights of this bill about which the charcha has happened. When I highlight these points, many members' questions will be answered, but I'll just flag them and explain what they are. First of all, sir, we need to spread insurance awareness among people so that they can not only avail themselves of insurance to cover their risks, but also receive the legitimate dues. Jaise I said what is happening in the campaign. So the policy holders education and protection fund, which is being created out of the penalties levied by IRDAI, will be used for this purpose. That will be definitely going only for building the awareness. Second, sir, better regulatory oversight of insurance companies' affairs will help ensure the orderly conduct of insurance business. This bill aims to bring that transparency. I will give you 1 or 2 examples to show what prevails now is not as transparent as we would like it to be, whereas what comes through this bill is to bring in greater transparency. Third, sir, we are introducing a one-time registration for insurance intermediaries that would ensure uninterrupted service to our citizens, promote ease of doing business for service providers, reduces regulatory delays and also administrative compliance burden for intermediaries. Fourth point, sir, our country needs further capital infusion into the insurance sector, sir. This will ensure that we benefit both from better technology, world-class risk assessment models, and the best insurance products available anywhere in the world. The proposed removal of the upper cap on FDI in the insurance sector is a significant enabler in this process, despite many questions which were raised. But the more that opening up happens, it brings in better technology, better insurance products which we are not able to conceive of. So thereby we create a conducive business environment. Another point which will address the concern which Honorable Member N.K. Premchandran mentioned, we are standardizing the regulation making process by introducing standard operating procedure for regulation making and mandatory public consultation on all regulations by the Insurance Regulatory Authority to ensure that the process is consultative and transparent. That issue that you may fast track the route or whatever, or you take up the power for urgent or risk mitigating regulation and you're giving it all away to IRDAI is not well founded at all. We are standardizing the process.
the regulation making and mandatory public consultations will bring in that necessary transparency. It is not really emboldening or giving more powers to the regulator. So as per the current provision, this is the point that I wanted to use as explaining where we are better off with this proposed bill. As per the current provisions, sir, intermediary licenses are directly cancelled when found violative of law. We are introducing suspension of intermediary license instead of direct cancellation, because that will provide time for compliance and allow the intermediary an opportunity to strategize, streamline operations, bring in greater transparency, that is during the period of suspension, so that he is given time to correct himself so that citizens can be better served. That is what is being brought in now. Provision for merger of a non-insurance company with an insurance company would promote a simplified corporate structure. We have had quite a lot of instances where companies are, the holding company is doing similar thing, the subsidiary is doing similar thing, they are not able to give better synergy. So this provision would bring to greater synthesize the parent and the holding company with their subsidiary, and both doing similar comparable assignments. Even earlier, sir, one of the points which I wanted to say, but now I'll say it, the legal requirement to seek prior approval of the regulator for transfer of share capital has been raised from 1% to 5%. What does this aim at? It aims to reduce compliance burden for insurers and for regulators, thereby promoting ease of doing business. Even earlier, for 1% prior 1% share transfer, they had to rush to the regulator. At least now it will be only when it is 5%, and therefore the ease of doing business comes in. Sir, reducing net owned fund requirement for foreign reinsurance branches from 5,000 crore to 1,000 crore would invite more reinsurers to come into this country for creating greater risk management, risk capacities that they would have, and would create a level playing field for the foreign foreign reinsurance companies in domestic tariff area as opposed to that which prevails in the foreign IFSC, because we want Indian citizens to get the same benefits as much as those who operate in the IFSC would be giving. So the central government may, by notification, apply with modifications or exempt the insurance intermediaries operating in any special economic zone, inclusive of IFSCA, from the provisions of the Insurance Act. This is only with particular, the exemption will be offered only in certain conditions, and this will only be aimed at getting more investments. But that is only after the application are scrutinized and the objective is kept intact. We are providing further, sir, autonomy to LIC. This is one of the important things which many of the members were talking about, but this point will address it. LIC will have greater autonomy. We are providing autonomy to LIC to open zonal offices and aligning compliance for its foreign offices with the laws and regulations which prevail in the respective jurisdictions. Now, even if they want to open one zonal office in an area where business is thriving, they will have to come to the government, seek the permission, the files move up and down, and then the permission is given, and then they go open, by which time months pass. Whereas if it is given to their own board, decision can be a lot more professionalized. That's one of the things which we are doing by the amendment we are bringing for the LIC Act. We are also empowering the regulator. This is very important, because many members thought we are empowering the regulator. It's so empowered. It is empowered for a very good thing. That is, disgorging wrongful gains.
When most of the time wrongful gains happen and somebody's gained it, you don't have the statutory power to disgorge that and give it to whoever have been made to suffer. Now this one will give that power to the regulator to disgorge wrongful gains from insurers and from intermediaries. So when insurance companies have made wrongful profit, that will be disgorged by the regulator. And this is one of the very insurance policy holder friendly steps. We are also proposing, sir, to rationalize penalties to be imposed by the regulator. The maximum limit of penalty on insurers for default in complying with or acting in contravention of the Insurance Act or the regulator IRDAI Act has been proposed to increase from 1 crore to 10 crores. Now insurance intermediaries have also been included under this provision. This would act as a deterrent and encourage legal and regulatory compliance. Earlier, the fine of 1 crore, which we are now proposing to increase to 10 crore, was only applicable to the insurance companies and not for the intermediaries. Now we are bringing both on board, and both will be at 10 crore penalty, so that there will be some deterrent from compliance oversights, as a result of which many of the insurance holders, policy holders suffer. And the last point, sir, which is the main feature, all these are the main features of this act, and the last of the main feature is an entity, for instance, engaged in the business of insurance will have to categorically use the name insurance, assurance, insurance company in their names. You cannot operate anymore by not having the word insurance or assurance in your name. So it will directly relate to the common people saying, oh, this is a recognized insurance company. Without mentioning the word insurance, a lot of questions are raised as to, are they genuinely in the business of insurance? Who are they? Are they doing it? So on. So similarly, sir, an insurance intermediary will have to necessarily indicate the nature of its business and service to identify itself with the kind of services that it extends. So we hope that this will avoid mis-selling of policies and wrong sale with features which are not aligned with what is proposed. So with these proposed changes, the insurance law will ensure accessibility and affordability of insurance to our citizens, meeting with the goal and objective, insurance for all. But there are, besides this, 1 or 2 points which I will explain to the honorable members who have raised these questions. Sir, should I name the members who are not here who raised the issues, or just say the points because it will benefit everybody else? Sir, government, as I said, has taken a lot of steps. जनरल विषय बोल दे सबका एक साथ मिलके। So, एक सदस्य का नाम अगर आपने लग जाए तो हर मंत्री को फिर एक सदस्य का नाम लेके ही जवाब देना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को खत्म कर दो, नहीं तो आप किसी का जवाब नहीं देना चाहे तो फिर क्या करेंगे? फिर कहूँगा मैं इसका भी जवाब दो। Okay, sir. जनरल के So I've explained how the government has taken a lot of steps towards giving general coverage for the common people. उसमें एक विषय मैं ज़रूर कहना चाह रही हूँ सर, on affordable insurance schemes like the Jeevan Jyoti, Suraksha Bima Yojana, we have seen 81 crore enrollments, and we have settled the claims to the beneficiaries to the tune of 23,440 crores. So those which are aimed at the common poor citizens of India are getting their monies back when unfortunate incidents happen and the policy has to be invoked. Sir, Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana has benefited 12 crore families. The scheme provides free medical care up to 5 lakh per family per year to the poor and underprivileged. So 12 crore families.
Further, this scheme has also been opened for senior citizens, and accordingly more than 80 lakh senior citizens have been enrolled under the scheme. And 56,401 crore has been settled to the beneficiaries under this senior citizen scheme. So money has gone into the hands of people with whom they've lived, meaning senior citizens have lived. सीनियर सिटीजन का आशीर्वाद मिलेगा सर, बहुत अच्छा काम किया है। सीनियर सिटीजन का उम्र वाला आशीर्वाद मिलेगा। Sir, just to give a matter of fact data, sir, currently there are 74 insurance companies in the country, and out of these, 40 companies have FDI as below. I'll give the numbers because Honorable Member Lavu Sri Krishna had this question to ask me about the number of companies. I just want to highlight the fact. Percentage of FDI and the number of insurance companies. In 10 of them, less than 26% FDI is there. I said total of 74. In 10 of them, less than 26%. In 23 of them, between 26 to 49%. In 3 of them, 49 to 74%. And at 74%, there are 4 of them who have FDI at 74%, sir. So I want to highlight the fact, the enhancing, this is another point which Honorable Member Prem Chandran spoke and a few others have also spoken. So if there is need for growing protection through insurance in this country, we need to have insurance more accessible. Enhancing FDI limit through Section 3AA of the bill to 100% will enable global insurance to inject substantial capital directly without waiting for domestic partner to invest capital in parallel. Because we have heard a lot of these FDI people who want to come into this country searching for a partner, joint venture partner. It's a mammoth effort. Now by doing this, we are able to bring them to the country directly, of course with all the Indian laws which are passed by this parliament for LIC or insurance will apply to them. They are not coming to, be without any regulation on them. There was this question, why are we rushing this bill? This has been in discussion for quite some time, sir. And this bill, of course, was put up to the members through the portal even on the 14th. We are discussing the provisions of the bill extensively now for almost 4 hours. So, on the transparency point, I just want to highlight, all life and health insurance companies are required to calculate and publish their claims settlement ratios annually. It is a compulsion on them. This data is also collated and published by the insurance regulator in its annual report. So there is no way that the details will remain secretive. It is for us to use and look at their websites. Every quarter they keep updating it, particularly health and life insurance. Sir, I had given the data of different Bima Yojana, but there was a particular question about even does it cover the people of Uttar Pradesh? I want to answer to a member who was here. Jeevan Jyoti Bima Yojana with a life insurance premium of 436 rupees annually has 3.21 crore enrollments only in Uttar Pradesh. Wow. Similarly, Suraksha Bima Yojana, which is an accident insurance at 20 rupees per annum premium, 20 rupees, has 8.19 crore enrollments only in Uttar Pradesh. Ayushman Bharat Health Insurance, which is that 5 lakh health insurance, has 7.43 crore people, beneficiaries, 67 lakhs plus claims have already been settled only in Uttar Pradesh.
67 lakhs plus claims have been settled Uttar Pradesh का, और उधर 7.43 crore beneficiaries है आयुष्मान भारत का। पीएम फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश में 15 lakh plus farmers are covered under फसल बीमा योजना। हाँ, यूपी का अध्यक्ष है, so he can take it further. मैं डेटा दे रही हूं सर। सर Sir, under the Fasal Bima Yojana, quite a few questions were raised. You know, it's not this, it's not that, it's not affecting. I just want to give the two options which are available for clarity's sake. Traditional Fasal Bima Yojana, where the insurance company bears the full claims and also retains all the premium. वो एक option है. दूसरा option है, it's called cup and cap model. There are two models under this particular thing, 80 to 110 or 60, 130. Under these, the liability on the insurance company is capped at a fixed percentage, either 110% or 130%. If the claims go beyond this limit, state government has to bear the additional liability. On the reverse, if the claims fall well below the certain percentage, 80 to 60, 80% or 60%, the difference will be between this threshold and actual claim ratio has to be borne and returned by the insurance companies. The states can make a choice. At the time of floating the tenders, they can choose whether they want to be in this or they want to be in that. उदाहरण के लिए, क्योंकि we have Honorable Member Supriya Sule ji, who normally comes with quite a lot of details when she asks a question, Maharashtra and Uttar Pradesh, हमारा अध्यक्ष जी हैं इधर, both operate Fasal Bima Yojana on the 80 to 110 cup and cap model. So that will be for the companies, insurance companies, to bear with the difference. So the concern about data protection, very legitimate concern, some members did raise about it. So I want to just say this bill mandates the regulator or its authorized agencies to collect the KYC data of the policyholders. The collection of the data will be in full compliance with the provisions of the DPDP Act, that is the Digital Personal Data Protection Act. The provisions contained in the bill will help in safeguarding the sensitive KYC information of the policyholder. Any sharing of information will be with the expressed consent of the policyholder, otherwise it's not possible. And the aim is to create insurance data repositories which will help insurance companies to underwrite the policies better and to prevent insurance frauds. So these will be similar to the credit information companies, the much maligned, which is getting corrected also, the CIBIL in banking sector. But this will be run more efficiently. So without the explicit permission, no data is being collected, sir. Sir, I think I've addressed most of the concerns of N.K. Premachandran ji. Sir, again a concern about insurance agents. There are 14 lakh insurance agents in this country and their livelihood needs to be protected. I want to highlight, sir, that the government values the service of all the insurance agents. We value it, we respect them. So we will do only that which is going to help them. It also recognizes, meaning we also recognize the role in taking insurance products to the last mile. And that is why I want to thank Honorable Prime Minister in giving me a suggestion which we implemented in right earnest, and that is with the view to bring this initiative of LIC called Bima Sakhi.
one of the most appreciated scheme which has benefited women. Honorable Prime Minister launched it in December 2024, where close to 2 lakh women have been trained and deployed as agents who can increase insurance cover and take insurance products to every household, and especially to cover women who are often left out of protection, of the protection net that the insurance schemes can offer. So on the insurance agents, we are with you, we appreciate your concern, we value them as well. Sir, government also recognizes the role of LIC. So we've heard quite a lot of members speak, and rightly, that LIC's role in development is huge. We need to protect it. Of course we want to protect it. We want to increase its reach. The government recognizes the role of the LIC, and it is through this bill that we are trying to empower LIC. That's why I explained, zonal offices, you don't need to wait for the government to give you permission. Go ahead. We are giving a lot of professional liberty to LIC, and this will actually mean LIC will have greater autonomy and in its operations and their capabilities. Clause 71, I think I've already explained. There was this question, sir, which is a very important point. I want to highlight this. Honorable member expressed certain misgivings about proposed amendments. Let me clarify, sir. This is an existing section. There is no attempt to dilute the said provision, clause 71, section 116. In fact, there's, on the contrary, the proposed amendment brings in greater transparency. Therefore, the apprehensions of the member are unfounded. And I'd like to draw the attention of the honorable member, through you, sir, to section 116 of the current act, where there is no requirement for the central government to place notifications granting any such an exemption before the parliament. As the law prevails today, there is no need for me to come and lay any details to the parliament under section 116. But what this proposed amendment is actually doing is it is inserting a subsection 2 to section 116, where any such order passed by the central government shall be laid before each house of the parliament. That's the insertion we are making. This is a measure to bring more transparency, and clearly the honorable member would certainly appreciate, and I hope that he will appreciate this, that the proposed amendment for making the executive more accountable to the legislator. That's what we are doing now by introducing that section. Sir, I come to my last 2 points. The draft amendment, states were not consulted, was one of the members' observation. Draft amendments were shared with all states and with all union territories in a letter dated 26/11/2024, 1 year ago. We have given that for their comments and suggestions. States were consulted. Extensive stakeholder consultations other than the states were also conducted with insurers, regulators, industry bodies, public, through the website of Department of Financial Services. So it will not be correct to say that we have not held stakeholder consultations. So I've mentioned about the money which was infused to make the companies now become profitable, and it has given them a lot of market reach. There was this concern, public sector is weakening, private companies are coming to capture the market. No, sir, we have constantly supported our own companies. I told about the 17,500 crores, 17,450 crores, which have been infused into these banks, into these institutions, that today they're all turning around and making profits, sir. So with these, I hope I've addressed all the concerns, questions raised by the honorable members, and I appeal to you that we pass this bill. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें,
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 1 से 3। Sir, clause 3, there are 3 proposals of amendments. That is, along with the hospitalization, this may also be added because all the expenses for treatment both as inpatient and outpatient, including modern medicine and Ayush. For the time being, Ayush is not being covered under this hospitalization. So this may also be covered so that the customers will be more beneficial. That amendment may be accepted, madam. It is a harmless amendment. Please accept it. मूव या नहीं मूव? Moving, sir. That's it. प्रश्न ये कि N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ओनली 1 से 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयक का अंग बना। श्रीमती टी सुमति, संशोधन संख्या 19। Section 19. Sir, 19 I'm not moving. On page 1, line 5, sir, I would like to move. So I'd like to substitute that term Sabka Bima Sabki Raksha. It should be substituted as universal insurance. प्लीज, ये रॉन्ग हो गया। पहले संशोधन क्या 4 आएगा। प्रश्न ये है कि प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 4। Sir, 4, I am moving the amendment. Insurance intermediary includes. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 5। सर, संसद संख्या 5 फाइनेंशियल कंडीशन के साथ qualification experience in the insurance sector may also be a only move या no move? Moving. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 6 से 8। FDI limit may be brought down to 49%. That is my amendment. Moving. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा संशोधन संख्या 6 से 8 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि श्री चंद्रशेखर, संशोधन संख्या 11। प्रश्न है कि श्री चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत संख्या 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री बेनी बैनन,
नो। श्रीमती टी सुमति संशोधन संख्या 2021। Sir, I am moving. प्रश्न ये कि श्रीमती टी सुमति द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 20 और 21 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 विधेयक का अंग बना। श्री चंद्रशेखर जी, संशोधन संख्या 13। सर 1000 करोड़ वालों को दिया जा रहा है मौका। पहले 5000 करोड़ तक घटाया गया सर। मेरी मांग है कि इसको 10,000 करोड़ किया जाए सर। मूविंग। 10,000 करोड़ का क्या करोगे? प्रश्न है कि श्री चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 8 से 14 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 से 14 विधेयक का अंग बना। श्री NK प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 9। संशोधन संख्या 9, बिफोर रिजेक्टिंग द क्लेम ऑफ सेटलमेंट a reasonable opportunity of being heard be provided to the claimant. आप मूव कर रहे हैं? नो मूविंग। प्रश्न है कि NK प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न खंड 15 से 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 15 से 19 विधेयक का अंग बना। श्रीमती टी सुमति, संशोधन संख्या 22। I'm moving it, sir. Moving it, sir. प्रश्न है कि श्रीमती टी सुमति द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 20 से 43 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 20 से 43 विधेयक का अंग बना। श्री के राधाकृष्णन, संशोधन संख्या 15। प्रश्न है कि के राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 44 से 67 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 44 से 67 विधेयक का अंग बना। श्रीमती टी सुमति, संशोधन संख्या 23। Yes, sir. I'm moving it, sir. प्रश्न ये है कि श्रीमती टी सुमति द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 68 से 70 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 68 से 70 विधेयक का अंग बने। श्री चंद्रशेखर जी, संशोधन संख्या 16। सर जी की आत्मा इधर दो देखो सर, ये खुद तो कुछ सीखते नहीं है सर, और अगर कोई सीख रहा है तो सर अब मैं क्या कर सकता हूँ? इधर सुनो सर, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कहा गया क्लोज 71 में कि पार्लियामेंट में छूट देने के बाद हम लोग जो है वो रखेंगे। मेरी राय सर, पार्लियामेंट में के दोनों सदनों में रखी जाए, उसके बाद छूट दी जाए सर। प्रश्न ये कि श्री चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 71 से 78 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 71 से 71 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि 79 से 95 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 79 से 95 विधेयक का अंग बना। श्री के राधाकृष्णन संशोधन का 10 ना। प्रश्न ये कि के राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन का 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में होगा, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्रीमती टी सुमति गई। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अभी और बिल चलना है, एक और उठा रहे हो। सब तैयार हो गया? चलो, सभा की सहमति नहीं तो कल चलाएंगे, पर कल देर रात तक बैठना है। सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 17 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। His Majesty King Abdullah, His Royal Highness the Crown Prince, दोनों देशों के डेलीगेट्स, बिजनेस जगत के लीडर्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं, कई देशों के मार्केट्स भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं
जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। योर मैजेस्टी, आपकी लीडरशिप में जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज बना है जो अलग अलग रीजन्स के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में बहुत मदद कर रहा है। कल हमारी मुलाकात में आपने बताया कैसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत की तेज ग्रोथ में आप सहयोगी बन सकते हैं और अपने निवेश पर शानदार रिटर्न भी पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। मैं आपसी सहयोग के कुछ की सेक्टर्स की चर्चा आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। ऐसे सेक्टर जहां विजन, वायबिलिटी और वेलोसिटी ये तीनों मौजूद है। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी। इसमें भारत का अनुभव जॉर्डन के बहुत काम आ सकता है। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंक्लूजन और एफिशिएंसी का मॉडल बनाया है। हमारे यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर जैसे फ्रेमवर्क्स आज ग्लोबल बेंचमार्क बन रहे हैं। हिज मैजेस्टी और मैंने इन फ्रेमवर्क्स को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की है। हम दोनों देश फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक
ऐसे अनेक सेक्टर्स में अपने स्टार्टअप्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, एक शेयर्ड इकोसिस्टम बना सकते हैं जो हम आइडियाज को कैपिटल से और इनोवेशन को स्केल से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। आज हेल्थ केयर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। जॉर्डन में भारतीय कंपनियां मेडिसिन बनाएं, मेडिकल डिवाइस बनाएं, इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगा ही, वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए भी जॉर्डन एक रिलायबल हब बन सकता है। जेनरिक्स हो, वैक्सीन्स हो, आयुर्वेद हो या वेलनेस, इंडिया ब्रिंग्स ट्रस्ट एंड जॉर्डन ब्रिंग्स रिच। फ्रेंड्स, अगला सेक्टर एग्रीकल्चर का है। भारत को ड्राई क्लाइमेट में खेती का बहुत अनुभव है। हमारा ये एक्सपीरियंस जॉर्डन में रियल डिफरेंस ला सकता है। हम प्रिसीजन फार्मिंग और माइक्रो इरिगेशन जैसे सॉल्यूशन पर काम कर सकते हैं। कोल्ड चेन्स, फूड पार्क्स और स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने में भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स में हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, वैसे ही अन्य क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन तेज ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इन क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन हमें स्पीड और स्केल दोनों देगा। हिज मैजेस्टी ने जॉर्डन में रेलवे और नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का विजन साझा किया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कंपनियां उनके विजन को साकार करने के लिए सक्षम भी हैं और उत्सुक भी हैं। कल हमारी मुलाकात में हिज मैजेस्टी ने सीरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरतों के बारे में भी बताया। भारत और जॉर्डन की कंपनीज इन जरूरतों को पूरा करने पर मिलकर काम कर सकती है। फ्रेंड, आज की दुनिया ग्रीन ग्रोथ के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। क्लीन एनर्जी अब केवल विकल्प नहीं है, बल्कि एक नीड बन चुकी है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, इसमें भारत बहुत बड़ी इन्वेस्टर के रूप में काम कर रहा है। जॉर्डन के पास भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसे हम अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी का सेक्टर है। भारत आज अफोर्डेबल ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। इस क्षेत्र में भी हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिलकर करना चाहिए। फ्रेंड, भारत और जॉर्डन दोनों देश अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज पर बहुत गर्व करते हैं। हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म के लिए भी दोनों देशों में बहुत अधिक स्कोप है। मैं समझता हूं कि दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारत में इतनी सारी फिल्म्स बनती है, इन फिल्मों की शूटिंग जॉर्डन में हो या ज्वाइंट फिल्म फेस्टिवल्स हो, इसके लिए भी जरूरी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। भारत में होने वाली अगली वेव समिट में हम जॉर्डन से एक बड़े डेलीगेशन की अपेक्षा करते हैं। फ्रेंड, ज्योग्राफी जॉर्डन की स्ट्रेंथ है और भारत के पास स्किल भी है और स्केल भी। दोनों की स्ट्रेंथ जब एक साथ आएगी तो इससे
दोनों देशों के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। दोनों देशों की सरकारों को उनका विजन बिल्कुल स्पष्ट है। अब बिजनेस वर्ल्ड के आप सभी साथियों को अपनी इमेजिनेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से इसको जमीन पर उतारना है। अंत में मैं आपसे फिर कहूंगा, कम लेट अस इन्वेस्ट टुगेदर, इनोवेट टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। योर मैजेस्टी, एक बार फिर आपका, जॉर्डन सरकार का और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रान, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली असंख्य महिला क्रांतिकारी हुईं, जिन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थीं। ऐसी ही एक वीरांगना थीं गुलाब कौर। पंजाब के बेहद गरीब परिवार में जन्मी गुलाब कौर ने विवाह के बाद बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। पैसों की कमी के कारण पति मान सिंह के साथ गुलाब कौर पहले मनीला पहुंची, जहां से पैसे कमाकर आगे अमेरिका जाने की योजना थी। इसी दौरान गुलाब गदर पार्टी के नेताओं के संपर्क में आई। गदर पार्टी एक भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसकी स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से पंजाबी सिख प्रवासियों द्वारा की गई थी। गदर पार्टी ने गुलाब कौर को क्रांतिकारी साहित्य छापने की जिम्मेदारी दी। जल्द ही भारत की आजादी के लिए गदर पार्टी ने वतन वापसी का फैसला लिया। गुलाब कौर भी भारत लौटने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन तय दिन उनके पति मान सिंह फैसले से पलट गए। गुलाब अपने इरादे पर डटी रहीं और भारत जाने वाले जहाज पर सवार हो गईं। जहाज पहले हांगकांग पहुंचा, जहां प्रवासी भारतीयों की सभाओं में गुलाब कौर गदर की गूंज कविता की पंक्तियां गाती और अपनी चूड़ियां उतार कर लोगों को ललकारती। जहाज भारत पहुंचा और पहुंचते ही गदर पार्टी के कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन गुलाब बचकर पंजाब आ गईं। उन्होंने होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला में लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। गुलाब क्रांतिकारी साहित्य छापती और उसे स्वतंत्रता सेनानियों में बांटने का काम करती। गुप्त रूप से वो क्रांतिकारियों तक हथियार भी पहुंचाती थीं। धीरे धीरे गुलाब कौर के प्रेरक व्यक्तित्व और अथक प्रयासों से पंजाब में एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो गया। कई बार ब्रिटिश पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार गुलाब कौर गिरफ्तार कर ली गईं। राजद्रोह के मामले में उन्हें लाहौर के शाही किले में कैद कर लिया गया, जहां उन्हें गंभीर यातनाएं दी गईं। 1931 में आजादी का सपना दिल में ही लिए ये महान वीरांगना हमेशा के लिए अमर हो गई। पंजाब के बरनाला जिले में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे करम सिंह ने कहां सोचा था कि आजादी के बाद पहली बार जब तिरंगा फहराने की बात आएगी तो उसमें उनका नाम भी होगा। जी हां, आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराने के लिए जिन 5 सैनिकों को चुना था, इनमें लांस नायक करम सिंह भी शामिल थे। ये सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में 1941 में भर्ती हुए थे। इन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया था और मिलिट्री मेडल से सम्मानित किए गए थे। चलते हैं 13 अक्टूबर 1948 के दौर में, वो तारीख जब पाकिस्तान ने बंटवारे के बाद कश्मीर पर धोखे से हमला बोला था और टिटवाल के रिजमार गली से भारतीय सेना को पीछे ढकेलने की कोशिश की थी।
मगर मौके पर मौजूद सिख रेजिमेंट के एक जवान ने उसकी इस मजबूत कोशिश को सफल नहीं होने दिया था। फॉरवर्ड पॉइंट पर मौजूद इस जवान ने अपनी बंदूक से पाकिस्तानी सेना के हर वार का मुकम्मल जवाब दिया था। पाकिस्तान ने एक के बाद एक करीब 8 बार लांस नायक करम सिंह की पोस्ट पर कब्जे की कोशिश की, मगर उसके सैनिक लांस नायक करम सिंह के जज्बे को मात न दे सके। दुश्मन हमला तेज करता रहा। करम सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे, पर डटे रहे और दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकते रहे। एक कंपनी के बराबर मोर्चा लेते रहे और अंत में पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। इनकी इस अदम्य वीरता के लिए इन्हें 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक करम सिंह उन चंद सैनिकों में रहे जिन्होंने अपने हाथों से परमवीर चक्र प्राप्त किया और लंबा जीवन जीते हुए 1995 में अपने गांव में अंतिम सांस ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं के आधुनिकीकरण से। इस सवाल को पूछा है रवंगवरा नारजारी ने। उन्होंने पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा है कि असम राज्य में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु क्या परिवर्तनकारी पहले की गई हैं? क्या मंत्रालय भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों में नदी क्रूज पर्यटन को विकसित करने की योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? इस सवाल का जवाब दिया पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए की गई परिवर्तनकारी पहलें इस प्रकार हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी का 498 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास किया गया है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बोगीबिल और जोगी घोपा टर्मिनलों का निर्माण, बोगीबिल और पांडु में पर्यटक जेटी, नियमित फेयरवे विकास कार्य, सुचारू नौवहन और नौचालन के लिए नौचालन सहायता शामिल है। इसके अलावा 419 करोड़ रुपए की लागत से पांडु में पोत मरम्मत सुविधा और पांडु पत्तन में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड और पोत मरम्मत सुविधा का निर्माण भी किया गया है। वर्ष 2020-21 से राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी का 134.72 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास किया गया है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बदरपुर और करीमगंज में टर्मिनलों का उन्नयन, फेयरवे विकास, नौचालन सहायता का रखरखाव, जल स्थल ब्रेजर की खरीद आदि शामिल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 कोपिली नदी को चंद्रपुर कामरूप से हट सिंगीमारी दक्षिण सालमारा मनकाचर तक 300 मीट्रिक टन सीमेंट की आवाजाही के साथ चालू किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में IWT के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत टर्मिनल और फेयरवे विकास और छोटे यात्री जलयानों की खरीद के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पूर्वोत्तर में नदी क्रूज पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। MOPSW के तहत एक स्वायत्त संगठन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राज्य 2 पर समर्पित क्रूज टर्मिनल विकसित कर रहा है। क्रूज टर्मिनलों के विकास के लिए निर्धारित स्थान गुवाहाटी, निमाटी, विश्वनाथ घाट, सिलघाट और गुर्जर है।
सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, IWAI और असम सरकार के अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन विभाग के एक विशेष प्रायोजन साधन ने हॉप ऑन हॉप ऑफ मॉडल पर उपयुक्त जलयानों का उपयोग करके लाचित घाट, असंवता मंदिर घाट, डॉल गोविंदा मंदिर घाट, हनुमान मंदिर घाट, उमानंद घाट, पांडुनाथ घाट और कामाख्या मंदिर नामक 7 मंदिरों को जोड़ने वाले धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास का काम शुरू किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मिलावटी दवाओं के परिचालन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद JB माथेर हिशम ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने नकली दवाओं के परिचालन में कथित 50% की वृद्धि के बीच इनकी वर्तमान मात्रा और अनुमानित बाजार विस्तार का आकलन किया है। नकली दवाओं के बढ़त परिचालन के बीच जन औषधि केंद्रों के माध्यम से वितरित की जाने वाली दवाओं की वास्तविकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने छूट, उत्प्रेरित मांग सहित मिलावटी दवाओं के अंतर्वाह के कारणों की जांच की है और क्या इस पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई है? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में नकली औषधियां शब्द परिभाषित नहीं है। हालांकि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में मिलावटी, अशुद्ध और गलत लेबल वाली औषधियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें नकली औषधियां भी शामिल हैं। वर्तमान में नकली औषधियों की मौजूदा मात्रा और अनुमानित बाजार आकार का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि अवमानक गुणवत्ता वाले NSQ नकली औषधियों की व्याप्तता का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण 2014 से 16 में किया गया था। सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से लिए गए कुल 47,012 औषधि नमूनों में से खुदरा दुकानों से प्राप्त अवमानक गुणवत्ता वाले और नकली औषधियों का अनुमानित प्रतिशत क्रमशः 3% और 0.023% था, जबकि सरकारी स्रोतों से प्राप्त प्रतिशत क्रमशः 10.02% और 0.05% था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल के वर्षों में देश में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। देश में औषधि निर्माण प्रतिष्ठानों द्वारा विनियामक अनुपालन संबंधी आकलन करने के लिए CDSCO ने राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ मिलकर दिसंबर 2022 से अब तक 960 से अधिक प्रतिष्ठानों का जोखिम आधारित निरीक्षण किया है और इन निरीक्षणों के आधार पर राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना, उत्पादन रोकने का आदेश देना, लाइसेंस उत्पाद लाइसेंस निलंबित करना, रद्द करना और चेतावनी पत्र जारी करना जैसे 860 से अधिक कार्रवाइयां की गई हैं। विभिन्न कंपनियों की उन दवाओं की सूची जिन्हें केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा अवमानक गुणवत्ता वाला या नकली या गलत ब्रांडेड मिलावटी घोषित किया गया है। CDSCO की वेबसाइट www.cdsco.gov.in पर ड्रग अलर्ट शीर्षक के अंतर्गत अपलोड की गई और उपलब्ध है। साथ ही शुरू की गई कार्रवाइयों का विवरण भी दिया गया है। औषधि नियम 1945 में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अनुसूची H2 में सूचीबद्ध शीर्ष 300 औषधि ब्रांडों के विनिर्माताओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर या अपर्याप्त स्थान होने पर द्वितीयक लेबल पर प्रमाणीकरण के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के माध्यम से पठनीय डेटा संग्रहित करने हेतु एक बारकोड या QR कोड मुद्रित करना या चिपकाना अनिवार्य है। इसी प्रकार नियमों में यह भी संशोधन किया गया है कि प्रत्येक सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक चाहे विनिर्मित हो या आयातित, उसके पैकेजिंग के प्रत्येक स्तर पर एक QR कोड होना अनिवार्य है, जिसमें ट्रैकिंग और ट्रेसिंग को सुगम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के माध्यम से पठनीय डेटा हो। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में GSR 922 28/12/2023 के माध्यम से संशोधन किया है, जिसमें औषधि उत्पादों के लिए
अच्छी विनिर्माण प्रथाओं और परिसर, संयंत्र और उपकरण की आवश्यकताओं से संबंधित अनुसूची M को संशोधित किया गया है। संशोधित अनुसूची M 29 जून 2024 से 250 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले औषधि विनिर्माताओं के लिए प्रभावी हो गई है। हालांकि 250 करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाले विनिर्माताओं के लिए 31/12/2025 तक सशर्त विस्तार वर्तमान में उनके लिए लागू है, जिन्होंने विस्तारित अनुपालन अवधि के दौरान अपनी उन्नयन योजना प्रस्तुत की है। फरवरी 2024 में CDSCO ने केंद्रीय और राज्य औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के नमूने लेने के लिए नियामक दिशा निर्देश प्रकाशित किए। ये दिशा निर्देश एक समान औषधि नमूना पद्धति के माध्यम से बाजार में उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए एक संचरित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। CDSCO की औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने के लिए सितंबर 2023 से सुगम लैब्स नामक एक ऑनलाइन पोर्टल संचालित है। यह चिकित्सा उत्पादों, दवाएं, टीके, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को स्वचालित करता है, जिससे गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जा सके और प्रयोगशालाओं में परीक्षण की स्थिति का पता लगाया जा सके। केंद्रीय नियामक राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय करता है और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रशासन में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ आयोजित औषधि परामर्श समिति की बैठकों के माध्यम से विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है। केंद्र सरकार CDSCO और राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के अधिकारियों को उत्तम विनिर्माण प्रथाओं पर नियमित आवासीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में CDSCO में 22,854 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 20,551 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। अवमानक गुणवत्ता वाले और नकली मिलावटी दवाओं की बिक्री के संबंध में प्राप्त होने वाली अलग अलग शिकायतों पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा है कि हाल ही में शुरू किए गए हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 के अंतर्गत नवीकरणीय और ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने में क्या प्रगति हुई है। क्या सरकार घरेलू स्तर पर सौर पैनल विनिर्माण बढ़ाने हेतु किसी नई PLI योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है, और क्या मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सौर परियोजनाएं स्थापित करने हेतु कोई नई वित्तीय सहायता नीति लाने पर विचार कर रहा है। इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए 7 राज्यों नामतः गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 91 पैकेजों में से 73 की निविदा की जा चुकी है और 67 आवंटित किए गए हैं। राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार GEC चरण 2 के अंतर्गत कोई RE परियोजना अब तक जोड़ी नहीं है। वर्तमान में स्वदेशी स्तर पर सौर पैनलों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में उच्च दक्षता सौर PV मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का विस्तार करने या कोई नई PLI योजना लाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि MNRE की मॉडलों और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची के अनुसार स्वदेशी सौर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 122 गीगावाट है, जो कि सौर पैनलों के लिए वर्तमान स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत
नई सौर विद्युत योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जहां ग्रिड कनेक्टेड विद्युतीकरण तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, वहां जनजातीय और पीवीटीजी परिवारों, बहुउद्देशीय केंद्रों और जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थानों को ऑफ ग्रिड सिस्टम प्रदान किए जाते हैं। और यह योजना केवल पीवीटीजी जनजातीय गांव के लिए उपलब्ध है और सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद खगेन मुर्मू ने। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय से पूछा है कि वर्ष 2030, वर्ष 2037 एवं वर्ष 2047 हेतु उपलब्धियों को विकसित करने हेतु कार्यभारित 7 उप समितियों द्वारा की गई प्रगति सहित ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 के मसौदा तैयार करने में प्रगति सहित वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने एएमपी 2047 रोड मैप का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख विषय क्षेत्रों या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या ऑटोमोटिव क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों के संबंध में कोई प्रारंभिक आकलन किया गया है? यदि हाँ, तो एएमपी 2047 के अंतर्गत इन चुनौतियों को किस प्रकार हल करने का प्रस्ताव है? भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 एक उद्योग नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य भारी ऑटोमोटिव उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसका उद्देश्य तकनीकी प्रगति और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मूल उपकरण विनिर्माता, ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अंतिम उपयोगकर्ताओं सहित हितधारकों के सामूहिक दृष्टिकोण को एकीकृत करना है। 7 उप समितियों की बैठकें समय समय पर आयोजित की जाती हैं और ऑटोमोटिव मिशन योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के आकलन और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पंचायत सहायता योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद जितेंद्र दोहरे ने। उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित पंचायत सहायक योजना के अंतर्गत अनुबंध आधार पर कार्यरत पंचायत सहायकों के वर्तमान 6,000 रुपए प्रति माह मानदेय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है? क्या इस योजना के अंतर्गत कार्यरत महिला पंचायत सहायकों को प्रसूति अवकाश प्रदान करने हेतु कोई नीति तैयार की जा रही है? क्या सरकार पंचायत सहायक पद पर वर्तमान ग्राम प्रधान प्रणाली के स्थान पर अपनी स्वयं की निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति करने पर विचार कर रही है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब दिया पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्यों का विषय है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतें संविधान के प्रावधानों के अधीन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं, के माध्यम से स्थापित और संचालित की जाती है। तदनुसार पंचायत सहायकों के मानदेय में वृद्धि, महिला पंचायत सहायकों को प्रसूति अवकाश प्रदान करने और पंचायत सहायकों के पद पर नियुक्तियों सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक योजना के तहत वर्तमान में अनुबंध के आधार पर 6,000 रुपए के निश्चित मासिक मानदेय पर कार्यरत पंचायत सहायकों के मानदेय को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मानदेय के अतिरिक्त पंचायत सहायकों को जन सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए सेवा आधारित प्रोत्साहन भी मिलता है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को प्रसूति अवकाश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूँकि ग्राम पंचायत एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है,
इसलिए इनको महिला पंचायत सहायकों को ऐसी छुट्टी या अन्य आवश्यक राहत जैसा उचित समझा जाए प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी, उद्देश्यपरक, योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया पहले से ही लागू है। मौजूदा प्रक्रिया के तहत केवल संबंधित ग्राम पंचायत का एक स्थानीय निवासी ही पात्र है और चयन पूरी तरह से कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्राप्त उच्चतम औसत अंकों के आधार पर किया जाता है, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मखाना को बढ़ावा देने से। लोकसभा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा है कि क्या दरभंगा जिला देश में मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जिसमें खेती, अनुसंधान, प्रसंस्करण एवं निर्यात हेतु अपार संभावनाएं हैं। यदि हाँ, तो क्या सरकार का दरभंगा जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है? क्या सरकार ने इन संभावनाओं को ध्यान में रख प्रसंस्करण इकाइयों एवं रोजगार सृजन को क्या प्रत्यक्ष लाभ होंगे? क्या सरकार मखाना आधारित उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतक ब्रांडिंग, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार हेतु कोई विशेष नीति जारी करने का प्रस्ताव रखती है? इस सवाल का जवाब दिया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन के 80% मखाने का उत्पादन करता है। इसमें बिहार राज्य मखाना के राष्ट्रीय उत्पादन में 85% का योगदान देता है। बिहार में दरभंगा जिला मखाना उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से व्यापक रूप से विख्यात है और इस जिले को मखाने के उत्पादन और प्रसंस्करण की अपार क्षमता के लिए भी जाना जाता है। दरभंगा में मखाना के उत्पादन हेतु ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। दरभंगा को विशेष रूप से मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत मान्यता प्रदान की गई है। मखाना सेक्टर में ताजे और मूल्य वर्धित उत्पादन दोनों रूप में अपार क्षमता है, जो संभावित राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों और मछुआरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इस क्षमता का लाभ उठाने हेतु सरकार द्वारा 14 सितंबर 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धन, विपणन और निर्णायक प्रोत्साहन में सुधार करना है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत कृषि तकनीकों, बेहतर उत्पादन और प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से मखाना के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 6 वर्षों के लिए 476.03 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली मखाना के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के प्रमुख घटकों में मखाना क्षेत्र में आवश्यकता आधारित अनुसंधान और नवाचार, गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और वितरण, किसानों और हितधारकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास, बेहतर कटाई पद्धतियां और फसल उपरांत प्रबंधन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन सहायता, वैश्विक मखाना व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय शामिल है। मखाना के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से HSN कोड भी निर्मित किया गया है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रांड प्रचार के लिए मिथिला मखाना को GI टैग भी प्राप्त हुआ है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है गैर भारतीय मूल के व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद संजय उत्तमराव देशमुख ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने गैर भारतीय मूल के लोगों, विशेषकर कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले और भारतीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की संपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या उक्त लोगों के बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं या उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं या उनके द्वारा भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब दिया गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि
कि भारत विरोधी गतिविधियों में गैर भारतीयों की भागीदारी और समर्थन के उदाहरण सामने आए हैं। भारत सरकार ने अपने राजनयिक मिशनों और पोस्टों के माध्यम से मेजबान सरकारों से संपर्क किया है और उनसे न केवल अपने संबंधित घरेलू कानूनों के तहत इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, बल्कि प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार हमारी राजनयिक संपत्तियों और कर्मियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा समय समय पर जारी वीजा मैनुअल, नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे गैर भारतीयों की भारत में यात्रा निषिद्ध है जो इन गतिविधियों में शामिल हैं। और फिलहाल प्रश्नकाल में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, अपनी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। अधिकार के साथ ही कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे धर्म से जुड़ी सीमाएं, परंपरा, स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था या किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ न हो। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 26 धर्म के पालन से जुड़ी व्यवस्था का अधिकार भी लोगों को देता है। धर्म से जुड़ी गतिविधि चलाने के लिए उससे जुड़ी संस्था बनाना, धार्मिक स्थल का निर्माण और व्यवस्था करने के लिए नियम कायदे बनाना अनुच्छेद 26 के तहत आता है। हालांकि इस अधिकार की अपनी सीमाएं हैं। शर्त यह है कि इन अधिकारों के उपयोग के दौरान स्थिति तनावपूर्ण न हो। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। क्या केंद्र और राज्य सरकारें किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नागरिकों पर टैक्स लगा सकती हैं? क्या सरकारें जनता का पैसा धर्म के नाम पर खर्च कर सकती हैं? क्या धर्म की शिक्षा उस संस्थान में दी जा सकती है जो सरकारी खर्च पर चलता है? इन तमाम सवालों का जवाब संविधान के अनुच्छेद 27 में स्पष्ट है। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकारों द्वारा किसी भी कर यानी टैक्स का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा जिससे किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का प्रचार होता हो। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 28 में इस बात का जिक्र है कि कहां-कहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कहां नहीं। सो आपको बता दें कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है।
जिन संस्थानों का प्रशासन राज्य कर रहा हो और उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा की गई हो तो वहां भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वहीं अगर किसी संस्थान को राज्य द्वारा मान्यता मिली हो या राज्य द्वारा कुछ अनुदान मिलता हो लेकिन उसका प्रशासन राज्य के हाथों में ना हो तो ऐसे संस्थानों में स्वैच्छिक रूप से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो धार्मिक शिक्षा ले सकता है और अगर चाहे तो नहीं भी। Namaskar viewers, hello and welcome to Sunset TV. I am Tina Jha, you're watching Perspective. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, referred to as the Viksit Bharat Ji Ramji Bill 2025, was introduced in Lok Sabha on Tuesday by Union Minister of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan. Aligned with the national vision of Viksit Bharat by 2047, the bill seeks to provide a guarantee of 125 days of wage employment in every financial year to every rural household whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work, thereby promoting empowerment, growth, convergence and saturation for a prosperous and resilient rural Bharat. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। Let's now take a quick overview of some of the key provisions in the bill. It says all works undertaken under this bill will be aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, creating a unified national framework for rural public works. All works will be identified through Viksit Gram Panchayat plans, which are bottom-up, convergence-based and saturation-oriented. These will be prepared using spatial technology and integrated with the PM Gati Shakti to enable coordinated and efficient planning. States will be empowered to notify in advance periods aggregating to 60 days in a financial year, during which works under the bill shall not be undertaken, in order to facilitate the availability of farm labour during peak sowing and harvesting seasons. Every state government is required to prepare a scheme for giving effect to the guarantee proposed under this bill within 6 months of the commencement of the Act. It will operate as a centrally sponsored scheme with a fund sharing pattern of 90:10 for the northeastern and the Himalayan states as well as the union territories and 60:40 for all other states. Besides, there are several other provisions aimed at benefiting the rural economy, the farmers and the labourers. So we'll explore these as well as the changes proposed in the bill that make it different from the existing Manrega. Joining us are two distinguished guests, so let me begin by introducing them to you. It gives me immense pleasure to welcome on this edition of Perspective Dr. Vivek Kumar, Professor, Centre for Rural Development and Technology, IIT Delhi. Professor, thank you for joining us. Welcome to the program.
Also with us is Mr. Binod Anand. He's an expert in rural employment and rural development with over a decade of experience in monitoring and evaluation of grassroots development programs. He was part of the drafting member team during the inception of key rural and agricultural policy initiatives, and he's currently a member of the Prime Minister's Committee on Minimum Support Price. Mr. Anand, thank you for your time. Welcome to the program. So before we delve into the details of the provisions in the bill and the benefits that it is expected to have on the rural economy, let's begin the program with your thoughts, Mr. Anand, on what you see as the core objective of the Viksit Bharat Ji Ramji bill. But also to add to that question, as someone who's closely associated with issues of rural development and rural employment, why do you think the government felt the need for a new legislation at this point in time? See, this is the time, Tina, to create a nation building through self-reliance, innovation, and entrepreneurial spirit. This is what Viksit Bharat by 2047 vision is. It's an Atmanirbhar Bharat where innovation and inclusive growth will be at the center. So the deep water exploration was certain when the Honorable Prime Minister was talking about, removing the colonial mindset, Viksit Bharat resolve, the pride in roots, strengthening our unity and fulfilling the duties of citizens. This cannot be done with an act of 2006. We cannot have a Manrega Act of 2006 and think about 2047 and to the net zero emission villages. So that is why the need of this bill was, and this is not a time where the poverty is being, this accidental poverty cannot be tackled in this way. It has to be designed properly, the mind, so to speak, and the institutional, institutional steps are required, and that's why this model is the economic justice. This is an economic justice model, not the charity model. This is a community institution empowering model, and therefore this bill was. We must understand that the lines what has been talked about. See, this is an employment growth, convergence, and saturation scheme for 125 days, not 100 days. That's the first thing. And this convergence of a scheme will be used by PM Gati Shakti. So it is just not giving money, crores of money to the state government, and then they will decide. It will be pre-decided by the Gram Panchayat. It will be pre-decided on saturation basis. And it will be integrated with Viksit Bharat National. That's what the changes are. This is to facilitate the availability of farm labor during peak agricultural season. A robust system will be there. The digital public infrastructure is at place. So the efficient and high integrity implementation is on card through this BP Gram G scheme, which is G Ram G scheme. So that is why this is more than that what the Manrega is talking about. 100 miles ahead of what Manrega was talking about, Narega and Manrega, and now this is a G Ram G bill. So this is a very, very visionary one. It will overall change the rural, rural infrastructure stack. It is not like just Gadda Khodo and Bharo. It is not like just, doing the watershed activity. It is in a planned way. The livelihood related infrastructure and a special works would be there. So that is why this bill is different. Okay, okay. So we'll talk about the long-term outcomes and also all aspects related to the technology, the planning and the data aspects in due course of the program. But Professor, your opening remarks on one of the biggest questions that is being asked today is how is this bill different or better than Manrega? So in terms of the structural changes, if you could tell us and our viewers about what are the most substantive differences that you see in the G Ramji bill and the existing Manrega? We have to see the evolution of Manrega or the changes happening in Manrega after 2014. And if we look at this G Ramji bill, we can understand that it was eventuality, right? And this structural change was very much needed, as pointed out by Binodji also. If you look at the if you do the sustainability assessment of Manrega, there is a see difference between Manrega achievement before 2014 and after 2014. So in 2015, some new work were included, and now we are talking about very structured intervention through Manrega. We are talking about water security, we are talking about core rural infrastructure, livelihood related infrastructure,
right? We are talking all about it. And in 2015, some of these components were added, and what we see across the states, those have paid, right? For example, Amrit Sarovar Yojana. So now it is a time to include all these things in a very structured form. You also have to see the difference between 2005 and 2025. 2025 now, at that time, 2005, we were actually fighting with extreme poverty. We were fighting with multidimensional poverty. Now, very recently, you must have seen the data from World Bank, and of course, Indian government also published that data. Now it is a time to strengthen. So we are coming out. So the population of significant population of India has come out of that extreme poverty or multidimensional poverty. So now we need to, utilize that thing and give prosperity to this population. So instead of just as my fellow panelists also mentioned, Gadda Khodo Gadda Baro Abhiyan, we should utilize this scheme for building Viksit Bharat, connecting it with PM Gati Shakti National Master Plan. I think it's a wonderful move to make Manrega more structured with the name of and make it G Ramji. Okay, so from a Viksit Bharat point of view, it's quite empowering, and it's empowering the rural economy in more ways than one. Coming to the specifics now, Mr. Anand, the bill allows states to pause work for up to 60 days during peak agricultural season. Talk to us about how does this balance the interest of the farmers and the wage laborers? You see, during agriculture harvesting season and sowing season, there was a dearth of labor, and that is not uniform. That was varied in each and every state. Say for say Punjab, so there are farmers, there are people who are migrating to the Punjab, so there were so many different kind of challenges when it is availability to labor in agriculture. So that is why this 60 days, whenever the sowing and harvesting will be there, Manrega scheme, Manrega activities, or else the new G Ramji bill, those rural employment programs will be at a stall. So this is a great thing. This is what the demand of the rural India. This is the demand from the people who are into the agricultural arena. See, the very foundation of this strengthening of this scheme is what the critics were talking about. See, this is an era of again, I'm coming back after answering your question, is of DBT, Jan Aadhaar, Jan Dhan, mobile connectivity. Even the mobility of mobility has gone by. The trains are now too many. The transportation is not that much tough. So this scheme has become cleaner, more transparent and more accountable. So that's why this is a kind of a dignified and very important step which government has taken, Tina. So certainly it's aimed at improving income stability, reducing distress migration among rural laborers that you pointed out. But given the concerns and the apprehensions, Professor, it's important to make people understand about the benefits for the farmers, for the laborers, for the rural economy holistically. Where do you see the biggest gains coming from? See, as far as primary stakeholder is concerned, that is, the rural folks. For them, everything is positive in this bill. For example, the number of days has been enhanced from 100 to 125. Secondly, if you look at the structure, the way the focus is being on infrastructure. Now, the biggest achievement, as I said earlier also, of Manrega in last 5-6 years is creation of Amrit Sarovars. Now we are going to strengthen it more. We are going to focus on storage structures. So we are actually talking about core rural infrastructure. Now, if all it happens, then ultimately it provide the boost to the rural economy. So for the rural population, it is a win-win situation. So number of days are increasing, the
productivity is going to increase, and the assets which will be created under Manrega or under Jiramji, they will also improve the economic productivity of rural population. So it's a win-win situation. And even for this 60 days pause, as rightly mentioned by my fellow panelists, that there was a demand, huge demand of farmers. So they were facing artificial, inflation in the wage rate of labor. So, and it is not that, so everything will be, so 125 days are separate than the 60 days. All is very good for rural population. Okay, so significant tangible benefits for farmers, laborers on the ground. But Mr. Anand, how do you see this convergence of infrastructure creation, of employment, of the manner in which the agricultural planning is happening to improve the farm productivity, but most importantly also the resilience, especially in the rain-fed, the vulnerable regions of our country? You see, I will take you to the I will give you two examples through you, means to the, the larger policymaker and to the farmer community either. So this is the time of Pax to Apex approach. This is the time of wage work to wealth creation. And that's what this Jiramji scheme is all talking about. We are going to invest the world's largest amount in creation of rural godowns. That's what through every Pax will have a godown. We are going to have 2.5 lakh of Pax. The whole economy of the rural India is going to change. It's not only the digging of the watershed bodies. It is going to be the different kind of schemes. The institutional spine of the rural economy is going to be on cooperative economic framework, and that's why this scheme is very, very important. This is the scheme of natural convergence when we'll talk about the point of rural employment, right? It is just shifting from the fragmented approach. Now it is a very planned, asset-oriented employments will be created, right? So that's how the sustaining of institutions, especially the cooperative system, and through panchayat, the convergence of Pax with the panchayat ecosystem would be. Handling of credit, input supply, storage, procurement, everything require labor and a skilled labor. So mind you, this is not the only will be this is the time when the rural people, especially the rural youths, now we are having the financial inclusion is not a dream now. It's almost 100%. Everybody is included. So this Viksit Bharat schemes would be a different one. So there will be a very, very strong focus on durable assets like water, road, irrigation, climate resilience, but the rural level will be converted into the national capital formation, that is through the rural areas, by the FPO, by the Pax, and there the skilled labor is required. This is what the specialty in this, this Jiramji scheme. There would not be any distressed migration. There would be no fragile livelihood nowadays. And it's a temporary relief. We do not require temporary relief. See, in 10 years, from 2005 to 2006 inception to 2014, it was an investment of around 2 lakh crore. And this government, that is from 2014 until now, it is around 8 lakh 50 crores, almost 4 times. This is what the investment has been done. So where the money is, that money need to be channeled to the productive rural estates, which will confident the rural citizen in the era of climate change when people are talking about. You see, this is the time when parali and all those management is required, the compressed biogas and the bioethanol policies, those are at framework. This requires a skilled labor in Manrega in this through this scheme. So the state government will come up with a different kind of job card, different kind of planning, different kind of arrangement, and that's how this is going to address. The labor will build storage godowns, the drying yards, the compost units, milk processing infrastructure, and I can go on and go on about talking about this this is the improved bargaining power what the farmers will get and the rural people will get through these schemes. So this is a new one. This is something like Viksit Bharat we are envisioning, and certainly if the 10 year down the lane, the people will see the change. Okay, so in addition to ensuring better asset creation, the focus this time is more on improving the efficiency for better long-term outcomes. A question on long-term outcomes,
to you, Professor, because this bill places a strong emphasis on spatial technology. It talks about data integration, and the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack is something that I read while preparing for the bill. So, if from a systems and technology perspective, if you could also explain to our viewers how transformative is this shift for the rural public works in the country? So I think this is a great step actually. So if you look at the idea in this bill, it talks about the Viksit Gram Panchayat plan, and then it is there is a provision for spatial integration from panchayat to block, block to district and state, and then all has to be integrated through national master plan. So with this integrated approach, what will happen that each district, each state, each block, each gram panchayat will have an integrated planning, and those plans will be executed through this GRAMji. So I think this is a very good approach GRAMji has adopted. Secondly, if you talk about the technology is also going to be used in this whole framework for bringing the transparency and accountability. So in Manrega, one of the shortcoming, I would say, was transparency and accountability. We know there had been cases of fake muster roll and everything. So we were doing some analysis of Manrega in few districts. We found that there had been such cases, but now, and there were delays in the payment. Now look at this GRAMji bill. It talks about weekly wages, and everything will be linked with, or everything will be monitored through technology. So technology integration plus integration through geospatial planning, I think that's a very good idea. And as I said earlier also, that this is going to make the whole rural India very productive. Okay, so towards implementation and accountability, there are several steps. There are various provisions that take care of this aspect to ensure transparency in the process. But Mr. Anand, as someone who understands the system so well, how critical is the capacity of the states to make this program a success? You see, Tina, the thing is that we must understand in the Viksit Bharat when we are marching that our developed India now, we cannot rely on wage guarantees without productivity. So productivity need to be ensured. So if there is a Dhan Dhan Yojana in 100 districts, say in Bihar there are 4 districts, so the productivity need to be ensured, then only wage guarantees would be. There cannot be subsidies without ownership. So state has to take the ownership. Earlier it was just like that. And there were assets without institutions. We cannot just create assets. We have to create assets for the institutions. So this GRAMji schemes, when will be aligned with a cooperative economic framework, then the cooperative being a state subject, it will be kind of the, suppose the labor required for PACs, it will required for the PACs. So it will be accurate, the planning would be accurate. So labor would create national wealth here. The asset will be community owned because the people, it will be created through their own village men. So the kind of asset will be created will be community owned. The incomes will be recurring, just like just now you said, weekly income would be there. And the villagers will be the beneficiaries to the producers. So this is the Sahakar se, true Sahakar se Samriddhi in action. And the very line where I'm so happy with this thing is, this new framework will give the right to build institutions. This is just not only right to work. So that's where the changes be required. So here the worker, here the people who will have the custodians of the rural assets. So the worker will become a stakeholders rather, and the villages will become an enterprise, and that's how the economy, the cooperative economic framework will be at place. And the Viksit Bharat will just not be just in the boardroom things, but it will in the collective hands through cooperative strength, through villages. And here the role of the state government is very crucial, because the state government, the panchayat, they know what exactly needs to be done to fulfill all these roles.
So when it comes to the financial inclusion network, and when it comes to the cooperative economic framework, where we are going to have 2.5 lakh packs, every packs will be in godown, and there could be so many different kind of rural assets. This is a win-win situation for us. Certainly, for effective implementation, there has to be coordination among all stakeholders at different levels. As we wrap up the conversation, Professor, what kind of multiplier effect do you see this kind of a technology-driven rural employment program have on the broader rural economy? India is still an agrarian economy, and this is going to contribute majorly towards our Viksit Bharat vision. So how do you see this, if implemented effectively, how do you see this scheme adding to the momentum that's already been built? So I have great hopes if it is implemented, as such. I have great hopes because it is going to give a lot of productive assets to the villages, right? So right from water structures or water security to the post-harvesting management things and, other livelihood, infrastructure assets. But besides that, I also see a kind of competitiveness in this bill. So, for example, if states come forward, and since they have now they also have the stake in this whole thing, in the whole framework, and if they come up with a very good plan and say that okay, we are having this plan, and then now the central government, because it is all supply driven, and this supply has to be linked with the plan which state government are going to make. So the state who is going to make a good plan, better plan, they will be able to get major share. So there will be a competitiveness, and ultimately it all will be adding to the productivity. It all will be adding to the rural economy. So I have great hopes with this bill if it is implemented. This is the rider which absolutely. I think the key lies in effective implementation. Let's all hope that what the framework promises is implemented effectively for the desired outcomes. For now, we'll have to wrap up this conversation. Time allows us to take up only that much on the program. Thank you once again to both of you for joining in, sharing your thoughts, your views with us and our viewers. And to you viewers, thank you very much for your time as well.